Exam Prep. So guys, today we are having the mock test for Engineering Services Prelims 2023 paper 2, that is technical paper. And guys, as you already know, this paper comes around for 150 questions and they are of 2 marks each, so 300 marks. Okay. So out of 500 marks, 300 marks are dedicated to the technical paper and rest 200 are for ESE paper 1. Okay, so parallelly we are having the classes for ESE paper 1 as well, and we are also having the technical classes also, they are scheduled. So if you are talking about this session, guys, this is some detail about me. I'm having around 10 plus years of experience, and in this session I will be taking the subjects, the question from the subject strength of material, machine design and production. Okay, so I will be taking the question from these three subjects, and all other faculties will also come. And entirely we will be completing the mechanical engineering, all the subjects. Okay, so all the subjects we are going to complete, and 150 questions we will be covering. So first I am coming, then after that Sooraj Sir will be coming, then Chandra Sir will be coming, and after that Sonu Sir will be coming. And in this way we are going to complete the entire 150 questions. 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे करेंगे पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से. सो गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट. और इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, दिस इज एन अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द वर्कशॉप. देयर इज अ मेगा वर्कशॉप बाय अभिनव नेगी सर, दैट इज हाउ टू एस गेट 2024 इन फर्स्ट अटेम्प्ट. if any of your junior or you are looking for this preparation of GATE 2024, it is a wonderful opportunity. It is a free workshop on 14th of February, 7:30 p.m. Abhinav sir would be taking that. Okay, so we are moving further, guys, and we are starting with the very first question. And as I already told you that I would be taking strength of material, machine design and production, these three parts. Okay, so guys, this is the very first question we are going to solve. That is a 2.5 centimeter diameter steel bar is subjected to a load of 2500 kg, and you need to answer the stress induced in the bar. So this is the data given, that we are given the diameter जो steel bar का है वो 1.25 centimeters है, और अगर हम बात करें subjected to a load कितना लग रहा है 2500 kg. तो हमको निकालना है stress. What will be the stress value? Stress is going to be P divided by pi by 4 d square. अब आप सोच रहे हो कि सर इतना आसान क्वेश्चन. Then I would like to tell you that guys, in engineering services इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. In ESE they are asking this type of question. So around I will say 60% of the question are of this type, जो कि आपको बहुत आसान लगेंगे, बट हाँ वहाँ पर कैलसी नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना. थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में जाने के चांस ज्यादा रहते हैं. तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2500 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इनटू में डायमीटर इज 1.25, और ये सेंटीमीटर है तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं का स्क्वायर. एंड व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस, तो जो आंसर हमारे पास आने वाला है इस क्वेश्चन का, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 200 एमपी. 200 एमपी आंसर रहेगा इसका. ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, यस. Is it clear, guys? So please tell me, am I properly audible and visible to all of you or not? Yes, guys, quickly tell me that. Quickly tell me that. Quickly tell me that. Yes. Then we will move to the second question, guys. Then we will move to the second question. Yes. So guys, this is the second question. Second question is once again from the similar topic, that is simple stresses. फिर से सोम से क्वेश्चन है. 13 mm diameter tensile specimen has 50 mm gauge length. तो आपको यहाँ पर लेंथ दे दिया गया है 50 mm का, और इसके अलावा डायमीटर भी दिया गया है 13 mm का. And the load correspond to 0.2% offset is 68. अब यहाँ पे आपको लोड की भी वैल्यू दी हुई है 6800 kg, और अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर भी आपसे kg पर mm स्क्वायर के अंदर ही पूछा गया है. And they are asking you the yield strength. They are asking you the yield strength of this.
तो आपको पता है यहाँ पर भी हमें एक ही चीज करनी है, दैट इज क्या करना है, यहाँ पर भी हमें सिग्मा की बात करनी है और फोर्स बटे एरिया करना है। अगर हम बात करते हैं फोर्स की तो 6800 केजी का केजी में ही रखेंगे, क्योंकि हमें आंसर केजी पर एमएम स्क्वायर में निकालना है। और यहाँ पे हम करेंगे π/4 d स्क्वायर, d 13 mm है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई फील आपका आंसर आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 51.25 kg पर mm स्क्वायर। सो आई फील इसका आंसर होगा सी। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस गाइस। ओके, तो हम बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आई फील द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement related to the stress and strain. Consider the, okay guys, I would say that please solve it so that we can move further. Solve करिएगा इस क्वेश्चन को, yes, solve करिए, then we are moving further. यस यस यस, सॉल्व इट गाइस। तो अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। shear strain is always tangential to the area over which it acts. it कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है एंड यू नीड टू सी which statements are going to be correct and which are going to be wrong. तो आपसे बोला गया कि shear stress क्या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होती है। सेकंड इज shear stresses on the transverse pair of faces are known as complementary shear stress. तो आपसे ये कहा गया है कि अगर ट्रांसवर्स का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दो फेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो स्ट्रेस होगी और इस पे जो स्ट्रेस होगी, क्या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। ये एक स्टेटमेंट है। shear strain is defined as change in the right angle of the element measured in the radius. मतलब इनिशियल अगर इसके बीच में एंगल 90 है तो उसके बाद जो चेंज ऑफ एंगल होगा, क्या उसी को हम shear strain बोलेंगे। ओके, शेखर शर्मा इज सेइंग द आंसर टू बी डी। D is 1, 2 and 3. और लास्ट स्टेटमेंट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ shear strain to the shear stress. You can say that ये आपको गलत है, क्योंकि G होता है जनरली टाउ बाय गामा, तो ऑब्वियसली यहाँ लिखा है गामा बाय टाउ। तो आई फील दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई विल शेखर, यू हैव गिवन द राइट आंसर and the answer for this is going to be D, that is 1, 2 and 3. So guys, 1, 2 and 3 are the correct statement. So that's great, Shekhar, wonderful. Let us see about the fourth question. Next question is once again from the elastic constant. A material has a modulus of rigidity. आपको बोला गया है कि जो G है वो 0.4 into 10 की पावर 5 है, और जो बल्क मॉडुलस है K, उसकी वैल्यू 0.75 into 10 की पावर 5 है। और आपसे बोला गया बताओ पॉइजन रेशियो क्या होगा। यू नीड टू आंसर अबाउट द पॉइजन रेशियो। डियर, मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली क्वेश्चंस अगर आप ईएससी के देखोगे तो गेट से आसान होते हैं, बट द पॉइंट इज कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बिना कैलसी के सोल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट हो जाता है। और दूसरी बात, यस आई नो दैट इफ वी कंपेयर विद अदर ब्रांचेस, तो मैकेनिकल में सीट सिविल से कम होती है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, बट स्टिल गाइस इट इज अ ड्रीम जॉब फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जस्ट सोल्व करिए, फिर हम इसके आंसर की बात करेंगे। होप कि you will be giving the right answer for this. Hope you will be giving the right answer for this. Yes, Shekhar, are you doing it? तो आपको म्यू की वैल्यू चाहिए। मैं आपको हिंट दे सकता हूं यहाँ पर कि एक तो E होता है 2G into 1 plus म्यू, एक E होता है 3K into 1 minus 2 म्यू। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो E से E कट जाएगा, G और K आपको पता है और आपको म्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे E से E कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी 2G इंटू 1 प्लस म्यू। आप इक्वेट भी कर सकते हो 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब आपको इन दोनों की वैल्यू रख देनी है और यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू जो हमको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 0.2736, दैट इज गोइंग टू बी 0.2736। तो आंसर जो आएगा इसका, दैट इज गोइंग टू बी ए इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 MPa in one plane and complained by a simple shear stress of 200 MPa। तो आपको ये बोला गया है कि जो सिग्मा xx है वो 300 MPa है ना। मतलब एक एलिमेंट है
जिसके ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है सिग्मा एक्स जो कि 300 एमपीए है, और एक शीयर स्ट्रेस लग रही है इस तरीके से, और जो शीयर स्ट्रेस है दैट इज गोइंग टू बी 200 एमपीए। तो ये जो 200 एमपीए टाउ है, और अगर हम सिग्मा एक्स की बात करें, हमको निकालना है सिग्मा 1,2। फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और मुझे लगता है कि सिग्मा वाई हमको 0 दिया हुआ है, क्योंकि सिग्मा वाई के बारे में कोई बात ही नहीं है, तो सिग्मा वाई 0 हो जाएगा। सिग्मा एक्स हमको पता है, टाउ एक्स वाई हमको पता है, तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सिग्मा 1 एज इक्वल टू 400 एमपीए। तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ गो फॉर दिस क्वेश्चन. This question is once again from the principal stresses and strains. Let us see how many of you are going to solve this one. Solve करिए guys. Just solve it. Just solve it. Yes. So if you see this question, a metal piece under the state of stress of three principal stresses, sigma 1 is going to be 30, sigma 2 is going to be 10, and sigma 3 is going to be 5. These are the three values given, and it is said that ये कहा गया है कि is undergoing plastic deformation. The principal strain rates will be in the proportion of. तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी एक चीज कि एप्सिलॉन 1 का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 बटे ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बटे ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बटे ई। इसी तरीके से एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा 2 बटे ई। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको बिना कैलसी के करने हैं। ये एक ट्विस्ट पॉइंट है, दिस इज द ट्विस्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन 3 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा 3 बटे ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 1 बटे ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 बटे ई। ओके, तो अब आपको बस कुछ नहीं करना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू रखनी है, और आपसे रेशियो पूछा गया है। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 आपको म्यू की टर्म्स में मिलेगा, और मैंने आपके लिए सोल्व किया तो एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 22.5 बटे ई, और एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी -7.5 बटे ई, और एप्सिलॉन 3 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी -15 बाई ई। तो अगर आप इसको देखें तो इट इज कमिंग इन द रेशियो ऑफ 22.5 इज टू 7.5 इज टू 15, और ये माइनस भी साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले तो ये ऐसी टर्म्स ही नहीं है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टर्म्स, वी आर हैविंग 22.5 7.5 and 15. So guys, if we see this, the ratios are given as 15 minus 5 minus 10 minus 15 5 minus 10 15 5 10 and minus 15 minus 5 and 10. So if you see this ratio, you need to just rationalize it. Okay, so when you will be rationalizing it, and then the answer will be coming out to be for this as 15 is to -5 is to -10. ओके, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें यहाँ दो माइनस है y और z में, बाकी सब में x में है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? सो द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ए। द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? प्लीज टेल मी गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशंस आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। सो दैट इज व्हाई आई सेड
Moving to the next question. Moving to the next question. Okay, Shekhar, solve नहीं कर रहे हो आप, क्वेश्चन सोल्व करिए, ठीक है. Next question is a cylindrical storage tank has an inner diameter of 600 mm, wall thickness of 18 mm. So you can see D is given as 600 mm, thickness is given as 18 mm. The transverse and longitudinal strains induced are. तो आपको पता है circumferential और longitudinal strain की बात की गई है. This is 255 into 10 की power minus 6. This is 60 into 10 की पावर माइनस 6. D की वैल्यू दी गई है, आपसे प्रेशर पूछा है. तो यहाँ पर माय डियर आपको रेशियो लेना पड़ेगा. आपको पता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो आती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. उसको निकालने का तरीका होता है सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल अपॉन ई. इसी तरह एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल जो आता है वो आता है सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल बटे ई. ओके, तो गाइस आपको वैल्यूज भी पता है. सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल की हाफ होती है. सो व्हेन यू विल बी पुटिंग दिस वैल्यू देन यू नो द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन सर्कमफ्रेंशियल इज गोइंग टू बी PD by 4TE. जैसे आप पुट करेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी 2 माइनस म्यू. क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल होता है PR बाई टी या फिर PD बाई 2T. ये थिन सिलेंडर का क्वेश्चन है. सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल होता है PR बाई 2T या फिर PD बाई 4T. तो जैसे आप ये वैल्यूज रखोगे यू विल बी गेटिंग दिस, और लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा PD बाई 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू. तो जैसे ही आप इन दोनों का रेशियो लोगे, ये भी आपको पता है ये भी आपको पता है, रेशियो लोगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी. अब आप सोच रहे हो कि सर ईएससी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है. बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है. तो जैसे ही आप म्यू की वैल्यू यहां से निकाल लोगे तो जी आपको पता है इलास्टिक कांस्टेंट में आपने पढ़ा है कि चार में से कोई भी दो कांस्टेंट अगर आपको पता है तो बाकी दो कांस्टेंट्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो. सो गाइस आई विल बी यूजिंग द रिलेशन E is equals to 2G into 1 plus म्यू. जैसे इसको यूज करूंगा G भी पता है म्यू भी पता है और दोनों पता है, तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी. और अगर मुझे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता है तो माय डियर इस फॉर्मूला में म्यू भी पता, ई भी पता, डी भी पता, टी भी पता, circumferential strain भी पता, you can find out pressure. This was a lengthy question, I understand, but guys, this type of similar question have been asked in ESE 2021 prelims paper. That is why I have taken this, and if you will calculate, I'm telling you, mu will be coming out to be equals to 0.3. Mu will be coming out to be 0.3, and when you will be finding out this, E will be coming out to be 200.2 GPa. Okay, and after that my dear you will be getting the value of pressure to be 3.6 MPa. So this is how we can do this question guys. Moving further, this is from SFD BMD now. Studio members 2 minute पीछे आ गया. Yes guys, Chandra sir is also in the comment section to motivate you. So let's see guys, the next question is from SFD's BMDs. SFD's BMDs. So you can see one more thing, that in GATE actually very few questions are there because in 65 questions they need to cover everything. Here they have 150 questions, nearly 3 times. So that is why here each and every topic is covered. Each and every topic is covered clearly. You can see we have seen a question from simple stress, elastic constant. Now we are having a question from SFD BMD, thin cylinder also we have seen. So the point is every topic is once covered in the paper. So here, as generally we are saying also in ESE, you need to go for the horizontal depth of syllabus. Means you need to cover everything, maybe not into very much in depth. Okay, so the next question is, so guys, you can see here symmetry is there, 12 kilonewton, 12 kilonewton, 5 kilonewton. What they are saying, a beam of span 3 meter width 90 mm is loaded as shown in the figure. So they have given the dimension also, width B is given to us. This is the depth D. Then they are saying if the allowable bending stress is 12 MPa. So they are saying the sigma B max to be equals to 12 MPa. Okay. And the minimum depth required for the beam is, you need to find out the minimum depth required. It means you need to find out the value of D here. So guys, to find out the minimum depth, we need the maximum bending stress. Okay. So if you see all the things,
and allowable stress is mentioned to us. You already know the formula. क्या होता है bending stress maximum का formula? Bending stress maximum का formula होता है M maximum upon ZNB. Okay, yes. तो if we talk about M maximum, वो हमें कहां से मिलेगा? इस बीम से मिलेगा. उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके लिए नो डाउट हमको सपोर्ट रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए, तभी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाएंगे. पर ये बात तय है कि जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो सब कुछ सिमेट्रिकल आएगा. एज दिस आर सिमेट्रिकल तो सपोर्ट रिएक्शन भी बराबर आ जाएंगी. तो 12 और 12 24 और 5 29. 29 का आप होता है 14.5. तो दिस रिएक्शन इज 14.5. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो 14.5. ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना. इफ यू वांट टू सी, दिस इज द पॉइंट लोड. SFD will be horizontal lines, BMD will be inclined lines. So if you will be making the bending moment diagram, then the bending moment diagram will be coming like this, like this. First of all, you will be reaching to this. Why? Because this force into distance, this will be straight line, inclined line, you can see. And the value when you will calculate it is coming out to be 14.5 into 0.6. मैं आपको value भी बता देता हूँ. 14.5 into 0.6 is 8.7. This is 8.7. Then my dear, after that if you will take the section here, तो आपको पता है this will create sagging, this will create hogging. So the value is going to come nearly equals to 10.95. So here you will be getting the value of 10.95. 10.95. Because of symmetry, the diagram will repeat in this direction also, like this. This is the bending moment diagram. So we got this as the maximum bending moment. This is a lengthy question. 10.95. It is also mentioned this is 12. Here you will be saying BD square by 6. B is given to us. You will be getting the value of D. And guys, after solving, I am telling you the answer you will be getting is 246.64. 246.64. B is going to be the correct. You can see we are getting the answer as 246.64. But in the option it is 246. Why? Because calculator नहीं है. और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तक ही पहुंच सकते हो. इज इट क्लियर? तो इसीलिए दे आर नॉट गिविंग एग्जैक्ट वैल्यूज, वो आसपास की वैल्यूज ही देते हैं आपको. ओके, मूविंग फर्दर गाइस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर लेंथ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, जिसकी लेंथ 8 मीटर है. ओके, तो carry the 3 point loads 8, 4 and 10. Okay, 8, 4 and 10. ये तीन लोड लगे हुए हैं, 8 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन. और आप देख सकते हो क्योंकि ये जो 300 नंबर का पेपर है उसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं. 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, तो 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय आपको मिलता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए. ओके, तो अगर हम देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट 2 मीटर 5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. तो ये 2 मीटर पर है, ये 5 मीटर पर है तो ये 3 मीटर हो जाएगा, और ये 6 मीटर पर है तो ये 1 मीटर हो जाएगा. और आपसे बोल रहा है कि व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट सपोर्ट रिएक्शन, और टोटल लेंथ 8 मीटर है. 2 3 5 और 1 6 और ये 2 हो गई. आपको सपोर्ट रिएक्शन बतानी है ए और बी पर. और माय डियर, कितनी बार मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, सपोर्ट रिएक्शन ए पर निकालनी है 3 लोड्स की वजह से. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा. पहले देखेंगे इस 8 किलो न्यूटन की वजह से, ये ऊपर ये नीचे पॉजिटिव साइन आएगा. 8 डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट एंड, 3 2 5 और 1 6, टोटल लेंथ इज 8. ओके, प्लस अब 4 किलो न्यूटन का इफेक्ट देखेंगे. 4 किलो न्यूटन लग रहा है नीचे, ये लग रहा है ऊपर. तो अगर ऐसा है तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन आप लिख दोगे. प्लस 4 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 1 और 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ है 8. उसके बाद इस 10 के लिए भी प्लस आ जाएगा. 10 डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट एंड इज 2, टोटल लेंथ इज 8. सो यू विल बी हैविंग 8 से 8 कट गया, ये कट गया, तो आपको मिलेगा 6 प्लस 1.5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.5. तो ये आ जाएगा 10 किलो न्यूटन. तो 10 किलो न्यूटन ऑप्शन है कहीं पर, बिल्कुल है. तो आप देख सकते हो एक रिएक्शन हमारी 10 आई है, और आपसे पूछा भी हुआ है सपोर्ट रिएक्शन रिस्पेक्टिवली. तो आपकी VA 10 आई है, VA 10, और टोटल देखो कितना है, 10 और 4 10 और 8 18 और 4 22. तो ये ऑब्वियस है कि VB जो है वो आ जाएगा 12 किलो न्यूटन. तो आंसर हो जाएगा D फॉर दिस. इज इट क्लियर?
वेरी गुड अभी, बहुत बढ़िया अभी, वंडरफुल गाइस. सो लेट अस मूव फर्दर. सो अंबाती, डोंट वरी. This time I feel in engineering services you will do wonders. Last year you were left with very small difference, I feel so. तो इस बार शायद आपका सिलेक्शन हो जाएगा. This is the next question guys from strength of material. In curved beams the nature of stress distribution कैसा होता है? क्या पैराबोलिकली होता है, सर्कुलर होता है, हाइपरबोलिक होता है, या फिर लीनियर होता है? देखिए सूरज सर भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए गाइस, तो पूरी मैकेनिकल टीम उतरी हुई है मैदान में आपको मोटिवेट करने के लिए. अभी इज सेइंग आंसर टू बी डी. कोई और भी कुछ कहना चाहेगा? वेरी गुड सागनिक, बहुत ही बढ़िया भाई. आंसर डी हो जाएगा, हाइपरबोलिक. और अगर आप देखेंगे इसके लिए जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये कुछ इस तरीके से आ जाता है. दिस इज हाइपरबोलिक. ओके, तो हाइपरबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं. डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस. मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही है. A 120 mm wide 10 mm thick steel plate is bent into a circular arc of radius 8 मीटर. तो गाइस 8 मीटर की रेडियस पे आपने बेंड किया है. और आपको मैंने कई बार बताया जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ न्यूट्रल फाइबर पता है. और जब हमको रेडियस ऑफ न्यूट्रल फाइबर पता होता है तो सिग्मा बी मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज होता है E इंटू वाई मैक्स बटे आर. इसका सॉल्यूशन बहुत सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे. ये वाई मैक्स जो है वो डिस्टेंस होता है टॉप या बॉटम फाइबर का न्यूट्रल फाइबर से. ठीक है, वो इस सेंटर से नहीं, न्यूट्रल फाइबर से होता है. तो अगर 120 mm वाइड और 10 mm थिक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये 120 और ये 10 है, तो माय डियर जो वाई मैक्स आएगा वो 5 mm आएगा. उसका इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई मतलब नहीं है. तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं. अभी सागनिक बताइए क्या आंसर रहेगा. यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है. यंग्स मॉडुलस इज 200 GPa, तो इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे हम. वाई मैक्सिमम 5 mm है और शायद जो रेडियस है वो 8 मीटर है, तो 8000 mm हो गया. अब बताइए जरा आंसर क्या होगा. अब देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं. और गाइस खास बात ये है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको कैलकुलेशंस मैनुअली करने हैं. तो जिन लोगों का हाथ सेट होता है मैनुअल कैलकुलेशन में, उनको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है. अब बताइएगा आंसर क्या होगा गाइस. कट पिट करके क्या आ जाएगा हमारे हाथ में. और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर चल रहा है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 11th चल रहा है. हम अब तक 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. तो दिस इज अ मॉक टेस्ट जहां पर हम 150 क्वेश्चन ईएससी के करने जा रहे हैं. बताइए क्या रहेगा आंसर. तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो माय डियर ये 1000 से 1000 कट जाएगा. और यहाँ 8 है तो आपको पता है ये 4 से 2 हो जाएगा और ये 4 से 50 आ जाएगा. तो आई फील आंसर 250 न्यूटन मीटर. इज इट क्लियर? ए विल बी द आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन. बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रोपेलर शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट. पावर दे दिया गया आपको 45 किलोवाट. पावर होता है 2 पाई NT बाई 60. यहां से आप टॉर्क निकालेंगे. इट इज होलो शाफ्ट हैविंग इनसाइड डायमीटर 0.6 टाइम्स. तो K की वैल्यू आपको 0.6 दी गई है, जो कि होता है इनसाइड बटे आउटसाइड डायमीटर. इट इज 0.6. और आपको बोला गया है इट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो जो परमिसिबल है, परमिसिबल ये दिया हुआ है 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर. आपको पता है जो टाउ इंड्यूस होती है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल, और इंड्यूस होती है T बटे ZP. ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल. और आपसे पूछा है डायमीटर. डायमीटर पूछा है आपसे, आउटर डायमीटर, द इनर एंड आउटर डायमीटर. तो आपको T की वैल्यू वहां से मिल ही जाएगी. और क्या मिलेगी वो भी मैं बता देता हूं आपको. ये 0.8548 मिलेगी. 8548 न्यूटन मीटर. ये आ गया टॉर्क का वैल्यू. ओके, तो आई फील सोनू सर भी है कमेंट सेक्शन में. सो T बाई ZP टॉर्क आपको पता लग गया. ZP क्या हो जाएगा? ZP हो जाएगा पाई बाई 16 D नॉट क्यूब 1 माइनस K की पावर 4. K आपको पता है
तो जैसे ही आप सोल्व करेंगे आपको डी नोट की वैल्यू मिल जाएगी, और डी नोट जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 39.13 mm, और इससे आपको डी आई भी मिलेगा जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है, 0.6 टाइम्स होने वाला है, तो आपको मिलेगा 23.47। तो गाइस ये होगा डी आई और डी नोट का वैल्यू, एंड आई फील एवरीबडी गॉट इट। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया गाइस, और इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस हमको फिर से टोर्शन से क्वेश्चन मिला है, और टोर्शन से मिले हुए क्वेश्चन में हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए सॉलिड बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 40 mm, तो इस बार हमको डायमीटर दे दिया है 40 mm और लेंथ दिया है 1.3 मीटर, और टॉर्क जिससे लगा है वो 340 न्यूटन मीटर है, और शियर मॉडुलस जो है वो 80 GPa है। हमको एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना है, थीटा होता है TL/GJ। तो गाइस टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, हमको पता है लेंथ भी पता है, जी भी पता है, डायमीटर भी पता है, और जे क्या हो जाएगा 32 D⁴। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन, अच्छा टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम लो मनी के, सॉरी फॉर दैट। आपने कमेंट लेट किया तो मुझे लगा पता नहीं आप कर भी रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। अब ये सोल्व, ये वाला तो हो गया है, तो ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, अभी भी आप कर सकते हैं, मुझे बताइए, सब कुछ दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी। हाँ भाई मनीकेत, सोल्व करिए और बताइए, फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। 1.26, 1.32, 1.38, 1.44। ओके, अभी सेइंग अप्रोक्सीमेटली ए आएगा। ओके, बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं कि यस, अभी आपका आंसर एकदम सही है। तो जो आपका थीटा का वैल्यू आएगा 1.26 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समय दूंगा हर क्वेश्चन को सोल्व करने का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉलम से है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबडी विल बी गिविंग द राइट आंसर फॉर दिस। ये कॉलम दिया हुआ है, इसेंट्रिक लोड भी दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं इसेंट्रिसिटी पर ये लग रहा है, और आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर स्ट्रट 150 mm वाइड and 120 mm thick. It carries a load of 180 kilonewton at an eccentricity of 10 mm in a plane bisecting the thickness as shown in the figure. The maximum intensity of stress in the section will be. आपसे पूछा maximum intensity of stress in the section will be, ये आपको बताना है। वेरी गुड मनीकेत, अब आप इसको सोल्व करिए। तो आपको ये दिया ही हुआ है ये लोड, एक हिंट दे रहा हूं बस, ताकि जिनको नहीं आता वो भी ट्राई कर सके, कि हमें सेंट्रोइड पे लोड को लाना है। तो एक फोर्स नीचे बना देंगे, एक फोर्स ऊपर, और ये मिलके ऐसे कपल बना देंगे। अब कपल बनाने के बाद का काम आप जानते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट है और ये एक्सियल लोड है। तो एक्सियल लोड का इफेक्ट कुछ इस तरीके का आ जाएगा। सोल्व आप ही करिए, सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं। और बेंडिंग का जो हिसाब किताब आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको बस स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आंसर बताना है। आपको पता है मैक्सिमम जो भी वैल्यू आएगी वो या तो इस वाले फाइबर में आएगी या तो इस वाले फाइबर में। बस इन दोनों फाइबर की स्ट्रेस निकालो और आंसर कर दो, यही करना है इसमें। यस, सोल्व करिएगा अभी मनीकेत, सागनिक, ठीक है। सोल्व करिए और आंसर बता दीजिए। ओके, अभी ने आंसर दे दिया है 14 MPa। ओके,
तो आप जानते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइबर है और ये एक राइट हैंड साइड का। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेस निकालोगे तो माइनस पी बाय ए आ जाएगा कंप्रेशन, प्लस एम बाय जेड एन आ जाएगा टेंशन। और जब आप राइट हैंड साइड में निकालोगे तो आंसर आएगा माइनस पी बाय ए माइनस एम बाय जेड। सो अभी ये कौन सा है, लेफ्ट वाले का आंसर आपने बताया, राइट वाले का बताया? वेरी गुड मनीकेत, आपका भी सही है। यस, ऑन सेम साइड ऑफ लोड मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये भी कंप्रेशन ये भी कंप्रेशन, तो यहीं पर मैक्सिमम हमको मिलेगा और आंसर आएगा 14 एमपीए। आप सभी लोगों का आंसर सही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो गाइस आंसर विल बी ए फॉर दिस। अगला क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेन एनर्जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी, और इसके बाद अब मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन और सोम के बचे हैं, और फिर हम मूव कर जाएंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फिर हम मूव करेंगे मशीन डिजाइन, और फिर हम मूव करेंगे प्रोडक्शन में। और उसके बाद फिर आएंगे सूरज सर, सूरज सर विल बी कमिंग फॉर थ्योरी ऑफ मशीन्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके, मेंटेनेंस, सब सब्जेक्ट कवर होंगे आपके सब। मनीकेत और अभी ने इसका भी आंसर दे दिया है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए राउंड बार अंडर यूनिएक्सियल टेंशन। शायद आप सभी लोगों को पता है कि अगर ऐसे टेंसाइल फोर्स लगता है तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इनटू वॉल्यूम। तो जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू एक्सियल लोडिंग आएगा वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e आ जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e अगर आएगा तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। यस, सो गाइस वेरी गुड शेखर, बहुत ही बढ़िया। अभी तो अभिनव सर भी है कमेंट सेक्शन में, देख लीजिए गाइस। ना केवल मैकेनिकल, इवन सिविल टीम के एक्सपर्ट भी आपकी हेल्प के लिए है यहाँ पर। तो जस्ट सॉल्व इट। एक और क्वेश्चन है इस बार डिफ्लेक्शन से, एंड दिस क्वेश्चन इज सेइंग ए यूनिफॉर्म बार सिंपली सपोर्टेड एट एंड्स। ओके, एक यूनिफॉर्म बार है, आप लोग सोल्व करिए। मैं केवल हिंट दूंगा उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमको दिया है, एक कंसंट्रेटेड लोड P लगा हुआ है जस्ट बीचों बीच P, और इसके बाद बोला जा रहा है इफ द सेम लोड बी अल्टरनेटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही लोड P अगर यूडीएल की तरह लग जाता, यही लोड P अगर यूडीएल की तरह लग जाता, P बराबर W इंटू एल हो जाता, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होता कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बार विल डिक्रीज बाय। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो पहले तो आप डिफ्लेक्शन 1 जो मैक्सिमम आएगा सेंटर पे आएगा, इसको मैं y1 बोल रहा हूं। फिर इसका जो मैक्सिमम आएगा वो भी सेंटर पे आएगा, इसको y2 बोल रहा हूं। तो y1 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, y2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप परसेंटेज का डिफरेंस भी निकाल लोगे, y1 माइनस y2 बाई y1 इंटू 100। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज। सर ESE एडमिट कार्ड डाउनलोड करना भूल गया, अब कैसे डाउनलोड करूं? सो डियर, अभी आपका क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या लॉगिन में? अगर ऐसा है तो लेट मी कनेक्ट टू यू आफ्टर द क्लास। ओके, क्लास के बाद कनेक्ट होइएगा, फिर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है और क्या दिक्कत आ रही है आपको। वैसे आप एक मेल भी सेंड कर सकते हैं ऑफिशियल्स को, ठीक है, वहां पर जरूर आपको कोई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। चलिए सोल्व करिए गाइस इसको। हिंट के लिए मैं आपको वैल्यूज चाहे तो बता सकता हूं कि y1 होगा p(L³ अपॉन 48EI, और ये हो जाएगा 5WL4 अपॉन 384EI, और आपको पता है कि P बराबर WL है। तो हिंट कर दिया मैंने आपको। अब आंसर करिए सोल्व और बताइए क्या आएगा। शेखर, मनिकेत, अभी। सो गाइस, अब आप लोगों का गेट ओवर हो चुका है, तो हम लोग फिर से हाजिर हैं अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए वी विल बी कमिंग आफ्टर दैट फॉर बार ऑल्सो, फॉर PSUs ऑल्सो। तो हम लोग आते रहेंगे आपके पास हर एग्जाम के लिए, जब तक आप सेटल नहीं हो जाते हम आपके साथ हैं, ठीक है।
और पोस्ट गेट सेशंस के लिए भी अभी हम आएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, और बार्क वगैरह के बारे में भी कि कैसे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी टेलिंग यू about which IIT will be better as per your score, which NIT will be better, which branch will be better. सब कुछ यहीं पर होगा, इसी चैनल पर होगा, मैकेनिकल और सिविल के लिए. ओके, सो गाइस जस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन. हम अभी सोम के आई फील आखिरी क्वेश्चन पर है शायद, इसके बाद मटेरियल साइंस में एंट्री करेंगे. अभी जो आंसर बता रहे हैं वो सी बता रहे हैं. ओके, विकास हाँ विकास बिल्कुल. सूरज सर भी आएंगे अभी, ठीक है. सूरज सर भी आएंगे, चंद्रशेखर सर भी आएंगे, सोनू सर भी आएंगे. ये पूरा मॉक टेस्ट है तो इसमें सभी फैकल्टीज आने वाले हैं. इज इट क्लियर? चलिए, मनिकेत डियर आंसर सी रहेगा. 37.5 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आंसर विल बी 37.5. इज इट क्लियर? यस. सो मूविंग फर्दर गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं आगे. अब हम बात करेंगे मटेरियल साइंस की, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आता है, क्योंकि डिजाइन और प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग मटेरियल का अच्छा खासा वेटेज है. तो हमारा सोम का पार्ट पूरा हुआ और शायद हमने 16 क्वेश्चंस देख लिए, 16. अब हम आगे बढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस के साथ और देखते हैं मटेरियल साइंस में क्वेश्चंस कितने लोग सही आंसर करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल. आपको एफसीसी, बहुत बढ़िया शेखर, बहुत बढ़िया. आपने थोड़ा लेट दिया आंसर बट इट इज करेक्ट, वेरी गुड. तो वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो आपको एफसीसी का बताना है वॉल्यूम. वॉल्यूम आपको पता है एफसीसी का ए क्यूब होगा. बस आपको ये पता होना चाहिए ए और आर का रिलेशन क्या है. तो मैं आपको बता दूं, फेस सेंटर एटम और कॉर्नर एटम्स, इस डिस्टेंस की बात अगर हम करें तो ये डिस्टेंस √2a भी होगा और 4r भी होगा. इसकी हेल्प से आप a और r का रिलेशन निकाल लीजिए और उसके बाद a को पुट कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा. ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है और हर साल एक क्वेश्चन इन कैरेक्टरिस्टिक्स से पेपर में आता है. तो आई फील अभी ने √3r/4 जो बताया है वो रिलेशन के बारे में बताया है. तो मैं आपको बता दूं √3r/4 इज फॉर बीसीसी. ओके, अभी दिस इज फॉर एफसीसी. 4r इज इक्वल टू √2a. a इज 2√2r. फॉर एफसीसी ये रिलेशन होता है. इस बार गेट में भी यही है. काफी सारे लोग जो है वो बीसीसी का पुट करके आ गए. तो ऐसी गलती नहीं करनी. आपको एफसीसी बोला गया है. एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है. तो इसमें ये दोनों कॉर्नर एटम और ये फेस सेंटर एटम आपस में जुड़ते हैं. इज इट क्लियर? सोल्व करिए और आंसर बताइए. सोल्व इट एंड टेल द आंसर. तो आपको 2√2r पुट करना है. तो विच विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? अभी, शेखर, विकास, मनिकेत, बताइए आंसर क्या रहेगा. यस, what would be the answer for this? None of these. Okay, put करते हैं. वॉल्यूम इज 2√2 r का क्यूब. 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√2 इंटू r क्यूब. भाई 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, तो ये हो जाएगा 16√2 r क्यूब. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. भाई अभी कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं, बिना कैलकुलेटर के है. 8√2 विल बी 16√2 विल बी द आंसर. बहुत बढ़िया मनिकेत, सी आंसर होगा इसका. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. द ट्रिपल टी डायग्राम shows the times required for isothermal transition for austenite to perlite, austenite to ferrite, ferrite to perlite, martensite to perlite. बताइए what it tells. ट्रिपल टी डायग्राम आपको पता है. ट्रिपल टी डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम. मनिकेत इज सेइंग आंसर टू बी ऑस्टेनाइट टू फेराइट.
नहीं भी, ऑस्टेनाइट टू फेराइट तो नहीं बनाते, हम बनाते हैं पियर लाइट, ये तो आप जानते हैं कि हम बनाते हैं पियर लाइट। यस और नो? या ऑस्टेनाइट टू फेराइट आएगा, क्या आएगा बताइए? अरे भाई आंसर आएगा ऑस्टेनाइट टू पियर लाइट ना, पियर लाइट। आयरन कार्बन डायग्राम भूल गए क्या? वी विल बी गेटिंग पियर लाइट। पियर लाइट इज व्हाट? पियर लाइट इज व्हाट? इट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर होता है किस किस का? एल्फा प्लस सीमेंटाइट का। तो सीमेंटाइट भी तो रहेगा, सीमेंटाइट को भूल गए क्या? इसको हम बोलते हैं पियर लाइट। तो फेराइट प्लस सीमेंटाइट, इट इज गोइंग टू बी, इज इट क्लियर? यस। तो माय डियर वी विल बी गेटिंग अल्फा प्लस सीमेंटाइट। अल्फा फेराइट होता है, ठीक है? तो फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर हमें मिलेगा। इज इट क्लियर? यस, आई विल, आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाला चैप्टर मटेरियल साइंस में आता है। वैसे गेट में आपने सोम में पढ़ रखा है। Which one of the following is the capacity of a material to absorb energy when it is deformed elastically and then upon unloading to have this energy recovered? आपको देखो इनडायरेक्टली बोल रहा है एनर्जी पूरी रिकवर हो जाती है। इसका मतलब लोडिंग इलास्टिक लिमिट तक ही है। तो इलास्टिक लिमिट तक लोड किया और अनलोड करने में पूरी एनर्जी रिकवर हो गई। तो ऐसी एनर्जी क्या होगी? रेजिलियंस होगी, डक्टिलिटी होगी, ब्रिटलनेस होगी या हार्डनेस होगी? भाई ये क्वेश्चन अच्छा तब होता अगर एक ऑप्शन टफनेस होता। अगर किसी को थोड़ा सा भी पता होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम रेजिलियंस और टफनेस को दिखाते हैं, टफनेस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इवन अगर आप ये ढंग से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप आंसर यही करोगे, ठीक है? तो दैट इज द ब्यूटी। गेट में ऐसा नहीं है। गेट में अगर ये क्वेश्चन होता तो रेजिलियंस के साथ साथ ऑप्शन होता टफनेस, तीसरा होता मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, चौथा होता प्रूफ रेजिलियंस, और आपको सोचना पड़ जाता आंसर क्या होगा। ये फर्क होता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विस। वेरी गुड अभी। और अगर ऐसा होता तो आंसर इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी हो सकता था, क्योंकि मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी की बात कर रहा है, बस पर यूनिट वॉल्यूम उसको ऐड करने की जरूरत थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। अब ये इस तरह के क्वेश्चन एक हर साल आता है जो आपको रट्टा मारने वाली चीजें होती है। जैसे आपसे पूछा रबर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस रेंज से किस रेंज में वेरी करेगा। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया, इससे पहले ट्रिपल डी डायग्राम किया, ओके तो आई फील क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनीबडी? इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 1.5 to 2। तो ये ऐसी चीजें सोल्व करने वाली नहीं है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप ही करते हैं। केएल राहुल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करते हैं अगर आपने याद नहीं किया है। अब ये एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है, आप इसको मैकेनिक्स या टॉम से मान सकते हैं। एक ही क्वेश्चन लिया है, इसके बाद आप प्रोडक्शन में एंट्री कर रहे हैं। ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना 3 से लेके 4 बार आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। 3 से लेके 4 बार आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आई सेंटर्स सभी को पता है, n इंटू n माइनस 1/2। n इंटू n माइनस 1/2 आंसर हो जाएगा ए। यस यस यस, बहुत ही शानदार। मूविंग फर्दर गाइस, अब हम बात करेंगे मशीन डिजाइन और प्रोडक्शन के ऊपर। मशीन डिजाइन और प्रोडक्शन के ऊपर अब आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फटीग फेलियर क्राइटेरिया इज यूज्ड इन ए ग्राफिकल मेथड इक्वेशन। बहुत बढ़िया अभी, ग्राफिकल मेथड इक्वेशन मनी के बहुत ही बढ़िया। सोडरबर्ग, गुडमैन, गर्बर या स्मिथ डायग्राम फटीग फेलियर क्राइटेरिया। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, जब एक आधी चीज हमने बिल्कुल सुनी हुई नहीं होती है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना होता है। देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर करते हैं, कितने लोग सही आंसर करते हैं। अब इनमें से आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है सभी ने, ये भी पढ़ा हुआ है सभी ने, और ये भी पढ़ा हुआ है सभी ने, है ना? हाँ, बस वही आंसर है, क्योंकि ये एमएसक्यू तो है नहीं गेट की तरह। क्या है ये? एमसीक्यू। और अगर एमसीक्यू तो आंसर एक ही है, वो खुद बोल रहा है विच वन, है कि नहीं? तो माय डियर आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि हमें तो पता ही है कि ये तीनों तो एक ही डायग्राम, जो फटीग डायग्राम बनता है उसमें ही होते हैं। तो ये तीनों तो एक ही डायग्राम में होता है। यही है जो नहीं सुना है,
तो यही अगर अलग है तो यही है एक ग्राफिकल मेथड में जो यूज होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में हर साल 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आते ही आते हैं, तो उसको दिल पे नहीं लेना। और आउट ऑफ कोर्स ही कोई लिमिट नहीं है जो आपको कोई पढ़ा दे। और वैसे भी 50-60% में सिलेक्शन होता है, तो हमें क्यों उस 2-3% के पीछे जाना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मैंने जान करके लिया है ताकि आपको दिखाऊं कि कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। आपने 4 में से 3 सुने हुए होंगे, उसके आधार पे आंसर करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मशीन डिजाइन का इस तरह का पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है, HPCL में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लिया है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम में ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसा। KL राहुल जी, इस बार सही आंसर बताइए क्या होगा। इस बार गूगली बोल के काम नहीं चलेगा। व्हाट विल बी द आंसर? शेखर, अभी, मनिकेत, KL राहुल, आपको बताना है क्रिटिकली लोडेड रिवट कौन सा होगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्रिटिकली लोडेड रिवट वो होते हैं जिसपे ज्यादा लोड आ रहा हो, और ज्यादा लोड उन पे आता है जो लोड के पास होते हैं। तो आप देखो ये W के पास कौन कौन से रिवर्स है, Q और R। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा Q एंड R। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा क्या? B। बहुत बढ़िया मनिकेत, अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अभी गियर के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको समझदारी से आंसर करना है। आपको बोल रहा है इन द डिजाइन ऑफ स्पर गियर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्पेसिफाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक्यूरेट टीथ, नैरो फेस विड्थ, लॉन्ग शाफ्ट स्पैन बिटवीन द बियरिंग। तो माय डियर, इस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड आ कहां पे रहा है, लोड आ कहां पे रहा है, लोड आ रहा है टीथ के ऊपर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3, या 1 and 3 ओनली? ओके, डी, Maniket is saying D. Okay, so my dear, if you see this, लोड आ रहा है टीथ के ऊपर। ठीक है, तो नो डाउट अगर टीथ पे लोड आ रहा है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है लोड का, वो एक तो एक्यूरेट टीथ और नैरो फेस विड्थ, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि फेस विड्थ के ऊपर भी तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लॉन्ग शाफ्ट स्पैन का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे शाफ्ट स्पैन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम गियर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसका बल्कि गियर से शाफ्ट के ऊपर जाएगा, शाफ्ट से बियरिंग पे जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हैव गिवन द राइट आंसर। अब हम आ गए प्रोडक्शन के ऊपर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, प्रोडक्शन। बस अगले यूं समझ लो कि अगले 8 से 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद सूरज सर विल बी कमिंग, ही विल बी ज्वाइनिंग देन। ओके, अब बताइए, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन? हॉट एक्सट्रूजन में प्रॉब्लम पंच की है, डाई की है, वियर और टियर ऑफ डाई है, या वियर ऑफ पंच है? हॉट एक्सट्रूजन एक ऐसा एक्सट्रूजन है जो हाई टेम्परेचर पर हो रहा होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका? व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? एंड गाइस डू लाइक एंड शेयर द सेशन so that others can also get the benefit of this. So guys, we are coming up, just yesterday our analysis part is over, and today we are live for you guys, for your ESE preparation. This mock test is not going to give us anything. Okay, B I think so not confirm. Okay, so dear, when we are talking about, जब हम बात करें एक्सट्रूजन की, तो नो डाउट प्रॉब्लम है डाई के अंदर, क्योंकि डाई ज्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज होगी। तो ज्यादा टेम्परेचर से जब डाई एक्सपोज होने वाली है, तो उसका डिजाइन और मटेरियल हमको ध्यान से करना होगा। तो जब भी हम हॉट एक्सट्रूजन की बात करेंगे तो डाई का प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क पीस में तो हॉट करने से आप कहीं ना कहीं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन को बढ़ा ही रहे हो।
ओके यस। सो मूविंग फर्दर गाइस, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि फिर से मेटल फॉर्मिंग से है। इसमें आपसे बोल रहा है इसमें से कौन सा प्रोसेस हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग है। इनमें से कौन सा प्रोसेस हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग है। अब आपको बताना है इसका आंसर। यस, क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन? रोल फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग, रोटरी फोर्जिंग और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। इनमें से कौन सा प्रोसेस हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग है? अभी, मनिकेत, शेखर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? सो गाइस 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और आई फील मैंने लगभग जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ लगभग 35 से 40 के बीच में है। ओके डियर, आई वुड लाइक टू से वन थिंग। रोलिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्रॉइंग, forging, they are bulk metal forming operations. Bulk metal forming, I have covered all these things in the classes. And if we talk about planking, punching, deep drawing, bending, all these are sheet metal operations. And then we have the operations where we are going to use electrohydraulic, or we are going to use some kind of magnetic field, or we are going to use some kind of explosion. All those techniques where we are using explosions, electrohydraulic, magnetic field, they are coming under high energy rate forming operations. So the answer for this is B. Okay, so that is why when you are attending this paper, you will get a very good idea about many things. अब ये क्वेश्चन वेल्डिंग से है, और ये मुझे लगता है सभी को आता होगा। ये सारी चीज आपको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी। अगर आप लोगों ने सही से अटेंड करी है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। कोई बात नहीं, अभी आई फील सीख गए आप इससे, पेपर में गलती नहीं होगी अब। और इसका बहुत चांस है कि आपको इनमें से काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज पेपर में मिले, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिपीटेशन होने का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कंप्लीट कंबस्शन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल ऑफ एसिटिलीन के लिए? अभी ने कहा 2.5, बहुत बढ़िया। मणिकेत ने कहा 1। ओके, तो माय डियर मैं बोलूंगा कि चाहिए तो 2.5 ही है, क्योंकि आप करते हो C2H2 प्लस 5/2O2, आप ऐसे करते हो तो चाहिए तो इतना ही है। अब इसमें से आप देते कितना हो वो एक अलग चीज है। चाहिए 2.5 है, अगर आप 1 के बदले 1 दे रहे हो तो न्यूट्रल फ्लेम है, 1 से ज्यादा दे रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, 1 से कम दे रहे हो तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अभी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपको आगे के लिए बहुत बेनिफिट देगा ये। और वैसे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे HPCL में, बार्क में, इसरो में, तो आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इसमें बेनिफिट रहेगा। चलिए, कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, वेल्डेबिलिटी पूछ रहा है। वेल्डेबिलिटी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील। वेल्डेबिलिटी की बात हो रही है अभी। वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्डेबिलिटी। किसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी, किसकी वेल्डेबिलिटी खराब? किसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी, किसकी वेल्डेबिलिटी खराब? बहुत बढ़िया, अभी बहुत ही बढ़िया। एल्यूमिनियम की जो वेल्डेबिलिटी होती है वो बहुत 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 पुअर होती है, इट इज एक्सट्रीमली पुअर। और अगर एल्यूमिनियम की वेल्डेबिलिटी एक्सट्रीमली पुअर होती है
तो असेंडिंग ऑर्डर में एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम मतलब सबसे ज्यादा वेल्डेबिलिटी बता रहा है, यहाँ पे कॉपर की सबसे ज्यादा बता रहा है या एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा, पर सबसे कम एल्यूमिनियम की यहाँ बता रहा है। तो गाइस एल्यूमिनियम की सबसे खराब होती है वेल्डेबिलिटी, और जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है वेल्डेबिलिटी कम होती है। तो माइल्ड स्टील में कार्बन सबसे कम है, तो माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में माइल्ड स्टील की वेल्डेबिलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिस। डी, एल्यूमिनियम की सबसे खराब, माइल्ड स्टील की सबसे अच्छी। और अब माय डियर हम मेटल कटिंग पे आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू लार्ज फ्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेशन बिटवीन चिप एंड टूल फेस? किस तरह की चिप बनेगी? कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस विद बिल्ट अप एज, डिसकॉन्टिन्यूअस विद बिल्ट अप एज? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? अभिशेखर, मणिकेत बताइएगा। अभिशेखर और मणिकेत, क्या रहेगा इसका आंसर? What would be the answer for this? What would be the answer for this? बताइए गाइस, क्या रहेगा आंसर? कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस विद बीयूई और डिसकॉन्टिन्यूअस विद बीयूई? ओके, तो आंसर होगा सी। सी क्यों होगा? अडहेशन के कारण बनेगा बिल्टअप एज, ठीक है, और लार्ज फ्रिक्शन है, और इसीलिए आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्डअप एजेस। हालांकि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि मटेरियल डक्टाइल है कि ब्रिटल, और नथिंग मेंशन है, सो हम कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएंगे। ठीक है, आंसर विल बी सी। मूविंग फर्दर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the angle between the planes of end flank and immediately below the end cutting edge and line perpendicular to base and right angle to the axis? क्या रहेगा आंसर बताइए? What would be the answer for this? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑटोमेशन से रिलेटेड हो जाएगा। यस, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? सो गाइस, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक ये व्यू होता है, इसी व्यू की बात हो रही है। ये वाला एंगल होता है साइड रेक, और इसी वाले एंगल की बात चल रही है, इसी वाले एंगल की बात, क्योंकि यही है, ये है क्या? यस, is it? No, this is going to be, this is not the angle, sorry, they are asking about end flank. Okay, एक ये व्यू होता है, एक ये व्यू होता है। हाँ, इस वाले व्यू की बात हो रही है, क्योंकि दिस इज द एंड फ्लैंक, तो इस वाला एंगल की बात हो रही है, यही एंगल आपका आंसर है। ये बैक रेक एंगल होता है, दिस इज साइड रिलीफ एंगल। थीटा ही, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा सी, एंड रिलीफ एंगल। ओके, एंड रिलीफ एंगल इज गोइंग टू बी द आंसर। बहुत ही बढ़िया। मूविंग फर्दर गाइस, ये हार्ड ऑटोमेशन पूछा गया है। हार्ड ऑटोमेशन विल बी सिलेक्टिव ऑटोमेशन, टोटल ऑटोमेशन, ग्रुप टेक्नोलॉजी और फिक्स्ड पोजीशन ऑटोमेशन। यहां पर आप फिर तुक्का मारेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, एंड दिस इज फ्रॉम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, अभी आई डोंट नो, द आंसर इज डी फॉर दिस। एक्चुअली हार्ड ऑटोमेशन इज फिक्स्ड पोजीशन ऑटोमेशन। यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी बहुत कम रेट पर प्रोडक्शन की जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बहुत कम रेट पर। बस हम खत्म करने वाले हैं गाइस विद इन 2 to 3 क्वेश्चंस। ओके ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग which enable the programmer to describe the part geometry using variables is computer assisted part programming, computer aided drafting programming, conversational programming या parametric programming? सो मुझे पता है यहाँ पर भी आप लोगों का हाथ टाइट रहने वाला है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर अदर देन गेट सिलेबस, और जनरली हम लोग गेट सिलेबस में अच्छे होते हैं। तो आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी पैरामीट्रिक प्रोग्रामिंग।
तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि एक या दो ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हाँ, अभी आई टेक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आई टेक थ्योरी ऑफ मशीन्स, आई टेक मशीन डिजाइन, आई टेक प्रोडक्शन, SOM, TOM, MD production. These are the subjects which I take at BYJU'S Exam Prep. Okay, so let's move further. Next question is related to EDM. MRR increases with decreases resistance. MRR increases with decreasing capacitance. MRR increases with increasing capacitance. MRR increases with optimum spark gap, then decrease with increasing spark gap. Yes, guys. So if here you want, I can make some diagrams for help of yours. But first you try to answer. MRR with resistance, MRR with capacitance, MRR with spark gap. Okay, yes. So I'm making the graph. With resistance it comes like this, with capacitance it comes like this, with spark gap it comes like this. I feel now you may be able to answer about this question. Yes, EDM means electro discharge machining. MRR increases with decreasing resistance. MRR increases with decreasing capacitance. MRR increases with increasing capacitance. MRR increasing with optimum gap and then decreases. What will be the answer? मैंने आपके सामने ग्राफ भी बना दिए क्योंकि मे भी आप सभी लोग नहीं जानते हो ग्राफ. So what will be the answer for this? So guys, I feel हमारा पोर्शन अब खत्म होने वाला है बहुत जल्दी. और फैकल्टीज ज्वाइन करेंगे, सूरज सर, चंद्रा सर और सोनू सर अपने अपने पोर्शन के लिए. So sirs, are you ready? Because my questions are about to over. Abhi is saying the answer to be A. So हमने लास्ट ये क्वेश्चन किया था जिसका आंसर डी था. ओके, नेक्स्ट इज फिर पैरामीट्रिक प्रोग्रामिंग वाला किया था. अब देखते हैं कौन सा सही है. तो MRR इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस. देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, MRR कम हो रहा है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया. ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने के साथ हाँ सही तो है, रेजिस्टेंस कम होगा तो MRR बढ़ेगा. पहले वाला एकदम सही है. तो पहले वाला तो चारों ऑप्शन में है. MRR इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस बढ़ने के साथ MRR बढ़ रहा है, तो MRR इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस रॉन्ग है. फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है. तो सेकंड जहां जहां है वो गलत हो गया. ये गलत, ये गलत, ये गलत. आंसर सी. तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है तो आप जल्दी आंसर कर पाएंगे और बिल्कुल सही कर पाएंगे. आपको दिख रहा है ना, MRR इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस, जबकि उल्टा हो रहा है. कैपेसिटेंस बढ़ने के साथ MRR बढ़ रहा है. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. और अगर ये गलत है तो ये जहां जहां है वो सारे ऑप्शन गलत है. और अगर वो गलत है तो हमारे पास यही आंसर बचा. इज इट क्लियर? तो ये तो देख के आप आंसर कर सकते थे बहुत आराम से. और इसके लिए आपको डेफिनेटली ये चीजें क्लास में पढ़ाई जाती है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अब इसमें पूछ रहा है कि एनसी मशीन के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं. पार्ट प्रोग्राम, मशीन कंट्रोल यूनिट या सर्वोमीटर. इन तीनों में से कौन सा पार्ट जो है वो मशीन कंट्रोल, ये सॉरी एनसी मशीन का कंपोनेंट है. इन तीन में से कौन से तीनों है? 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है. व्हाट आर? सोल्व करिए, सोल्व करिए गाइस और बताइए आंसर क्या होगा. मैं सूरज सर से पूछ लेता हूं कि वो रेडी है कि नहीं. आप सोल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. जी सर. सो गाइस, सूरज सर रेडी है. आप में से जो लोग सूरज सर के लिए इंतजार कर रहे थे वो रेडी है आने के लिए. आंसर इसका हो जाएगा 1 and 2 पार्ट प्रोग्रामिंग एंड मशीन कंट्रोल यूनिट. ओके, तो आंसर विल बी बी. तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि सिम वाला पार्ट आपका बहुत वीक है. और कोई बात नहीं, उससे क्वेश्चन एक दो आते हैं, आप छोड़ के भी जाओगे तो सिलेक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए, अब ये एक आखिरी क्वेश्चन है. Which one of the following statement is correct in respect of unconventional machining process? आखिरी क्वेश्चन.
The cutting tool is in direct contact with the job. The tool material needs to be harder than the job material. The tool never in contact with the job. There has to be a relative motion between tool and वर्कपीस. इनमें से कौन सी चीज अनकन्वेंशनल प्रोसेस के हिसाब से सही है? अनकन्वेंशनल या NTMM नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड, कौन सी बात सही है? यस, बताइए. मनीकेत बी बोल रहे हैं. मैं आपको एक बात बता देता हूं, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो कि कन्वेंशनल से दूर हटके है. नॉन ट्रेडिशनल, जैसे मान लो आपकी फैमिली में सारी मैरिजेस अरेंज मैरिज हुई है, आप इकलौते हो जो लव मैरिज करने वाले हो, तो जो आप करोगे वो नॉन ट्रेडिशनल होगा, क्योंकि वो ट्रेडिशन आपकी फैमिली का नहीं रहा. तो नॉर्मली जब हम मशीनिंग करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग फॉर दैट, तो नॉर्मल मशीनिंग का रूल क्या होता है कि कटिंग टूल वर्कपीस के कॉन्टेक्ट में होगा. ये कन्वेंशनल बात है, होना चाहिए. कटिंग टूल को वर्कपीस को कट करना, नॉर्मली कटिंग टूल को वर्कपीस से हार्ड होना चाहिए. ये रूल है कन्वेंशनल मशीनिंग के. तो अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो नॉन कन्वेंशनल. तो माय डियर, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको मैं नॉन कन्वेंशनल के लिए सही बोल सकता हूं कि टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो, क्योंकि होना जरूरी है कन्वेंशनली. तो आई फील अभी ने जल्दी से लिखा और जल्दी से डिलीट कर दिया, मैंने पढ़ लिया. ओके, तो सूरज सर लाइव है अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में. तो मैं यहीं पर सेशन को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं जो मैंने कराने थे आपको. हमने सोम कवर कर लिया, मशीन डिजाइन कर लिया और साथ में प्रोडक्शन कर लिया. अब सूरज सर आएंगे टॉम इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के साथ. उसके बाद फिर चंद्रा सर आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स HMT के साथ. फिर सूरज सर फिर आएंगे सोनू सर थर्मल पोर्शन के साथ. So from my side, it's bye. I will be sharing this PDF in my Telegram channel, Mechanical by Dheeraj Sardana. Do join that if you have not done yet. Okay. और guys, कल हम आने वाले हैं एक मैराथन सेशन के साथ जो कि होगा मटेरियल साइंस के ऊपर, जो ESC पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. उसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. सो गुड बाय फ्रॉम माई साइड. वी विल मीट टुमारो वंस अगेन एट 10 AM. गुड बाय फ्रॉम माई साइड. Hello, very good evening, guys. Welcome back. Welcome to BYJU'S Exam Prep. Very good evening. Thank you, Abhi. Thank you for that. Very good evening. तो कैसा गया गेट एग्जामिनेशन? ऑल गुड. देखो अभी सेकंड चांस है बाय द इंजीनियरिंग सर्विस, राइट? तो अगर आपने ESE का पेपर भरा है तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके अटेम्प्ट करें, है ना? और क्योंकि बाकी जितने PSU हैं, मान लीजिए बाकी जितने PSU जो अपने एग्जाम कंडक्ट करते हैं, दे आर हैविंग ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द ESE. So if you are preparing for the other examinations also, then definitely you can be benefited. You will be benefited from this particular mock test, right? So it's not only gate, because many students what they feel that sir gate के बाद what I need to do, sir इतना confusion है, the gate examination didn't went well. तो उस केस में क्या है, you just need to be proceed. This was only one just under examination, right? एक एग्जाम था, इट वॉज हैविंग वन लाइक एक स्टॉप था. ट्रेन का जो जर्नी है, डेस्टिनेशन इज डेफिनेटली डिफरेंट, ठीक है? ये बीच में एक स्टॉप था, 10-15 मिनट का स्टॉप था, डेफिनेटली, राइट? नाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेशन, दैट कुड बी इंजीनियरिंग सर्विस, देन विल बी हैविंग ISRO, then we are buying HPCL, HCL. So definitely every year, if you see the last year also, many PSUs have conducted their own examination, right? तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. सो फॉर एट दैट मोमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए सर आई वाज नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, right? So if let us suppose if your gate examination didn't went well, what you can do is you just need to analyze what happened and then you have to proceed forward. और उसके बाद you just need to practice, right? Practice करते रहिए and you will be definitely excelling in one of the examination, right? So good evening Shekhar, Mani, Abhi, please do let me know my audio and video is all good, all perfect. Yes, good evening. चलिए, तो shall we start? Okay, so I'll be sharing the PDF of this session also on my Telegram channel, that is your Mechanical by Sooraj Sir.
So you can do join if you're not yet joined, right? So definitely you can connect with me where you'll be getting the PDF also, right? And Abhinav sir will be coming live on 14th Feb tomorrow at 7:30. He'll be telling about how to ace GATE 2024 in the first attempt. Okay, so ready guys, everyone. So I'll be taking questions from theory of machine, your industrial engineering, engineering mechanics, maintenance and robotics. 5 subject है, तो number of questions थोड़ा ज़्यादा होगा. So I want everyone to be lined up, and first question on your screen is this. Question number 36, because till 35th question sir has taken, है ना, धीरज सर ने 35 questions कराए थे, तो I am just continuing from that. क्योंकि 150 questions कराने, we have to cover all the 150 number of questions. So first question on the screen, the figure has as shown below is a rigid body undergoing planar motion. The absolute tangential acceleration at point R and S are 150 mm per centimeter square and 300 mm per centimeter square respectively, and the direction is already being given. So we having the direction at point R and point S being given like this. Okay, so what is the angular acceleration of the rigid body? Okay, what is the angular acceleration of the rigid body? चलिए बताइए. Very easy question, very easy question from your theory of machine. They have given you the tangential acceleration magnitude AT at R and AT at S is 150 and 300 respectively. You have to tell me what is the angular acceleration of the rigid body. Chaliye, let's see. Alpha value, alpha of this rigid body you have to calculate. Very easy, direct, straightforward. Abhi, Manike, Shekhar, quickly. Option A, B, C or D. Chaliye, chaliye. It's quite easy. You just need to see the direction of the acceleration. The acceleration direction is like this, right? It will be having the same. It will be creating the same acceleration, right? So we can say the total acceleration will be, or we can say alpha will be equal to total acceleration, that will be 150 plus 300 divided by the distance. Distance from this is 90, is already been given. So it is 90 because it is given in mm. It is also in mm, right? So it will be 150 plus 30 divided by 60. So it will be 5, oh sorry, 300. It will be 450 divided by 90, that is 5 radian per second square. Very easy, simple one liner. Yeah, इसमें तो you have to tell me the answer. Very good. 5 radian per second square. देखो simple है. Tangential acceleration, we know that in the direction of alpha only we will be having the acceleration, right? तो आपको जो alpha होगा उसका direction भी, it will be something like this. This will be the direction of alpha. Okay, and the body, this it's a rigid body, कोई आपका flexible नहीं है, so it will be having the same alpha throughout the rigid body, right? Very easy question. Very good, Maniket, very good. And the best part of engineering services, and obviously बहुत बार ऐसा होता है in other PSU examination, you are getting questions directly from the ESE previous year questions. So if you are preparing for ESE, basically you are preparing for the other PSU examination, right? Chale, next question on your screen, 37th problem. Consider the following statement with the reference to the 4-bar mechanism as shown in the figure. At the instant considered, so at this instant, they are saying that link number 2 and link number 4 are parallel to each other and 90 degree with the base. At this moment, can we say that omega 2 is equal to omega 4? Link number 3 undergoes pure translation. Velocity diagram is a straight line, and velocity of A with respect to B is equal to omega 4 minus omega 2 into AB. It's basically written as like this. Velocity of A with respect to B is equal to omega 4 minus omega 2 into the length AB. Chaliye, which of the statement is correct? 1, 2, 3, 2 and 3, 2 and 4, or all the statements are correct? Chaliye, bataiye. If you remember in theory of machine, we have studied very important, very significant thing about this is when we were discussing relative velocity method, right? So if in a 4-bar mechanism, if the input and output links are parallel to each other, iska matlab kya hai? What? Very good, very good. Maniket, absolutely correct. Whenever you have, dekho, in ESE, you'll be getting questions like this where you'll be have to identify the correct statements. So if you are able to identify the wrong statement, you will be able to eliminate the options. Perfect. Statement 1 is definitely wrong. Okay, तो इसके हिसाब से option A eliminated, option D eliminated. Now left out with option B and C. Now they are saying that link number 3 undergoes pure translation. It's absolutely correct. Why? Because I'm saying that because if I say this is the direction of omega 2, this is the direction of omega 4, right? So we can simply say that the velocity at point A will be simply equal to velocity at point B.
VA will be equal to VB. If VA is equal to VB, we can say this particular coupler link will be in pure translation. Pure translation, right? Okay, and if I try to draw the velocity diagram, if I say this is point O, this is your point, let us say this is point O, this is A, B, and this is point, let's say Q, this is our C. So we can say this is O, this is small a, this is your small, this is point small q, and this is point B, right? So your velocity velocity diagram is a straight line. So 3 statement is also correct. So option B is correct. Definitely velocity of A is equal to B. So we can say velocity of A with respect to B will be simply equal to 0. Will be simply equal to 0, right? Velocity of A with respect to B, भाई दोनों सेम है, इसके बीच में relative velocity will be definitely 0. So statement 2 and 3 is correct. Option B is the correct answer. Perfect. चलिए next question on your screen. In a crank, बहुत बार ऐसा many number of times a question like this is being repeated in ESE, in ISRO, in HAL. You might have seen this kind of question. In a crank slotted quick rate of motion mechanism, the distance between the fixed centers is 200 mm. So let us suppose this is the 2 fixed centers. Let's say this is point O, this is point O1. Okay, fine. And we are having the crank over here. Okay, so it is being repeated, it is being rotating like this. This is the connecting rod or slotted lever. This is the slider. Okay. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the distance between the fixed length, that means the radius or the length of the connecting rod is given as 200 mm. The length of the driving crank, the radius of the crank is equal to 100 mm, and the length of the slotted lever is equal to 500 mm. So they're asking you what is the length of the cutting stroke. चलिए, so length of the cutting stroke length, simple direct formula based question है. Stroke length is equal to 2 times the length of the slotted lever into the radius of the crank divided by the length of the connecting rod. Just you have to place the values. So 2 into 500 into radius is 100 divided by 200. So this is directly coming out to be 500 mm is the stroke length. Option C, Manikeet, option C will be the correct answer. B kaisa aaya? How you are getting option B is the correct answer? Yes? Done? Is this clear? क्या यही आ रहा आंसर? Please check. है ना? Perfect. Okay. Option C is the correct answer. Very good. Very good. चलिए. Next question. देखो, ESE में if you know the answer, you will be able to solve that question in less than 30 seconds. And if you don't know the answer, if you are solving and if it is taking more than 2 or 3 minutes, that means your approach is wrong. Okay, so please make sure this very important thing. Time is very crucial in engineering service paper or कोई भी paper में time is very very crucial thing. चलिए next question, 39th problem on your screen. Which of the following mechanism is an inversion of a double slider crank mechanism? Quickly. Which of the following is an inversion of a double slider, that means a double sliding mechanism? Elliptic trammels, beam engine, oscillating cylinder engines, coupling rod of locomotives. Option A, B, C or D. Very easy. In less than 10 seconds you can tell me the answer. Chaliye. Mani, Abhi, Shekhar. Quickly, what is the answer for this? A, B, C or D. अरे बहुत easy है. Double slider में we are getting 3 inversions, है ना? If you are fixing the slotted plate, we are getting the elliptical trammels. If you are fixing one of the sliders, you are getting Scotch-Yoke mechanism, है ना? If you are fixing the connecting link, you are getting the Oldham's coupling. Option A correct है. Beam engine आपको मिलता है, you are getting in the single slider mechanism. Oscillating you are getting in a beam engine you are getting in a 4-bar mechanism. Oscillating you are getting in a single slider mechanism. Coupling rod of locomotive that we are studied in the balancing part, है ना? Yes, we can say partial balancing of primary unbalanced force. Okay, so option A is the correct. Elliptical trammels, if you remember, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ. It's very easy. This is the slotted plate, right? We are having 2 sliders. And this is the connecting link. So in elliptical trammels, what we are doing is we are fixing this slotted plate, and by fixing these slotted plates, we are getting elliptical trammels where we will be able to get elliptical shapes.
अच्छा, इसमें apart from elliptical shapes, can we get any other shape? If I try to take the locus, let us suppose this is point A, this is point B, and this is the center point as C. अगर आप center point का locus निकालेंगे, then you will be getting a circle. If you take any other point, the locus of any other point, it will be simply a elliptical shape. Okay, fine. It's very important question is being repeatedly asked from this segment. Chale, next question, question 40 on your screen. Consider the following statement. If in a single slider mechanism, the slider is at the dead center position. When the slider velocity is 0, slider velocity is maximum, slider acceleration is 0, slider acceleration maximum. So which of the following statement is correct? Definitely two statements will be correct. अगर velocity 0 होगा, acceleration will be maximum, और अगर velocity maximum होगा, acceleration will be 0. So tell me, that means they are saying at dead center. Dead center means we are having two dead center positions. One is inner dead center and second is outer dead center. चलिए, fine. So if I say this is a slider crank mechanism, if this is a slider crank mechanism, right? If I take the example of an inner dead center मतलब theta equal to 0. Theta equal to 0 degree मतलब we are talking about inner dead center, है ना? चलिए, inner dead center. So tell me, at inner dead center, what's the velocity and what is the acceleration? And by using this concept, which of the options or which of the statement is correct? चलिए, very good. Money, A, B, C or D. If theta equal to 0, we have already studied one very important segment, velocity, that is equal to r into omega into sine theta plus sine 2 theta by 2n, where n is obligatory ratio. If theta equal to 0, then velocity will be directly equal to 0. If I talk about acceleration, that is r omega square cos theta plus cos 2 theta by n, right? So at theta equal to 0 degree, then acceleration will be basically coming out to be maximum. Okay, so from here we can simply say slider velocity will be 0 and acceleration will be maximum. So 1 and 4, option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Clear hai? Very good, Abhi. Very good. Very good. It's quite obvious. Now, अगर velocity आपका 0 होगा, तो definitely dv by dt is acceleration. So if velocity is minimum, then the acceleration will be maximum. चलिए, okay. Can we proceed? Next question. बहुत सारे क्वेश्चन है guys, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी. So we have to cover a lot of questions. चलिए, let me check. हाँ. Next question, 41st question from Epicyclic gate train. An epicyclic gate train has three shafts A, B, and C. A is the input shaft running at 100 RPM clockwise. B is the output shaft running at 250 RPM, and torque at A is 50 kilonewton meter in clockwise. C is fixed. What is the torque needed to fix C? Chali, it's basically from your fixing torque from epicyclic gate train. तो हमारे पास input है. So they have given the RPM of the input gear. Let's say Ni is input, that is given as 100 RPM, and it is given in clockwise. This is clockwise rotation. This is your output, which is equal to 250 RPM. 250 RPM again in the clockwise direction. And they are saying that torque A means input. Your input is equal to 50 kilonewton meter. That is also clockwise. What is the magnitude of the fixing torque? चलिए. So first of all, they have not given any efficiency of the gate train. अगर efficiency दे रखा होता, then we have to use that. But अगर आपको नहीं दे रखा, so we can simply say you're very good. So answer is A, B, C or D. Very good. अभी has already solved. बहुत easy questions है यार, बहुत ज़्यादा easy questions आते हैं. Ni into tau I plus No into tau O is equal to 0. So from here, let us calculate the value of tau O. Ni, this is your minus 100 into 50 divided by 50. 250. Okay, so from here you are getting this to be 20 minus 20 kilonewton. Minus 20 kilonewton meter. So if we calculated the output torque, so can we calculate the fixing torque? So it's quite easy. The input torque plus the fixing torque plus output torque equal to 0. Input torque आपको पता है, that is clockwise, that is positive 50, plus fixing torque we have to calculate. Output torque is minus 20 equal to 0. So from here, the fixing torque coming out to be minus 30 kilonewton meter, that is 30
kilonewton meter in the anti-clockwise direction. So it is option C is the correct answer. 30 kilonewton meter in the anti-clockwise direction. Very good. Very good. Clear. ठीक है? Done. बहुत easy था ये. करेक्ट. अभी ने तो सबसे पहले आंसर मार्क कर दिया था सर. आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. 42. Again from epicyclic, a gear is fixed which is having 200 number of teeth is meshed with smaller gear having 50 number of teeth. So let us suppose this is the bigger gear. Let's say I'm denoted as gear number A, and this is your smaller gear which is denoted as small b. So they are saying that TA, capital TA is equal to 200 and capital TB is equal to 50. Now two gears are connected with the help of an arm. So there is an arm which is being used to connect. The number of turns made by the smaller gear for one revolution of the arm. So they are given as one revolution of the arm, and arm is equal to 1. So what will be the RPM of the gear B? Okay. Chaliye. What is the RPM of the gear B? And that is their thing about the bigger gear. That means you can assume the bigger gear to be 0. है ना? चलिए quickly. Simply we can say, if I say x, so NA is equal to y plus x, NB is equal to y minus x TA by TB, right? The bigger gear is being fixed, so we can say NA is equal to 0, that is x plus y equal to 0. This is equal to y, so x is equal to minus 1. Very good. X equal to minus 1, y is equal to 1, already given. Place it over here. So this is equal to 1 plus 1 into TA by TB. TA is 200 divided by 50. So this is 1 plus 4. So this is 5. Option D is the correct answer. Very good, Abhi. Very good. Maniket. Option D will be the correct answer. That means you will be having the RPM of gear B will be 5 RPM. Okay, when gear is rotate one revolution, the small gear is 4, but now they are saying that the number of turns made by the smaller gear for one revolution of arm is rotating by one revolution. Okay, and that is they're saying about the center of the bigger gear. That means we are saying the about, and the bigger gear, that is a fixed gear. Okay, right? Clear, Abhi? क्योंकि ना many times what happened, you have to read the statements carefully. अगर आप statement को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, then what happens, you will be deviated from the solution, right? So concept you know, only thing is you need to apply the logic and quickly. That's it. Chaliye, next question. 43. The problem of interference in involved gears can overcome by which of the following means? How you can overcome the problem of interference in involved gear? Option A is decreasing the central distance. Option B, using the composite profile with cycloidal curve at the root of the, we can say 2. Using the stub teeth of the height more than that of the full depth teeth by using proper lubrication. Chaliye. Which one will be one of the method to eliminate or to overcome the problem of interference? Chaliye. Increase the number of teeth, but it's not there in the option. Definitely that is the best method. If you remember, increasing the number of teeth was the best method, but we are not having that option. But I think one of the option, if you try to read, you'll be able to get the answer very accurately. Tell me, stubbing the teeth of height more than the full depth. So is that a we can say viable option? Will you be able to stub the height more than that of the full depth? Let us suppose this is the full depth, right? And you are stubbing more than full depth. That means you are stubbing till this point. There is no teeth left out. So this is not possible, right? Interference cannot be eliminated by lubrication. D is not correct. By decreasing the central distance, if you try to decrease or increase central, if you try to decrease the central, what happens? Your tip becomes closer to each other, so there is a high tendency of interference. Because if you see, if the two gears were present like this, okay, fine, this was the two central distance, and if you try to make this a bit closer, then what happens? There is a high tendency of interference. This is high tendency of interference. So decreasing central distance is not the good options. Only options left out is this. Why we have saying that this is the best option? Because
Can you tell me in cycloidal profile, do we have any problem of interference? In cycloidal gear, do we have any interference issue? No. That's the best part. In cycloidal profile teeth, in cycloidal profile teeth, there is no problem of interference. So definitely, if I try to make a portion of the involute gear slightly cycloidal, that will eliminate the problem of interference. That's the same thing. Using the composite means we are taking the combination of involute and cycloidal. Composite with cycloidal at the root of the tooth. That too we are keeping over here at the root of the tooth at this point. Okay, is this clear? Exactly. Very good. So B option is absolutely correct. If you are not able to understand like this, try to understand by the wrong options. If you try to understand A, C and D, that will definitely increase the interference. Okay, fine. So we are only left out option with option B. Chaliye, question number 24th on your screen. Oh, sorry, not 24th, 44th on your screen. What shall be the central distance of the axis of the pinion and the gear when a 20-degree full depth involute profile pinion of 20 meshes with a gear of 50 number of teeth having a module of 6m? Very easy question. You need to calculate the central distance. Central distance आपको निकालना है, बहुत easy question है guys. This is a pinion, this is a gear. Okay, you have to calculate the central distance. It's a simplest question. Pinion hai, gear hai, number of teeth is given 20, 20 number of teeth, 50 number of teeth. So what is the magnitude of the central distance? Very good, Abhi, very good. It's quite easy. Central distance is equal to m by 2 into teeth, number of teeth of the pinion to the number of teeth of the gear. So it is m is given 6 by 2 into t is 20 plus 50. So this is 3 into 70, that is 210. This is already given in mm. So option C is the correct answer. 210 mm is the central distance. Simple question, very easiest. है ना? ठीक है? चलिए, next question on your screen from your flywheel topic. The turning movement diagram of a single cylinder double acting steam engine consists of a positive and negative loops above and below the average torque line. For the positive loop, the ratio of the speed of the flywheel at the beginning to and at the end is one of the following: less than unity, equal to unity, greater than unity, or equal to 0. So it's quite easy. If I say this is the double acting steam engine, let's say this is the double acting steam engine, right? Okay, and this is your torque, this is theta. Let's suppose this is the mean line. This is your T mean line. Okay, they are saying that for the positive loop, this is the positive area. Let's say this is N1, this is N2. They are saying what will be the ratio of N1 by N2? Will it be less than unity, equal to unity, greater than unity, or equal to 0? How you can answer to this? Whenever we are entering the positive, we are basically storing the energy or releasing the energy? Tell me. When we are entering the positive area, right? Is flywheel storing or releasing? At this point, what happens? The flywheel is start storing the energy. Will start storing the energy. If it starts storing, that means till before this point it was releasing, so it was having this. At this point, it will be having the least amount of RPM, because after this, what happens? The flywheel will be storing energy. RPM increase, and at N2 it will be stop storing the energy. So this will be the point where we'll be having the maximum RPM. So if I say the ratio of N minimum by N maximum will always be less than 1. Option A is the correct answer. Sir, I'm able to solve 100 to 100 questions successfully in 3 hours correctly, but in the non-tech I'm able to. So please, the important topics in paper 1. Please make sure try to identify your comfortable topics, because in paper 1 you should be identifying some comfortable topics. Like if you are a mechanical student, you will be having some subjects which is much more easier to understand rather than if you are an EC student, right, or electrical student. What happens? Like if I talk about renewable energy, if I talk about PERT in your project management, these are very scoring topic, right? We can say drawing is having a very less weightage. But what you can do is tomorrow I'll be taking the drawing marathon session. You can have a quick discussion on that also. So try to understand and try to at least secure 100 or 110.
If you're able to go till that point, I think that you're in a safer zone. You have entered the safer zone, right? Okay, it's very important. The non-technical part, you have to select some topics which you are comfortable with. Let's suppose you're not at all comfortable with ICT. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. There are other topics where you are comfortable. Try to attempt that. You can see the marathon sessions of the previous topics. I think many yesterday or no, today we had current affairs. है ना? Day before yesterday we are having other non-tech portions. So you can try to have a quick recap. Not able to attend the live session, you can see the recorded one. You can increase the speed by 1.25x. That will save your time. Okay, fine. So try to approach the question where you are comfortable with. क्योंकि देखो, it's not possible to complete the entire topic, right? And being a paper one, जिसमें आपके electronics का भी आता है, civil का भी आता है, mechanical का भी आता है, so it's a combination of different branches. So you have to select and mechanical और civil का थोड़ा upper hand होता है. Frankly speaking, ESE में mechanical civil are having the upper hand on paper one topic. So if you are just slightly, if you're giving some effort, you will be able to secure easily more than 60%, and that is more than sufficient. ठीक है, चलिए. Okay, next question. Again from flywheel. In a flywheel, the safe stress is 25.2 meganewton per meter square, and the density is 7 gram per centimeter cube. What is the maximum peripheral velocity? चलिए, very easy from the question from flywheel. This is your safe stress being given 25.2 mega newton per meter square. Density is being given 7 gram per centimeter cube. What is the velocity? Maximum peripheral velocity. Design of flywheel में आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक को. Okay. Yes. Exactly. V is equal to root of sigma by rho. Sigma है 25.2 mega newton 10 to the power 6 divided by this is 7 into minus 3. This is 3 10 to the power 3 है ना, root of this. So this will be 25.2 into 10 to the power 3 divided by 7. Approximately you will be getting root of 3600 60 meter per second. इतना ही आ रहा है? Please check. Are we getting this much value? है ना? 252 by 7 exactly 3600 ही आएगा, है ना? So root of this is 60 meter per second. Option C is the correct answer. We are getting exactly correct. If you're rounding off also, let us suppose you're rounding off to 59 or 62. So near about you will be getting the answer. Like, but in this case में you are getting the exact cube root. है ना? Square root आपका exact आ रहा है, तो that will be giving you the correct answer. चलिए, next question on your screen, 47. From the vibration, one of my favorite topic, जो बहुत बच्चों को easy भी होता है, scoring भी है. Specifically from ESE perspective, vibration is most easiest. चलिए, the mass of single degree damped vibrating system is having a mass of 7.5 kg. It makes 24 oscillations in 14 seconds when disturbed from its equilibrium position. The amplitude reduces to 0.25 volts initial values after 5 oscillations. है ना? After, I'm not able to see, after 5 oscillations. So the question is, what is the logarithmic decrement? Delta की value they are asking. What is the value of logarithmic decrement? Very easy question. So we can say x5 by x0 is equal to 0.25, or we can say x0 by x5 is equal to 4, right? If you're able to get this, you can tell me the answer. Very good, TPM. Very good, absolutely correct. देखो, you can eliminate option B and D directly. क्योंकि 4 है, we can say x0 by x1 into x1 by x2 into x2 by x3 into x3 by x4 into x4 by x5 is equal to 4, or consecutive ratio is always constant, that is e to the power delta. So e to the power 5 delta is equal to 4. So delta is equal to 1 by 5 ln of 4. Option C is the correct answer. Very good.
वेरी गुड, अभी हो गया। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 1/5 ln 4 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. 20 kg mass is suspended from a spring which deflects 15 mm under this load. The value of the critical damping coefficient to make the motion aperiodic will be. They are simply asking you the value of critical damping coefficient. What is the value of critical damping coefficient? So if you know the formulation, critical damping coefficient is equal to 2 into m into omega n. But we don't know the value of omega n, but they have given the mass 20 kg. They are given the static deflection delta is equal to 15 mm. Okay, so we can say 2 into 20 into under root of g by delta, and this is 40 into, we can say 9.81 divided by delta is 15 into 10 to the power minus 3. तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. 25 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, प्लीज चेक. 40 into 25.5 something about that. तो जब सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग एग्जैक्टली ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर. वी कैन से 1022.8. ओके 57 आई थिंक 25.57 into 40 अप्रॉक्स ऑप्शन डी है ना. देखो इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या है, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्टी इज द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर है ना. इफ यू ट्राई टू विजुअलाइज ऑप्शन थोड़े नजदीक हैं. इफ दिस वुड हैव बीन लाइक 100, 500,000, 2,000, then I think it will be a very piece of cake to answer this kind of question. But because as options are very close to each other, so we have to solve it more accurately है ना. अगर ये कुछ ऑप्शंस थोड़े दूर दूर होते, लेट्स से 500 होता, 200, हाँ वेरी गुड. सो वी आर गेटिंग 1023 न्यूटन meter per second or Newton second per meter. Option D is the correct answer. Clear? 1022.9. If I say exact value is 1022.9, but yes, ठीक है. The nearest closest value is option D. चलो next question on your screen. 49th problem, very easiest. The equation of motion of a linear vibrating system is given 4x double dot plus 9x dot plus 16x. What is the value of critical damping coefficient? बहुत easy है. We know the standard expression mx double dot plus cx dot plus kx equal to 0. तो यहाँ से mass का value simply आ गया क्या? 4. And there is one more formulation x double dot plus 2 zeta omega n x dot plus omega n square x is equal to 0. तो यहाँ से omega n कितना आ गया? Under root of this will be 4. है ना, that is equal to 2 radian per second, right? Omega n आ गया 2 और mass is equal to 4, so cc is equal to 2 m omega n. So 2 into 4 into 2, 4 4 16. 16 is the correct answer. 16 Newton second per meter. Option B, very good. Abhi Maniket, very good. Option B is the correct answer. 16 is the correct answer. ठीक है, clear? Understood? देखो क्वेश्चंस, देखो इफ यू आर हैविंग ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, आई थिंक यू विल बी एबल टू इजीली आंसर एटलीस्ट 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सब्जेक्ट. ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In a vibrating system, the spring has a stiffness of 32 Newton per meter. K is equal to आपको दे रखा 32 Newton per meter. Mass is equal to 2 kg. Right? The system is having a damper whose coefficient of viscous damping is, okay, C value is given as 8 Newton second per meter. The system is overdamped, underdamped, critically damped or undamped. Undamped तो हो ही नहीं सकता. Undamped का मतलब zeta equal to 0. Okay, so tell me how we can calculate. How we can calculate that the vibrating system is an overdamped, underdamped or critically damped? A, B or C में से which is the correct answer? बहुत easy है, very easy question. Quickly, how we can calculate? We just need to calculate the value of zeta. क्योंकि अगर zeta greater than 1 होगा, then that is the overdamped system. If zeta less than 1,
then your underdamped system, if zeta equal to 1, that is a critically damped. अब मुझे zeta का वैल्यू निकालना, how we can calculate zeta? Yes, आ गया? Exactly. Underdamped, it is c by 2 root k into m. c कितना है? c is 8 divided by 2 into root of 32 into 2. This is 8 by 2 into root of 64. This is 1 by 2, that is 0.5. So you are getting the zeta value to be less than 1. That means this is an underdamped system. मतलब vibration होगा क्या नहीं? Do we have vibration in this? Chandra sir is also in the comment section. तो पूरी mechanical team हमारे आपके साथ है ना? तो definitely इसमें zeta less than 1 है, तो this will be having vibration, will be present. This is an underdamped system. Very good. चलिए, perfect. Next question on your screen from the governor. The controlling force curve for a spring control governor are shown in the above figure. Which of the curve represents which of the curve represents a stable governor? चलिए, which of the following curve A, B और 1, 2, 3 और 4 कौन सा आपको स्टेबल गवर्नर के बारे में बता रहे? देखो, curve number 1 is an example of an unstable, है ना? Curve number 2 is an example of, this should be going from your origin, right? This should be going from origin. नहीं तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा. This is from origin. This is isochronous governor. Isochronous governor. This is an example of a stable governor. And they are talking about spring control. तो curve number 4 कुछ है ही नहीं. That is basically for your Watt or Porter governor. So definitely they are talking about stable governor. Stable governor is our option C. That is 3. Option C. That is 3. That is our stable governor. Very good. Very good. ये तो देखते ही आपको याद आ जाता होगा ना. अच्छा, what was the equation? What is the equation for unstable governor? Unstable का equation क्या था? Unstable governor, the equation was controlling force equation. Fc is equal to AR plus B. For stable governor, that is equal to Fc is equal to AR minus B. For isochronous governor, your Fc is equal to AR. That's it. तभी तो origin से जा रहा है ना? Clear? चलिए, next question on your screen is 52 from the Hartnell governor. In a Hartnell governor, the mass of each ball is 2.5 kg. That means the fly mass. The maximum and the minimum centrifugal forces are 2000 and 1000 Newton. So F1 is equal to 2000 Newton. Exactly. If RPM increases, the radius has to decrease. F2 is equal to 1000 Newton. R1 is equal to 20 centimeter. R2 is equal to 15 centimeter respectively. The length of the vertical and the horizontal arms of the bell crank levers are seen. That means A is equal to B. A is equal to B. Then what is the stiffness of the spring? How we can calculate the stiffness of the spring? Simple, direct formula based question है. Stiffness कैसे निकाल? This is the direct formulation. K is equal to 2 into A by B. The centrifugal force 1 minus 2 divided by the corresponding radii. अब A is equal to B है ना? So 2 into F1 minus F2, 2000 minus 1000 divided by R1 minus R2, that is 20 minus 15, that is 2 into 1000 divided by 5. So this is simply 400 Newton per centimeter क्योंकि आपको radius is given already in centimeter. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. 400 Newton per centimeter will be the stiffness of the spring. Okay, clear? Chaliye, next question on your screen, question 53. And now we will be starting the engineering mechanics. Engineering mechanics, and normally the questions are very less. A by B whole square. A by B whole square. Square hota hai. Thank you, Abhi. Because A or B same hai, so we are not taking that into consideration. Now we'll be starting the mechanics problem, then after that industrial, then your robotics, then we'll be going for the maintenance. Okay? Chaliye. A cube strikes a stationary ball exerting an average force of 50 Newton over a time of 10 microsecond. Okay, 10 millisecond. The ball has a mass of 0.2 kg. Its speed after the impact. So there is a cube, right? There is a cube. Okay.
which is hitting a stationary ball, right? So there's an average force of 15 Newton being applied for a time period of 10 millisecond. What will be the speed of the ball after the impact? What will be the magnitude of the speed of the ball after the impact? Chaliye, how we can calculate? Average force is given. Force is equal to 50 Newton. Okay. Time period they have given as, that means change in time is given as 10 millisecond, 10 to the power minus 3 second. Initial velocity is 0. Okay. Can we say that force is equal to the rate of change of momentum with respect to time? Okay, rate of change of momentum, or change in momentum by change in time. So this is m into final velocity minus m into initial velocity divided by change in time. Exactly. Simple. This is 50. Mass you can take it as common. U already 0 है तो ये 0 हो जाएगा. M into V divided by delta T. तो यहाँ से we can get the value of V. 50 into 10 into 10 to the power minus 3 divided by mass is, this is 0.2. है ना? Fine. So calculating this, what is the value you're getting? 2.5 meter per second. Very good, Abhi. 2.5 meter per second. Are you getting this? 2.5 meter per second as a final correct answer. 1 0 कट जाएगा. This will be 1 2 3. 10 power minus 3 will be cancelled out. It will be 5 by 2. 5 by 2 is 2.5 meter per second. Option B is the correct answer. Momentum conservation लगाना है, simple. Okay, चलिए. Can we go next question? Next question on your screen is this. A box. इस type of question ना बहुत बार in GATE also they have repeated this kind of questions. A box of weight 1000 Newton is placed on a ground. Okay, it is having a weight of 1000 Newton is placed on ground, and the coefficient of friction between the box and the ground is mu is equal to 0.5. When the box is pulled with a force of 100 Newton, the friction force developed between the box and the ground will be. What will be the magnitude of the friction between the box and the ground? Simple question. चलिए बताइए. Very easy. Let us first of all calculate this your static friction, or we can say the limiting friction. Let us calculate the value of limiting friction. That is mu into n. So mu is 0.5. Normal is 1000. This is normal. This is 1000. So this will be coming out to be 500 Newton. Okay. Fine. So the limiting friction is 500 Newton. That means in order to move this block, you have to apply a force of minimum 500 Newton. So before that, what happens? If you try to remember the curve, okay, this is curve like this. This is your, we can say, applied force, right? This is the frictional force. So before the limiting, this is the limiting point. Before the limiting, this is the limiting point. So what will happen? Whatever amount of force you're applying, you'll be having the same amount of friction force. Option C, 100 Newton is the correct answer. Exactly. Limiting friction 5. देखो अब इस block को move करने के लिए you need to apply 500 Newton force. You're only applying 100 Newton. That means it will be a static condition. And a stationary condition होगा. That means equal force of 100 Newton being applied. तभी तो ये stationary है. Okay. चलिए. Perfect. Next question on your screen. 55th question. A boy walks up a stalled escalator in 90 seconds. When the same escalator moves, he is carried up in 60 seconds. How much time will it would take him to walk up the moving escalator? Chali. So initially what happens? The escalator is stationary. The boy is taking 90 seconds to cover that distance. When the escalator is moving, the boy is not moving, right? So in that case, the boy is carried in 60 seconds. Then the question is how much time it will take to walk up the moving escalator. That means in that case, the escalator is also moving and the boy is also walking. So what will be the total time taken by the boy? Chali, 48, 36, 30 and 24. Which is the correct answer? When the escalator was not moving, the velocity of the boy was equal to your distance. Let us suppose I'm assuming distance as x, the total distance, and that is your 90 second. Okay. Next is they are saying when the boy is stationary and the escalator is moving. Escalator is moving. In that case, same distance will be traveled. Time period is 60 seconds.
Okay, so now they are saying how much time it will take by the boy if he's walking up the moving escalator. So velocity of the boy in a moving escalator will be equal to distance divided by your time is t. Okay, yes, fine. Can we say this is nothing but x by 90 plus x by 60? This is x by t. Solving it, can you tell me what is the final answer? What is the final answer? This will be x by 36. This is x by t. So from here, t is equal to exactly 36 seconds. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Correct. TPM correct. Abhi Maniket clear hai? Yes, option B 36 second will be the correct answer. Very good. Chali, next question from the industrial engineering, from the forecasting topic. The demand of a product in a month of March is turned out to be 20 units against an earlier made of forecast of 20. The actual demand of April and May is turned out to be 25 and 26. What is the forecast for the month of June? Use exponential smoothing method, taking the smoothing constant as 0.2. So they are given as your actual demand for April is equal to April and May is equal to 25 and demand for May is equal to 26. Your forecast for the month of March is 20. The demand for March is also 20. They're asking what is the forecast for the month of June. Chaliye, quickly, what is the answer? What is the answer? Simple hai. Dekho, first of all, we need to calculate the forecast for the month of April. So forecast for the month of April will be simply the demand, or because the forecast for the month of March, right, plus alpha into demand for the month of March minus forecast for the month of March. Being these two same, so we can simply say this is equal to 20. So forecast for the month of May, it is equal to 20 plus 0.2 into demand for May is your 26. है ना? One second. अप्रैल का तो आपको डिमांड, अच्छा ये तो वी नीड टू कैलकुलेट, राइट? इसको तो पहले निकालो. हाँ, मार्च का कितना है? इट इज गिवन एज 20 प्लस 0.2 इंटू डिमांड फॉर द मंथ ऑफ दिस इज 20 माइनस मार्च का कितना है? 20. हाँ, दिस इज 20. अप्रैल आ गया, फिर मई निकालेंगे. मई का 20 plus 0.2 demand of May is April कितना है? April is 25. 25 minus 20. So this is 5 to 21. So जून का कितना है? 22. Yes. So we'll be having the forecast for the month of June is equal to forecast for the month of May plus alpha, the demand for May minus forecast of May, है ना? May का कितना है? 21 plus 0.2 into demand of May is 26. 26 minus 21, that is 5, that is 22 units is the correct answer. Option B. Option B, 22 units. Money is correct. TPM is correct. Abhi done. Option B, 22 units. You'll be getting directly by using exponential smoothing method. Chaliye, next question on your screen. 57th problem. Consider the following cost. You have to tell me which of the cost is related to the inventory carrying cost. Inventory carrying cost का कहीं ना कहीं मतलब है we are talking about your holding cost, है ना? We are talking about the holding cost. चलिए, which of the cost is related to the holding cost? Cost of inspection, return of goods, cost of obsolescence. Obsolescence मतलब it will be going out of stock, ठीक है? Something like this. Cost of scrap, cost of insurance, cost of negotiation with the suppliers. Definitely, if I talk about cost of inspection, that is something related to the ordering cost. तो ये आपका नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, मतलब A and B can directly be eliminated. Cost of obsolescence is definitely a holding cost. Scrap का भी holding है. Insurance is also being covered in the holding cost. Negotiation with the suppliers.
If you are negotiating with a supplier, definitely, let us suppose if you are getting some discount, that will be, you will be getting in the ordering cost, right? So option fifth is definitely something related to the ordering cost. तो ये भी नहीं हो सकता. So only we are left out with option C, that is 2, 3 and 4. So cost of obsolescence, cost of scrap and cost of insurance, all these are somewhere related with the holding cost. Okay, clear? चलिए. Next question from the break-even analysis. Last year, manufacturer produced 15,000 products which were sold at 300 rupees each. तो आपको units दे रखा 15,000 and selling price per unit is 300 rupees. At the volume, the fixed cost is given as 15.2 lakh. And the total variable cost is at this volume, the total variable cost is this. So can we see the variable cost per unit? That will be equal to 21 lakh divided by number of units, that is 15,000. Can you tell me what will be the value? 21 lakh divided by 15,000. This 3 will be cancelled out. ये हो जाएगा आपका 700. It will be 5. So this will be 140, है ना? 140 rupees per unit. The variable cost will be 140 rupees per unit. This is 300 rupees per unit, है ना? चलिए, तो आपको बताना है, they are asking you what is the value of break even quantity. So x is equal to f upon small s minus small v. This is 15,20,000 divided by 300 minus 140. So 15,20,000 divided by this will be 160. चलिए, approximately what is the answer? 9,500. Very good, very good. Abhi, so you'll be getting approximately 9,500 units. That is your break-even point. Option D. Very good. 9,500. Option D. Break-even point. Very good. Maniket, Abhi, TPM. Correct hai. चलिए, next question. 59th on your screen. Easy question hai. Economic order quantity is a quantity at which the cost of carrying is minimum, equal to ordering cost, less than ordering cost, or cost of overstocking. What is happening at economic order quantity? Chaliye. At EOQ, we always say that holding cost is exactly equal to the ordering cost. It is not minimum. It is option B. We have studied this a lot of time. Very good. Option B is the correct answer. Perfect hai na? Chaliye, very good. Next question. When the ordering cost is increased by 4 times, what will be the impact on the EOQ? Q star पे क्या impact होगा if your ordering cost is increased by 4 times? चलिए, very easy. Very easy. We know that Q star is equal to 2DCO by CH. Root of this, if you are increasing this by 4 times, so definitely Q star will be increased by 2 times. Very good. Option A is the correct answer. Very good. 2 times increase hoga. Exactly. Chalo, next 61. The break-even point can be lowered by increasing the fixed cost by increasing. Yes. Yes. Huh? They are not mentioning anything about this. Huh? They are saying when the ordering cost is increased by 4 times. That's it. CO को आप बढ़ा रहे हैं 4 times. बाकी सब नहीं change हो रहा ना. If they are not mentioning anything about this, so definitely the other parameters are kept constant. ठीक है? चलिए. Okay, हाँ. The break-even point can be lowered by increasing the fixed cost, increasing the variable cost, decreasing the slope of the income line, or reducing the variable cost. Very easy. How you can decrease the. Very good. देखो, we know that the break-even point is equal to fixed cost divided by the selling price per unit minus the variable cost per unit. If I want to decrease this, I should be decreasing fixed cost, which is not possible. If I try to decrease variable cost, then what will this overall will be? What will happen? This overall will be this decreasing, then this will be we can say increasing, then this will be decreasing. Okay, so reducing the variable cost, right? Acha, to
This is not possible. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Simple. By looking at this, if you try to decrease the variable cost, overall the denominator will be increasing. So definitely this will be increasing. Option B is increasing the variable cost. This is not possible. Option C is decreasing the slope of the income line. What is income line? They're basically, they might be talking about the PV slope. In break-even analysis, we are studying about the PV diagram, profit to volume curve. Okay? So if you try to alter that, definitely won't be having any impact on XBEP. क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए profit to volume ratio is always we can say a constant value. The ratio is always constant. चलिए, clear? Understood? चलिए. C is also correct. Income line, basically income line is somewhat different. Increasing the slope of the income line basically they might be talking about something related to cost, है ना? क्योंकि income line is never ever we are dealing with, because income line they are basically talking about the revenue. Income line basically they are talking about revenue. If I say if they are decreasing the slope, decreasing the slope means you are decreasing the S value. If you decrease S, that means you are increasing the break-even point. Okay? Decreasing the slope means you are having a lower inclination. Lower inclination मतलब आपका S का value कम हो गया है. Selling cost अगर decrease हो गया तो definitely your XBP will be increasing. है ना? Yes? क्योंकि it will be intersecting. If they were having this as the point, it will be intersecting over here. अगर यही आपका यहाँ पर it will be intersecting over here, right? Okay, so if you are decreasing the selling price, definitely the XBP will be increasing. Clear abhi? So this is also not a correct option. Okay, next question 62. अभी हमारे पास 13 क्वेश्चन और बचे. 75 questions we are having, and after that question 75 तक है. Then Chandra Sir will be joining, right? तो चलिए. In the solution of linear programming by the simplex method, if during iteration all the ratios of the right hand side bi to the coefficient of entering variable a are found to be negative, that means they are saying if all the values of theta are to be negative, what does this implies? अगर आपका replacement ratio value is all the values are coming to be negative, what do you mean by this? Do we mean that we are having infinite number of solutions, or infeasible solution, degeneracy, or unbounded? We always seen n number of times during marathon sessions also. मैंने आपको बताया था, whenever I'm having simplest question, they won't be asking you to do the iteration. In GATE also, in ESE also, right? ESE prelims, mains में पूछ सकते हैं. And if all the values of the replacement ratio are coming to be negative, that means we are talking about the unbounded solution, है ना? Unbounded. Very good. Perfect. चलिए next question आपके स्क्रीन पे. In simplex method, the variables which have not been assigned the value 0 during iteration. In simplex method, अगर मैं कुछ variables को 0 value assign नहीं करता, what do we call that kind of variables? Basic variable, actual variable, artificial variables, or none of the above? चलिए quickly simplex question में exactly जिसको value 0 नहीं करते, we call it as basis or basic variable, and the variables which we are keeping it as 0, we call it as non-basic variable, right? Remember during iteration, you remember this kind of understanding. जिस variable की value 0 रखते हैं, this is non-basic, and the variables which we are getting the value which is non-zero, we call it as basis or basic. We can call it as basis also. We can call this as basis also, right? चलिए perfect. Question number 64. Very good. Money, Abhi. Very good. चलिए next question. In PERT network, the expected project duration is found to be 36 days. So they have given capital T is coming out to be 36 days. Okay, from the start of the project. The variance is 4 days. The variance is basically 4 days. Basically, it should be square. The probability that the project will be completed in 36 days. What's the probability? What is the probability of completing the project in 36 days? Very easy question.
वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालिए. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालिए एंड टेल मी व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी. सर z is equal to ts minus te by sigma, है ना. So this is equal to 36 minus 36 divided by sigma, that is 0. For z equal to 0, what is the probability? We have solved n number of questions like this. It is simply 50%. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. ठीक है, परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन में तो बहुत जल्दी आंसर्स आ जाते हैं ना, लेस देन 10 seconds आई थिंक. Okay, so you have to calculate the variance for the critical path. We have given some network diagram in form of statement. A to B is having a time duration of 4 units, B to C is having 16, C to D is having 4, and D to E is having 1 time units. What is the standard deviation of they all the value they have given is the variance. ये सब जो आपको दे रखा है, these all are variance. So the question is, what is the standard deviation of the critical path? Sir, we already know that standard deviation of the critical path is nothing but exactly under root of summation of variance, है ना. So this is equal to 4 plus 16 plus 4 plus 1 root of this 20 25 root 25, that is 5. Option C, 5 time. Is this clear? 5. Simple. देखो जिनको पता है concept, less than 15 seconds, I think more than sufficient to answer to these type of questions. चलिए next question. The earliest occurrence of event 1, so this is event 1, the earliest occurrence is 8 weeks and the latest occurrence for event 1 is 26 weeks. The earliest occurrence for the event 2, the earliest occurrence of event 2 is 32 weeks and the latest occurrence is 37 weeks. If the activity time duration is 11 weeks, so what is the total float? Simple question. आपको ये बहुत बार हमने कराया भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट निकालने का, है ना. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस? टेल मी द आंसर इन लेस देन 10 सेकंड्स. चलिए, ए बी सी और डी. द टोटल फ्लोट वैल्यू, टोटल फ्लोट, it will be equal to 37 minus 8 minus 11. So this will be directly how much? 18 weeks will be the final answer. Option C is the correct answer. How we can calculate, sir? It's very easy. Total float is equal to LJ minus EI minus TIJ. यही होता है क्रॉस वाला, क्रॉस कैलकुलेशन. LJ minus EI, नीचे वाला एक्सट्रीम लेफ्ट और सबसे ऊपर वाला LJ minus EI minus TIJ. फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं? फ्री फ्लोट इज इक्वल टू EJ minus EI माइनस TIJ. इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं? LJ माइनस LI माइनस TIJ. इंटरफेरेंस फ्लोट कैसे निकालते हैं? इंटरफेरेंस फ्लोट, हाउ वी कैन कैलकुलेट? इट इज सिंपली टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, दैट्स इट. सिंपल, ठीक है. और इंटरफेरिंग फ्लोट भी बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. ऐसे पूछ सकते हैं आपसे. You should not be missing out these questions. These are very scoring topics. ठीक है. चलिए next question, question number 67. In any crash program for a project, that means if you are doing crashing, what is happening? Both the direct and indirect cost will increase. Indirect cost increase, direct cost decrease. Direct cost increase, indirect cost decrease. There is no such criteria of cost. What will happen if you are doing crashing? It's very easy. Whenever you are doing crashing, the direct cost will always increase, है ना, and the indirect cost will always decrease. If you have studied the crashing portion, I think this is a piece of cake. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. ठीक है? Clear है? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं. आई डोंट वांट यू गाइस टू स्किप आउट दीस टॉपिक्स. बाय ग्राफ, एग्जैक्टली, परफेक्ट है, याद आना चाहिए बस. दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. 68.
Which of the following distributions provide the information regarding the uncertainty of the duration time estimates in PERT described network? Chaliye. Which of the following distribution provide the information regarding the uncertainty of the duration time estimates in PERT described network? That means in the network diagram, which of the following distribution is being used? Beta distribution, normal distribution, Poisson's or binomial? Network की बात कर रहा है. They are talking about network. Yes, they are talking about network. अच्छा, बीटा किसके लिए होता है? We know that beta is for activity. Beta is for activity. Normal distribution is the complete project. है ना? Normal distribution is for the complete project. Now the question is, they are saying which of the following distribution provide the information regarding the uncertainty of the duration time estimates in the PERT described network. They are not never mentioning anything about the activity. वो बता रहा है what is the uncertainty of the duration time estimates in the PERT analysis. PERT analysis मतलब what they are saying, they are talking about the project. They are not talking about individual activity. They are talking about the entire project they are talking about, right? So definitely, that is, you are having normal distribution as a final correct answer. Okay, देखो C and D तो नहीं हो सकता. Only confusion that you might be having is between A and B. जैसे beta distribution activity, we are having 3 time estimates: your optimistic time, your most likely time, and your pessimistic time. ठीक है, और ये हम लोग यूज करते थे to calculate the expected completion time of every activity. Now they are talking about the complete PERT analysis. PERT analysis मतलब we are talking about the entire project. And entire project we are using the normal distribution where we are calculating the standard normal variate, that is schedule time minus estimated time divided by the standard deviation of the entire project or the critical path. Okay, clear? This might be slightly tricky क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें you know the concept but कभी कभार ऐसे गलती हो जाती है. चलिए next question on your screen. 69th, we are only 6 questions left out. If arrivals at the service facility are distributed as per the Poisson distribution, which are meant of 10 per hour. So arrival is given as 10 per hour, and the services are exponentially distributed with a mean service rate of 4 minutes. So service time is 4 minutes. That means service rate will be 60 divided by 4 per hour. That is simply 15 per hour. So what is the probability that the customer may have to wait to be served? What is the probability that the server is busy? Server is busy वाला probability कैसे निकालें sir? Definitely they are talking about rho. Rho is equal to lambda by mu. Lambda is equal to 10 by 15. That is equal to 2 by 3. That is 0.67%. Option C is the correct answer. है ना? Server is busy. If the server is busy, that means the new customer who will be coming, he has to wait. That is 67% of the time. अगर ये question होता है that the probability the customer does not have to wait, then 1 minus rho will be the answer. That is, it will be simply 23. है ना? Sorry, 33. Right, 33%. चलिए, next question on your screen. A single way car wash with a Poisson arrival rate and expansion rate has a arrival rate of 10 minutes apart and average service time is 4 minutes. So we are having arrival rate. Arrival rate कितना है? हर 10 मिनट के बाद we are having the next car is coming. So arrival rate is equal to 6 cars per hour. And in every 10 minutes, if a new car is coming, that means in every 6 minutes, right? We can say after every 6 in 1 hour, 6 cars will be total which will be entering. And what is the service rate? Service rate is equal to 4 minutes. That means we are having 15 per hour. So what is the system utilization? Rho is equal to lambda by mu. And you won't believe this was back-to-back question. Same question. 6 by 15. है ना? Yes. Okay. चलिए बताइए what is the answer? अच्छा ये पूरा भी व्हाट इज सिस्टम यूटिलाइजेशन? रो पूछा आपसे, रो पूछा ना. 0.4 ठीक है. 0.4 ऑप्शन सी. 0.4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
चलिए, डन. चलिए, now let's try to solve some question from the robotics. Have a quick recap. बहुत easy questions हैं, direct straight forward है. The degree of freedom of Scara robot R. Scara robot का degree of freedom कितना होता है? Yes. IE, I think, no? You're saying IE. Scara robot has how many degree of freedom? If you have studied, will be having. Let me help you in that case. If not studied, एक यहाँ पर joint होता है. Second joint is over here, है ना? Right. Third joint. So we can say it is free to rotate over here. It is free to rotate over here. It is free to rotate over here. It can move up and down. Okay. So in total, always remember that a Scara robot will always have 4 degrees of freedom. It will always have 4 degrees of freedom. It's basically a hand. It can move like this. It can move over here also. It is having a we can say lower portion which can rotate. So we can have 3 rotation part and 1 translatory part of this part. Okay, so the degree of freedom of the Scara robot is exactly 4 units. ठीक है, चलिए next question. Which of the following devices produce the incremental motion through equal pulses? ये बहुत easy question. If you try to just have a basic understanding, you can tell me the answer. Which of the following device produces incremental motion through equal pulses? हमेशा याद रखिएगा, whenever we are dealing with equal pulses, we are basically talking about the stepper motor. ठीक है, स्टेपर मोटर, राइट. और स्टेपर मोटर में सबसे खास बात क्या है? इक्वल पल्सेस में इसमें मोशन होता है, एंड दैट इज द रीजन यू माइट हैव सीन दैट इन मेनी रोबोटिक एप्लीकेशंस यू आर यूजिंग द स्टेपर मोटर. In many robotics application we are using stepper motor, and that is the only reason that we are using this. जैसे आपने colleges में किया होगा, there's a robotics club in many colleges, so there you might be if you have participated in that, you might be using some kit, robotics kit होता है. So in that you are having a stepper motor being already inculcated or already installed in the part. ठीक है, fine. चलिए, बहुत easy questions होते हैं. Question को थोड़ा समझेंगे, you will be able to answer to this. A force of 400 Newton is required to open a process control valve. What is the area of diaphragm needed for a diaphragm actuator to open the valve with a control gauge pressure of 70 kilopascal? Now, if you try to visualize, they're asking you the area, they have given you the value of force, they're giving you the value of pressure, that is 70 into 10 to the power 3 pascal. Can we calculate the value of area? If you don't know anything about robotics, but you only know about some basic concept, they're asking you the value of area, force is given, pressure is given. Sir, it's very easy. Area is equal to force by pressure. So this is 400 divided by 70 into 10 to the power 3. है ना? तो बताइए क्या near about the answer that will be getting 4 divided by 70, है ना? 1 to 700. So approximately 0.0057 meter square, option C. 0.0057 meter square, option C. Perfect. ठीक है, try to have just basic understanding. You might be able to solve some question which the topics you might not have covered. A force of 10 kilonewton is required to move a workpiece. What is needed working pressure if the piston diameter is 100 mm? This is a question from the robotics. But if you know the basic mechanics or basic, if you have solved some thermodynamics question, you might be able to solve these kind of questions. Okay, तो हमारे पास we are having a piston, right? We are having a piston whose working diameter is 100 mm. 100 mm. Okay, a force of 10 kilonewton is being applied. So what is the needed working pressure? चलिए, quickly answer to this problem. Force is given, diameter is given, so we can say pressure is equal to force by area. Force is 10 into 10 power 3, area will be pi by 4 into d square, 0.1 ka whole square. So solve it and tell me in megapascal.
1.27 okay 1.27 ऑप्शन बी आ रहा फिर हाँ करेक्ट है 1.27 something megapascal is the correct answer 1.27 megapascal. Yes, are we getting this value? Question easy yaar. Okay, so last question hai. Then Chandra sir I will be handing over this session to Chandra sir. He will be taking a very important question from your fluid mechanics, heat transfer. बहुत ज़्यादा questions आते भी हैं. ठीक है, so stay connected and we'll be discussing some very very important questions. So last question on your screen from the maintenance. Which of the following are the basic difference between vibration signature and the noise signature? Read the statement. By just reading the statement, we'll be able to eliminate some options. Vibration signature is essentially थक गए सर बस थोड़ा सा और vibration signature essentially in frequency range 0 to 100. CPS means cycles per second. CPS का मतलब cycles per second है ना. That means we are talking about hertz की बात कर रहा हूँ. So vibration is essentially in a frequency range from 0 to 100 hertz, whereas noise signature is ranging from 20 to 3000 hertz. Vibration signal is well defined peak, whereas the noise signals is measured. The intensity of the noise are much less than that of the vibration signature. The detection of the vibration signature देखो बहुत गलत है. Vibration we are using a pickup and for noise we are using microphone. So statement 4 is incorrect. So by using this we can directly eliminate option A and option D है ना. चलिए now talking about statement 1. Normally vibration, if you try to visualize vibration का जो frequency होता है, it is having a range normally it is like till 20,000 तक we are able to measure, right? So definitely आपका statement 1 भी eliminate हो गया. तो statement 1 eliminate हो गया तो C भी eliminate हो गया. So only left out with option B. That's the correct answer. If you are not aware about some topics, by doing some elimination options you will be able to get the answer. और ESE में ऐसा देखा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं. Okay, so this is it from my side, from all the 5 subjects. Okay, tome, industrial, mechanics, robotics, maintenance, कुछ questions थे. I hope so you all enjoyed. I'll be sharing this PDF on this Telegram channel, so please do join and to download this. So thank you guys for joining with me. Over to Chandra sir from here. Chandra sir will be leading and will be discussing some very important questions. Okay, so thank you guys, bye bye. और ऐसी एनर्जी के साथ बने रहिए क्योंकि उसके बाद सोनू सर भी आने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मो के साथ. थैंक यू सोनू सर लेके आएंगे है ना. चलिए थैंक यू गाइस. ओवर टू चंद्रा सर. थैंक यू, बाय बाय. Hello everyone, a very very good evening all of you. I hope you guys are enjoying the session. कैसे हैं सब लोग? What's up? So I am here with some beautiful questions from the fluid mechanics and heat transfer. क्या मेरी आवाज आ रही है? Good evening everyone. Please do join me fast. Those who are not here yet, ask your friends to be part of this session. It is going to be very fun learning the concept and improving your basics, improving your confidence level. चलिए, shall we start? Do not use the calculator. Calculator तो नहीं रखे हुए. As you all know, calculator is not allowed in our ESE prelims examination. So you should have the habit of solving the numericals without the calculator. Don't think the calculation problems will not be asked. In ESE examination, we have seen previously that there are numericals which are having lengthy calculation even. So what you can do is either you skip that question, that is the very easy option, or you can do is check the options. If the options are having big difference, each and every options are having difference, then you can find out the nearest value. You can compute or you can calculate the numerical, making it round off, so that you will get an idea which of the options can be nearest answer. So that is how you can do. All right, खरीदा ही नहीं अभी ने. बहुत बढ़िया. All right, so shall we start?
चलिए प्लीज मेक सम नॉइज गाइस सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. This is my quick introduction for those who are here for the very first time. I hope everybody know me. Everybody of you guys know each and every mechanical engineering faculty who are here with. We were there throughout your journey for GATE examination, and now the GATE is over. We are here for your engineering services preparation also. Uske baad bhi there are many examination which are all there in the pipeline. We will be there to help you out in every possible way. BARC exam और भी ISRO, ये सब के notifications जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे इन पे फोकस बढ़ेगा, we will be there to discuss the questions related to the particular examination. And not only that, उसके अलावा भी हम लोग पोस्ट गेट एनालिसिस सीरीज के साथ आएंगे, what you can get with your rank. So please do subscribe our BYJU'S YouTube channel if you have not done it, because once you become part of our BYJU'S YouTube channel, then you will be getting the notification for all our sessions. All right. So एक important announcement दे देता हूं, then we will start. अरे यार अभी पहली बार देख रहे हो. चलिए, तो मेरे बारे में अभी मैंने बताया नहीं. I am mechanical engineering graduate from IIT Delhi, having more than 10 years of teaching experience. तो जो लोग गेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अभिनव नेगी सर will share his experience through the mega workshop how to clear the gate 2024 examination with the best possible rank. So the workshop is completely free. You just have to register yourself to the workshop. The workshop is on 14th of Feb. अगर आपके कोई और प्लान्स हैं, अगर 14th Feb के कोई और आपके प्लान्स हैं, तो उनको साइड में कर दीजिए, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द mechanical engineering aspirants who are targeting GATE 2024. All right. क्या हुआ aspirant? Do not lose hope. Once your technical is strong, then definitely एक एग्जाम अगर अच्छा नहीं भी गया है, तो you will definitely perform well in the next examination, because the technical syllabus is more or less same for each and every exam. And from 15th of February, rank predictor tool will also be live. You can check your rank, check your score before the final result, so that you can plan ahead of your competitors for your future. So planning is always important. So you can plan your career. You can plan your options, and we will be there to help you out. Again, we will bring some sessions on the YouTube platform. All right. Very nice. Good. All right. अच्छा, अभी फ्री नहीं है क्या? डेट पे जा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. 14th Feb सर ने बहुत अच्छा दिन चुना है. मैकेनिकल इंजीनियर्स मुझे लगता है थोड़े फ्री रहते हैं 14th Feb को. They can attend the workshop. The link for registering the workshop is already there in the description box. बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. I want everyone, this is my humble request to every one of you, please do share your answer, whether your answer is correct or not. It does not matter at all, but your participation highly motivate us to work more harder, to use more energy to bring the concept in more and more simple manner. Simple question hai, very basic question from the theoretical portion. Which one of the following statements is correct? बताइए. Dynamic viscosity is the property of a fluid which is not in motion. Dynamic viscosity क्या होती है? Dynamic viscosity is not related with motion or not in motion, because viscosity is a property which is representing the relative motion between the adjacent fluid particles. So when the fluid is in motion, the concept of viscosity comes into picture. So option A is definitely incorrect. You can rule out the incorrect option and you can keep the correct one. Option C पे आ जाते हैं. Cavitation results from the action of very high pressure. Cavitation occurs when the pressure of the liquid fall below the vapor pressure. So pressure decreases, then only cavitation occurs. It is not occurring at high pressure, it is occurring at low pressure. Option C is also incorrect.
Real fluids have lower viscosity than ideal fluids. Ideal fluids have zero viscosity. Ideal fluids have zero viscosity because there is no relative motion. So option D is also incorrect. The only correct option is B. Surface energy is the fluid property. What is surface energy? It is related with surface tension. Surface tension can also be called as surface energy. Surface tension is the property which give rise to the rise of liquid or fall of liquid in a capillary tube. Option B is the right answer. All right. अभी ने बहुत सही जवाब दिया. I want everyone to keep responding your answers. Let us move to the next question. Question number 2 from the fluid mechanics all the way. बताइए. Read the question carefully and try to find out the answer. If C1 be the velocity of the pressure wave which is traveling along the rigid pipe carrying water, the pipe is carrying water with its bulk modulus is given by this. Do you know bulk modulus is not a dimensionless parameter? Its unit is same as the unit of pressure. And C2 is the velocity of the pressure wave traveling along the rigid pipe carrying oil of relative density 0.6 and the bulk modulus of oil is given by this through a similar pipe. What is the ratio of C1 by C2? Very, very simple question. Do you know the formula of C, the velocity of pressure wave in the fluid? How many of under root of K by rho? Very, very nice. Under root of K by rho. अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो C1 by C2 को इजीली लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ K1 by K2 इंटू ρ2 by ρ1. व्हाट इज द आंसर? बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ अभी के ही ऑप्शंस आंसर्स और कमेंट्स में देख पा रहा हूं. एवरीबडी प्लीज कीप ऑन रेस्पॉन्डिंग. K1 is 2.16 into 10 to the power 9 and K2 is 1.296 into 10 to the power 9 into ρ2 which is 600 divided by 1000 ρ1. Isn't it? Density of water is 1000. It is not mentioned but you should know. अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.6 को 2.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.296 ही मिलेगा. 2.16 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.296 ही मिलेगा. So yes, definitely the right answer will be 1. C is the correct answer. Without the calculator you can solve it. It is not a big deal, right? हाँ, correct अभी. Well done, well done. बाकी लोग, I want everyone keep responding. Maniket, where are you? बाकी लोग कहाँ हैं? अगला क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए. TPM. Everybody, read the next question, theoretical question. In ESE examination, you will find theoretical as well as numerical questions. So I am having total 35 questions, 25 questions from the fluid mechanics and 10 questions from the heat transfer. So ये जो चल रहा है हमारा question number 3 है. This is question number 3. Statement 1. These type of questions are kind of favorite of ESE examination. As the temperature increases, और ऐसा question आपको हर every next year you can find this type of question. As temperature increases, the viscosity of air decreases. Is the statement 1 correct? कहानी यहीं पे खत्म. When the temperature rises, the viscosity of a gas also increases. Statement 1 is false. बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. You can directly select option D. Statement 1 is false. If we talk about statement number 2, when the temperature increases, activity of the air molecules increases. Yes, the molecular collision increases. The molecular momentum transfer increases and that will increase the viscosity of the gas. In case of a liquid, cohesive force dominates, is the governing parameter for viscosity, and in case of a gas, molecular collision or molecular agitation or molecular momentum transfer. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. You will find every now and then this type of question. Option D is the right answer. Let us move to the next question. Again from the viscosity. The question is numerical now.
Read it and get me the answer. The velocity distribution in a laminar flow adjacent to a solid wall is given by this. This is the velocity profile. It is trigonometric function. The viscosity of the fluid is 5 poise. It is the dynamic viscosity, or we can call it as 0.5 Pascal second, or we can call it as Newton second per meter square, or we can call it as kg per meter second. This is SI unit, 0.5. What is the shear stress at a location? Y is equal to 0.05. So tau is equal to mu into du by dy. So mu into what is du by dy? Calculate du by dy. 3 into 5 pi. 3 into 5 pi. It will be cos of 5 pi by. Put the value. थोड़े न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो आप लोगों को, हाँ स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, पर फिर भी ट्राई करते हैं. म्यू इज 0.5 इंटू 15 पाई. इट शुड बी पाई ना, पाई 15 pi into cos of 5 into 180 degree into y 0.05. So 5 into 180 into 0.05 ये होगा 45 डिग्री. सो tau will be equal to, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारा फर्ज बनता है सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना कि विदाउट कैलकुलेटर भी आप कैसे कर सकते हैं. तो ये होगा 0.5 into 15 into 3.14 cos of 45. What is the value of cos of 45? 1 by root 2. So it will be 0.5 into 15 into 3.14 into 1 by root 2, 1.414. And what is the value of 1 by root 2? 0.737. Sorry, क्या होता है 1 by root 2 कितना होता है? 0.707. ये वैल्यू कुछ याद रहनी चाहिए आपको. रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और 1 upon root 2 is this. So if you do the calculation, 0.5 into 15 into 3.14 into 0.707, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको करीब करीब आंसर मिलेगा 16.7. B cannot be correct. It will be around 16.7. 16.7. But if you see the second part, y is equal to 0.12. Y is equal to 0.12. At y is equal to 0.12 meter, tau will be equal to क्या होगा 0.5 into 15 into 3.14 into cos of 5 into 180 into 0.12. It is greater than, this value is greater than 90 degree. Isn't it greater than 90 degree? So this value will be negative. और क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो tau can be taken as 0 because the shear stress cannot be negative because it will give you the negative value, and because it will give you the negative value, that is why the second value will be 0. So D is the right answer for this. क्या अभी क्या पूछ रहे हैं? Just a second. हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी. अच्छा, तो सेकंड पार्ट अगर आप पिक करेंगे, तो इजीली आप 0 बोल पाएंगे एंड देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन. The next question on the screen, question number 5th question on the screen. Please guys do join the session. If you
have not joined it, ask your friends to be part of this session. Share this session to all your friends so that more and more people can join and get benefited. The surface tension in a soap bubble. For a soap bubble, delta P is equal to 8 sigma by diameter. For a bubble, because there are two interfaces of 50 mm diameter, 4 sigma by R, 8 sigma by D bolo या 4 sigma by R. The pressure inside being 2.5 Newton per meter square above the atmospheric pressure, what will be the surface tension? So sigma is equal to delta P into D upon 8. Do the calculation. Delta P is 2.5. Diameter is 50 mm. So 50 into 10 to the power minus 3 upon 8. What is the answer? Can you solve it? सिंपल कैलकुलेशन है. अच्छा, हाँ वो भी ठीक है. या तो सारे के सारे आर की टर्म में याद रखो या फिर सारे के सारे डी की टर्म में याद रखो. अगर आप ऐसा करेंगे कि कुछ आर की टर्म में कुछ डी की टर्म में तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर आर की टर्म में याद कर रहे हैं फॉर ए बबल, और अगर ये लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल होता, लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल होता, तो डेल्टा पी की वैल्यू होती है 4 सिग्मा बाई डी या 2 सिग्मा बाई आर. और लिक्विड जेट के केस में फॉर ए लिक्विड जेट डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी या फिर सिग्मा बाई आर. ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए. इफ यू विल डू द करेक्ट कैलकुलेशन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर, राइट? Let us move to the next one. Question number 6. From the hydrostatic force or from the pressure measurement, manometry, a pressure gauge reads 57.4 kilopascal and 80 kilopascal respectively at heights of 8 meter and 5 meter. At 5 meter height from the bottom, 80 kilopascal is the pressure. This is a 5 meter from the bottom. 80 kilopascal, it is more. This is 8 meter, it is 57.4. On the side of the tank filled with liquid in kilogram per meter cube. What we need to find out is the density of the liquid. What we need to find out is the density of the liquid. So if we write the pressure equation, हाँ, अगर आपसे गलती हो, डेरिवेशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर फंडामेंटल्स. कई लोग ये सोचते हैं कि व्हाई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन इफ द क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज. बट यस, ऑलवेज व्हेन यू आर हैविंग द डेरिवेशन, so if you even forget the formula, you can quickly derive it. So that gives a confidence at the back of the mind. You are always confident that even if I forget the formula, I can derive it. So you will never forget the formula. Pressure equation, if we write, we can say 80 kilopascal minus 57.4 is equal to rho of liquid into G into 8 minus 5. So we need to find out the density. So 80 minus 57.4 kilopascal is how much? इसकी वैल्यू करीब करीब आएगी 22.6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई जी को ले लीजिए 10 इंटू 3 ऑलमोस्ट. सो 22.6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 30. तो ये करीब करीब आएगा 753. तो द नियरेस्ट ऑप्शन, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, जी को मैंने 10 ले लिया. इफ आई टेक जी एस 10, हाँ राइट, अभी इफ यू टेक जी एस 10, then your answer will be around 753, which is very close to 768. That is how you can make your calculation simple. Let us move to the next one. Beautiful question. Question number 7. Question number 7 on your screen. A centrifugal pump delivers a manometric head of 12 meter when pumping a liquid of relative density 0.8. Manometric head is 12 meter when it is pumping the liquid of relative density 0.8. If all the other factor remains the same,
but the liquid has a relative density of 1.2, the new manometric head would be. So what we can say, power and discharge are same. Power and discharge will be same or remain constant. We need to develop a relation between manometric head and density. The question is to develop a relation between manometric head and density where all the other factors remains constant, all the other parameters remain constant. So the power supplied and the discharge delivered will be same. So the power will be equal to rho into Q into G into HM. That is the power. M dot into G into HM. So G is constant, power is constant, Q is constant. So rho into HM is equal to constant will be the relation. And once we use the relation here, so HM is inversely proportional to density. So HM2 is equal to HM1 into rho 1 by rho 2. Put the values and do the calculation. So 12 into rho 1 is 0.8 upon 1.2. स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में लिख देंगे तो कितना आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 8 मीटर आ रहा है क्या? डेफिनेटली 8 मीटर. 8 इज द. अभी मशीनरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज. रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. दो चीजें अभी इंपॉर्टेंट है. Whatever you have studied, please do revise before your final exam and always see the previous year question because in ESE there are questions which are getting repeated from the previous years. पढ़ा ही नहीं है. All right. So not only the technical portion, we are focusing on the non-technical part also. We are conducting the YouTube sessions for non-technical. If you are not part of that, if you are not aware about that, please do join for non-tech marathon. Subscribe our BYJU'S YouTube channel for civil and mechanical engineers. You will get the update or the notification for all the non-tech sessions. All right. चलिए आगे. And after the examination, we will be here to have the paper analysis. So please do join on 19th of February for paper 1 at 5 p.m. on the BYJU'S YouTube channel and for paper 2 at 6 p.m. उससे भी पहले ही आ जाएंगे. नहीं ओवर नहीं. अभी बीच बीच में मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन डाल रखी है. अगला क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. Fluid pressure is a scalar quantity. Statement 1 correct है या false है? Pressure is always a scalar quantity. Fluid thrust always acts downward. Thrust always acts normal to the surface. Normal to surface. It does not act in downward direction. So statement 1 is correct. Statement 2 is false. Option C. 1 is correct, 2 is false. Isn't it? 1 is correct, 2 is false. Very nice. What about others? किसी को कोई ऑब्जेक्शन डाउट है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. बहुत लोगों को पता नहीं है कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मैनोमेट्री. द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.32 किलोपास्कल. द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टैंडर्ड भी दिया है, लोकल भी दिया है. If a pressure at a flow path is recorded as this gauge, what is the absolute pressure? तो हमें ये ध्यान होना चाहिए absolute pressure at any point is equal to gauge pressure at that point plus the atmospheric pressure which is always local. 22.48 plus 91.52. This will give you the answer. Option C. C is the right answer. Option C will be the correct answer. Standard atmospheric pressure का कोई रोल नहीं है. गेज प्रेशर साइन के साथ होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लोकल, विच इज ऑल्सो नोन एज लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर. इसको क्या बोलते हैं? We also call it as barometric pressure. All right.
नाइस, गुड वन, गुड 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 गुड. चलिए, let us proceed further. A mercury water manometer has a gauge difference of 0.8 meter. Flowing fluid is water, that is the flowing fluid, and mercury is the manometric fluid. Mercury will be the manometric fluid and water is the flowing fluid. The difference in pressure measured in meter is, so if we talk about 0.1 and 0.2, this is 0.1 and 0.2, meter of water, it should have been meter of water. So this is given as 0.8. So what we can say, P1 minus P2 by rho g, that will give you the meter of water is equal to X, that is the manometric fluid deflection, into SM by SF minus 1. If you will put the value, then X is 0.8 into 13.6 upon 1 minus 1. So 0.8 into 12.6 meter of water will be the answer. हाँ, ये याद होना चाहिए. Difference in pressure measured in meter of water. X into SM by SF minus 1. That is P1 minus P2 by rho G. ये होगा pressure difference in meter of water. What is the answer? 0.8 into 12.6. एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है. 10.05 होगा क्या? Is it 10.05? C is the right answer. Yes. अगला क्वेश्चन पढ़िए, समझिए. Next one. Consider the figure below relating to the buoyancy in water. What will be the downward force upon the top of the body A, B, C, D, E, F? Top of the body, ऊपर downward force कितना लगेगा? Downward force will act on the surface ABC and upward force will act on the surface DEF. So this is FV1 and this is FV2, and the net upward force is the buoyant force. That is how we can find out the buoyant force. So the downward force is equal to the weight of the fluid which can be contained by the curve up to free surface. The weight of the fluid which can be contained by the curve up to free surface. This will be the downward force. The weight of the liquid column ABCHG. ABCHG. What is the correct answer? Option A. And what will be the upward force? Upward force will be equal to AFEDCHG. That is the upward force. And the difference of these two, buoyant force will be corresponding to the weight of the liquid corresponding to this surface A, B, C, D, E, F. Right? So अगर क्वेश्चन बाइंड फोर्स पे आता तो आंसर अलग होता, अपवर्ड फोर्स पे क्वेश्चन होता तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट, एंड डाउनवर्ड फोर्स द आंसर विल बी डिफरेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वॉर्टेक्स, फोर्स वॉर्टेक्स. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिर भी क्विकली मैं आपको बता देता हूं. That is from the force vortex. The question is from the force vortex. An open cylindrical tank 75 centimeter diameter and 1.5 meter high contains water up to 1.2 meter depth. वाटर है 1.2 तक और टोटल हाइट है 1.5 मीटर. जैसे ही इसको रोटेट करेंगे, द फ्री सरफेस विल मेक ए पैराबोलॉइड लाइक दिस. दिस इज 0.3 ऊपर जाएगा, 0.3 सेंटर पे नीचे जाएगा. If the cylinder is rotated about its vertical axis, what is the maximum angular velocity per second, radian per second, that can be attained without spilling of water? So twice of h minus small h is equal to omega maximum square into r square by 2g. Value put करिए. So omega maximum will be around twice of h minus h. Capital H ये है, small h ये है, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 इंटू जी को मैं 10 ले लेता हूं, इसको अंडर रूट करेंगे, राइट? और
डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू हो जाएगी 75 सेंटीमीटर है तो 37.5, 0.375 ये। यही होगा, बता सकते हैं? So it is around 2√3 upon 0.375. What is the value of √3? 1.732. कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. So 2 into 1.732 upon 0.375. इसको सॉल्व करिए. It will be approximately C 9.15. Right? So it is approximately option C. C is the answer. The next one, question number 13. Question number 13. थक गए? आप थक गए या मैं थक गया? A ship has a metacentric height of 0.9 meter and its period of rolling is 20 seconds. Time period of oscillation is 20 seconds. The relevant radius of gyration nearly is 2 pi under root of rg square upon g into gm. अच्छा नहीं थकना नहीं है, अभी तो सोनू सर भी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं खत्म. सोनू सर भी आएंगे. वैल्यूज पुट करिए. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 20, 2 into 3.14, आरजी का स्क्वायर का अंडर रूट है तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन ले लीजिए एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10 into मेटासेंट्रिक हाइट दैट इज 0.9. सो ये √9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो आरजी विल बी अराउंड 20 into 3 upon 2 into 3.14 second meter. 60 upon 6.128. 60 upon 6.28. So it is less than 10. It is almost 10, little less than 10, isn't it? So C will be the answer, 9.5 meter. Question number 14. Question number 14. 25 क्वेश्चन है. एफएम के 25 क्वेश्चंस हैं. यही तो चैलेंज है एक्चुअली. क्लियरिंग ए कॉम्पिटिशन इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट और ए यूनिक थिंग और ए डिफरेंट थिंग. आप एग्जामिनेशन, आपके रूटीन एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर लाते हैं, that is different compared to the competition. In competition it is the relative performance which matters. तो अगर आप थक रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी थक ही रहे हैं, बट उस थकान को ओवरकम करके अगर आप फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन यू विल बी डेफिनेटली अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थियोरेटिकल, कोई कैलकुलेशन नहीं है. ऑप्शंस को हाँ इलिमिनेशन टेक्निक यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को, ये एक्चुअली एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस है जो गेट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, एमएसक्यूज. सो इन ईएसई देयर यूज्ड टू बी काइंड ऑफ एमएसक्यूज लॉन्ग बैक, बट ये एमसीक्यू की फॉर्म में डेवलप किया हुआ है. देयर इज नो फ्लो अक्रॉस ए स्ट्रीमलाइन, दैट इज ट्रू बिकॉज इन द नॉर्मल डायरेक्शन इट विल बी v cos 90. The velocity is always tangent to the streamline. So there is no flow across a streamline. Vn is always equal to 0. First is true. Streamline spacing varies directly with the velocity at the section. No. Q is equal to area into velocity is constant. So we can say A is inversely proportional to V. So the streamline spacing, the streamline spacing varies inversely with the velocity. 2 is incorrect. Streamline do not cross. That is true because at the intersection point there are two tangents
So they will represent two velocity, which cannot be possible. So streamline do not intersect. Option number 4, in a steady flow, when the fluid behavior does not change with time, streamline pattern do not change with time. Option 4 is also true. 1, 3, 4 are correct. Yes, Q is equal to discharge per unit width is the difference between the stream function values. So 134, 134, 134 कहीं है? Option C. C is the correct answer. Option C is the right answer. Question number 15. Again theoretical question. Flow measurement with a Prandtl pitot tube. जानते हैं Prandtl pitot tube क्या होती है? There are concentric tubes. This is, and the another tube is having the opening parallel to the flow, like this. This is called as Prandtl pitot tube. So inner tube will measure the velocity, outer tube will measure the static pressure because the opening is normal to the flow. So the flow measurement with the Prandtl pitot tube showed that the side opening reading, which represents the static pressure, varied only across the flow. It varies across the flow. It means static pressure varies. It means there is the relative motion. It means there is the relative motion, or we can say there is a friction, there is energy loss. So the static pressure varies in this direction. It means the flow is rotational. Rotational means frictional. Or there is energy loss, or there is the relative motion. Rotational means relative motion or real fluid. And the tip reading represents what? The tip reading represents the velocity. The velocity of the flow is varying in the direction of the flow. So in the direction of the flow, velocity varies. So it is non-uniform. So it is non-uniform and rotational. What is the correct answer? Option D. D for Delhi. D will be the correct answer. The side opening represents the static pressure and the tip opening represents the velocity or the dynamic pressure. Static pressure and dynamic pressure. That is how we can measure the velocity of flow using the pitot tube. Pitot static tube. It is also known as pitot static tube. Let us move to question number 16. So for the free workshop, you can register yourself and the link is already there in the description box. All right. Question number 16. Simple yet important from the kinematics. These type of question always you can expect because it is involving the partial derivative. It is involving the partial derivative. अभी मैंने बताया ना 35 क्वेश्चन है मेरे पास. We are half way now. We are just half way. इतना टाइम और जल्दी करते हैं quickly. X component of velocity in two-dimensional incompressible flow is given by this. If the y component of velocity v is 0 at y is equal to 0, the expression for y component. Because it is two-dimensional incompressible flow, the question is from the continuity equation. For two-dimensional incompressible flow, del u by del x plus del v by del y is equal to 0. We need to find out the y component. So del v by del y is equal to minus del u by del x. What is minus del u by del x? It is minus 6y. So if we integrate this, integrate with respect to y, then we will say v is equal to minus 6 y square by 2 plus the constant of integration, which can be a function of x. Which can be a function of x. Right? Do we really require this? So v is equal to minus 3y plus fx. Isn't it? 3y square plus fx. Minus 3y square plus fx. D is the answer. It will be D. Do we really require this statement? The y component of velocity is 0 at y is equal to 0. fx की वैल्यू 0 हो जाएगी. उस केस में तो fx की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. राइट?
The next one, question number, what is the question number? Question number 17 on your screen. Bernoulli equation is again very important topic from where you can find out the theoretical as well as numerical questions. Bernoulli equation is applicable. The assumption for applying the Bernoulli equation, both steady and unsteady. Option A, no. Real fluids, no. Bernoulli equation is only applicable to the ideal fluids when there is no energy loss. All the fluids, no. Only steady flow of ideal fluid along a stream tube or along the streamline. D is the right answer. D is the right answer. Question number 18. Question number 18. Yes, everyone. I want people other than Abhi to share your answer. Abhi से कुछ सीखिए. He is participating with his full dedication, full energy, full power. That gives us energy too. So energy is like give and take. Next question. Read the question number 18. The integration of differential form of Euler equation of motion yields to Bernoulli equation. Yes. If you go with the derivation, if you know the derivation of Bernoulli equation, we start the derivation from the Euler equation by applying the Newton's second law on the fluid element, and then we integrate that using couple of assumptions, then we get the Bernoulli equation. Statement 1 is true. Statement 2 says Euler equation is based on the assumption of conservation of mass. No, it is based on conservation of momentum or Newton's second law. Newton's second law. So statement 2 is incorrect. So option C. Yes, हिमांशु, well done. अरे बी किसका जवाब दिया आपने? बहुत अच्छा लगा हिमांशु. Option C is the right answer. Statement 2 is not correct. It is not about conservation of mass. It is from the conservation of momentum. Abhi, let me tell you, these type of questions are actually making the whole difference among competitors. अगर आपने इसमें confidence develop कर लिया, इसमें अगर it is all about having the deep understanding of the concept, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन theoretical ही बन सकते हैं, and when the theoretical questions are asked, then it is very very important for you to have the deep knowledge of concept. So revise more and more, again and again, use the Indian authors to revise your fundamentals, use your notes, so you become confident. Rule out करिए options को. अगर C और D है तो आप easily solve कर पाएंगे, but sometimes the confusion is getting created between A and B. Sometimes both the statements are correct, then students are unable to judge whether assertion is the or statement 2 is the correct explanation of assertion or not, or statement 1 or not. There is only the problem. हाँ हिमांशु, वही बता रहा हूं, अगर ऑप्शन सी या डी है, एक अगर स्टेटमेंट गलत है तो यू आर वेरी लकी कि वो आप गलती नहीं करेंगे, बट अगर ए और बी ऑप्शन है तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि वेदर स्टेटमेंट बी इज एक्चुअली डिराइविंग द स्टेटमेंट ए और प्रूविंग द स्टेटमेंट ए और नॉट. तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट इफ यू आर हैविंग द फंडामेंटल्स क्लियर then you will be able to get your answer. ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है. ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप होता है. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू विदाउट द कैलकुलेटर. दैट इज द चैलेंजिंग टास्क. लुक, ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विद इनलेट डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड थ्रो डायमीटर 15 सेंटीमीटर. अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, so हम बोल सकते हैं v2 is equal to 4v1 by applying the continuity equation. The reading on the differential manometer connected to the inlet and throat is 20 centimeter mercury, that is x. The manometric fluid is mercury. So if we apply the Bernoulli equation, this is the continuity equation. The question is to find out the discharge. If we apply Bernoulli equation, so we can say P1 minus P2 by rho g, that is equal to V2 square माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g, और इस p1 माइनस p2 बाई रो जी को लिख सकते हैं s इंटू sm बाई sf माइनस 1. तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से v2 इज 4v1, so 15v1 स्क्वायर बाई 2g
is equal to x is 20 सेंटीमीटर 0.2 इंटू 12.6। यहां से पहले आप v1 को कैलकुलेट करिए और उसके बाद आप अगर हम v1 की कैलकुलेशन की बात करते हैं, अंडर रूट 0.2 इंटू 12.6 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 15। थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है, बट अगर फिर भी ये 10 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 12.6 बाई 15, सो v1 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 12.6 बाई 15, ऐसा कुछ है, isn't it? सो ऑलमोस्ट 1 है, ये 1 से कम ही होगा ये वन। सो इट इज less than 2, v1 is less than 2, so q is equal to pi by 4 d1 square into v1। so pi by 4 diameter is how much? Diameter is 30 centimeter, 0.3 square into v1। v1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 रख दीजिए, अगर v1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 रखते हैं तो 3.14 by 4 into 0.09 into 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आना चाहिए आपको अराउंड 0.141 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो 141 लीटर पर सेकेंड। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 3 लीटर। दिस कन्वर्जन तो करीब करीब 125, अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो 125, इट इज मोर देन 100, इट इज अराउंड 100 लेंथी है, ठीक है। हाँ, आई डू एग्री कि क्वेश्चन कई बार लेंथी आ सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व करिए, और कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट, क्वेश्चन नंबर 20। टोटल मेरे पास 35 क्वेश्चन है, इसके बाद 15 मोर क्वेश्चंस टू गो, देन सोनू सर विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट। टोटल 150 क्वेश्चंस है हमारे पास। A fire hose has a nozzle attached to it. There is a nozzle and the nozzle discharges a jet of water into the atmosphere at a velocity of 20 meters per second. This causes the joint. Here there will be the joint. There will be the joint. So what is the direction of force exerted by the fluid on the nozzle? It will be normal and compressive. So the force on the nozzle will be acting like this, so the joint will be in tension or compression, बताइए, will be in tension or compression? The nozzle will experience a force, the nozzle walls will experience a force in positive x direction in the flow direction, so there will be a tension in the joints, there will be a tension in the joints, there will be tension in the joints, isn't it? Tension in the joints, it will not be compression, it will be tension, tension ही होगा ना। ऑलराइट, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो, यू कैन ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट द लिंक्स टू ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 4 more questions from the fluid mechanics। क्वेश्चन नंबर 21, a 2-dimensional water jet strikes a fixed 2-dimensional plate। ये आप बताइए मुझे सॉल्व करके। a 2D water jet strikes a fixed 2D plate at 30 degree to the normal, the plate is kept 30 degree to the normal, the flow is 30 degree normal to the plate। मान लीजिए प्लेट ऐसे रखी हुई है, this is the normal to the plate and the fluid is moving like this, this is the direction of the flow, this angle is 30 degree like this। so some part of the jet will go like this, this is let us say Q1, and some part will go like this Q2।
So what is the ratio of larger discharge to the smaller discharge? Q1 by Q2. It is 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta. Formula याद होना चाहिए आपको. But theta क्या होगा? Theta is always measured with respect to the direction of the flow. This is angle theta. What is angle theta? It will not be 30 degree. It will be 60 degree. Theta will be 60 degree. So 1 plus cos 60 upon 1 minus cos 60 will be the ratio of Q1 by Q2. Theta will be 60 degree. यहीं पे आपको समझना है. 30 degree is the angle with the normal, not the plate. The angle of the jet with the normal is 30 degrees. So the angle of the jet with the plate will be 60 degree. So 1 plus cos 60 upon 1 minus cos 60, the answer will be 3. B is the right answer. Very good. Good, Abhi. 4 क्वेश्चन FM के 22 और फिर 10 क्वेश्चन हीट ट्रांसफर के. Then my portion will be over. Next question. It is proposed to increase the discharge. Beautiful question. It is proposed to increase the discharge by 20% in circular pipe carrying oil in laminar region. If all the other factors remains unchanged, the power consumption to maintain the modified flow relative to the original flow would be. So what we need to find out, P2 minus P1 upon P1 into 100. We need to develop a relation between power and discharge. If you are able to develop a correct relationship, so P2 by P1 minus 1 into 100 will be how much? So power consumption, or we can call it as power loss, is given by rho QG HL, isn't it? Or we can write it as rho QG into delta PL by rho G. Rho G getting cancelled out. So Q into delta PL, Q into delta PL. And what is delta PL for laminar region? It is 32 mu V average L by D square. Q into 32 mu V L by D square. So velocity is, or everything else is constant, velocity is variable. So it is power is proportional to Q into velocity. And because discharge is given by pi by 4 D square into velocity, so V is directly proportional to Q. V will be directly proportional to Q. So the power will be proportional to Q square, isn't it? So P2 by P1 minus 1 is equal to Q2 by Q1 square minus 1. What is Q2 by Q1? It is 1.2 square minus 1 into 100. That will give you the answer. It is 1.44 minus 1. That is 44%. 44%, yes. 44% is the answer. आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे. ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ये यूज करते, पावर इज गिवन बाय रो क्यू जी एच एल, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एफ एल वी स्क्वायर और एफ एल क्यू स्क्वायर, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी टू द पावर 5. यहां से भी हो सकता था. रो एंड जी गेटिंग कैंसल आउट, लेंथ getting cancelled out, diameter getting cancelled out. So power is proportional to Q into F into Q cube or Q cube into F. यहां से फिर F is equal to 64 by Reynolds number, or we can say F is, for a laminar flow, F is equal to 64 by Reynolds number, and Reynolds number is equal to rho V D by mu. So F is inversely proportional to velocity, or we can say F is inversely proportional to discharge. If we put the value of F here, so the power will come out to be proportional to Q square. Power will be proportional to Q square. हाँ, तो अगर आपने ये रिलेशनशिप सही निकाला तो you will be able to get the right answer. Let us move to the next one. Next question, question number 23. Question number 23. The thickness of laminar boundary layer over a flat plate at two different sections P and Q are 0.8 and 2.4. Here 0.8, here 2.4. And if the section Q is 3.6 meter downstream of P,
The distance between P and Q is 3.6 meter. What is the distance of section P? Let me call it as X. What is the distance of section P from the leading edge of the plate? So delta is directly proportional to root X for a laminar flow, laminar boundary layer. So delta 2 by delta 1 is equal to under root of X plus 3.6 upon X. So it will be 2.4 divided by 0.8. What is that? That is 3 is equal to under root of X plus 3.6 upon X. So it will give rise to, solve कर सकते हैं हम, square कर लीजिए on both sides. So it will be 9x is equal to x plus 3.6, or we can say 8x, x is equal to 3.6 by 8 meter. That will be the answer, 3.6 by 8, 0.45, 0.45. Question number 24. Question number 24. A hydraulic turbine has an output of 6,000 kilowatt. That is the power developed by the turbine when it works under a head of 25 meter and runs at 100 RPM. Then the type of the turbine used is. Then the type of the turbine. We need to find out the specific speed. For Pelton wheel, it is less than 60 ns. For Francis, 60 to 300. For Kaplan and propeller, greater than 300. So what is ns for is n root p upon h to the power 5 by 4. कैलकुलेशन है, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है. 100 rpm into under root of 6000 upon h 25 to the power 5 by 4. अगर इसको सिंप्लीफाई करें 138 के अप्रोक्सीमेटली, राइट, ये 138 के अप्रोक्सीमेटली आएगी. अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 138 के आसपास आएगी एसआई यूनिट में. सो इट is not other than Francis turbine. Yes, it will be Francis turbine. And the last question from the fluid mechanics. By providing the air vessels on the suction and delivery side of a reciprocating pump, we provide the air vessels to have the uniform discharge for uniform flow. It is possible to increase the delivery head of the pump. Statement 1 is incorrect. It does not increase the delivery head. It does not increase the delivery head. The air vessel terminates the acceleration head. Yes, it reduces the acceleration to have the uniform flow and contribute to the outgoing discharge becoming reasonably steady and uniform. Yes, that is the main objective of the air vessel. So statement 1 is false and 2 is correct. अभी ने पहले ही रेसिप्रोकेटिंग पंप देखते ही बोल दिया. हाँ, चलिए हीट ट्रांसफर के 10 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कई बार ये भी क्वेश्चंस डेंजरस हो जाते हैं. हीट फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हीट फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? Yes, this is correct. Heat flux will always be normal to the isothermal surface. Yes, when the temperature is constant in this direction, heat will not flow. Heat will flow only when the temperature difference is there. So for the along the isothermal surface, there is no heat flow. So it is always normal to the isothermal surface. His flux is directly proportional to the temperature difference Q dash. Is directly proportional to delta T. Yes, that is also true. All of them. D is the right answer. D is the correct answer. तो ये मत देखना, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को पढ़ के ही जज करते हैं. भैया 6 रोटी बना दे रही है मैं तो. 6 रोटी बना दूं, कड़ी बन रही है. पापा पापा मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये नोट. जस्ट होल्ड ऑन. हेलो हेलो हेलो. Yes.
डी इज द करेक्ट आंसर। कई बार मैं बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर सो एक्साइटेड टू सी द ऑप्शन ए विच इज करेक्ट, सो दे डू नॉट, they sometimes they skip the other options. So option D might be all of the above statements are correct. So always take care before selecting your final answer. The next question, question number 27. At a given instant of time, the temperature distribution within an infinite homogeneous body is given by this. This is the temperature expression. ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, ये कौन सॉल्व करके बताएगा? Who will solve this one? Determine the rate of change of temperature with respect to time at a point 2, 2, 2. Del T by del tau की वैल्यू चाहिए. Assume the constant properties and no internal heat generation. Who will find it out? So we can write the governing differential equation. I hope you guys are able to hear me and see me. Del square T by del x square, it is three-dimensional conduction. Del square T by del y square plus del square T by del z square is equal to 1 upon alpha del T by del tau, because Q dot, Q generation is equal to 0. There is no heat generation. So we can say del by del x into del T by del x. इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू डेल टी बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल टी बाई डेल जेड. सॉल्व कर लीजिए. व्हाट इज डेल टी बाई डेल एक्स? सो डेल बाई डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं. व्हाट इज डेल टी बाई डेल एक्स? दिस इज 2x माइनस वाई प्लस डेल बाई डेल वाई. व्हाट इज डेल टी बाई डेल वाई? माइनस 4y माइनस x प्लस 2z प्लस डेल बाई डेल जेड. व्हाट इज डेल टी बाई डेल जेड? जेड वाली टर्म 2z प्लस 2y. ये अब फिर से डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, इट विल बी 2, देन y के रेस्पेक्ट में सेकंड टर्म माइनस 4, देन z के रेस्पेक्ट में थर्ड टर्म प्लस 2, so it will be 0, so that is del t by del tau. The answer is option B. B is the right answer, isn't it? Yes, B will be the correct answer. 0, complete 0, शून्य. राइट, अगले क्वेश्चन पे चलें. ओ माय गॉड, 3.5 घंटे हो गए. 3 घंटे ही मिलने थे आपको. समझाने में टाइम लगता है, बट यू शुड कीप द स्पीड इन योर माइंड. पूरा का पूरा खेल एक्यूरेसी एंड स्पीड का है. ESE is all about accuracy and speed. Next question, question number 28. Question number 28. Which of the following statements is correct? अगले 10 मिनट और लूंगा. I will take next 8 to 10 minutes and then I will invite Sonu Sir, and you should also invite Sonu Sir after me to continue this session till the end. And I want everyone to stay there till the end of the session. अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है. अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है. अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है. So guys, stay tuned, stay motivated, stay energetic. The next question is theoretical. In a plane wall, the total resistance always increases with the increasing insulation thickness. In the plane wall, by increasing the insulation, the resistance increases and the heat transfer decreases. Option A is true. In the cylindrical wall, in the radial system, the total resistance first decreases, thermal resistance, and then increases with the increasing insulation thickness. B is also true. The existence of critical radius requires that the heat transfer area changes in the direction of heat flow. कई बार क्या होता है कि direction of heat flow is this, radial outward, and if the insulation is done from inside, then that will reduce the rate of that will reduce the rate of heat transfer. So insulation should always be done in the direction of the heat transfer. Statement C is also correct. So D is the right answer. Do not make a judgment by reading
only A option. Option D is the correct answer. ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल. Question number 29. 35 questions are there with me. We are at 29. 5 more questions, 6 more questions to go. Everybody, get yourself charged up for thermodynamics application. Very, very important subject for prelims as well as mains, ESE. The temperature variation in plane wall with uniform energy generation is represented by, whenever there is a heat generation, it is about the temperature variation. So the temperature is a function of x square. It is parabola. अगर ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का कर्व होता तो Q इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x होता. Rate of heat transfer भी variable होता है, linear function of x. But because it is about the temperature profile, option B is the right answer, isn't it? Please give me thumbs up. Option B. ये भी simple question है. Again, one of the simple question number 30 on your screen. 743 और है ना, 750 तक wrap up कर देंगे. 750. Let us ask Sonu Sir if he is there or not, ready with his questions or not. सोनू सर, आप हैं यहां पे? Students are eagerly waiting. What is the ratio of critical radius of insulation for cylinder to sphere? RCR for cylinder divided by RCR for sphere. It will be 2 or 1/2. A or C? Cylinder का होता है K by H. Sonu sir is all ready with his questions. Wonderful questions he will be having from the thermal part. So guys, if you know people who are going to appear for ESE, ask them to join. For sphere, it will be 2K by H. 1/2 will be the answer. Option A. A will be the answer. कई बार students को confusion होता है, will it be 1/2 or 2/1? For a cylinder, it is K by H. For a sphere, it will be 2K by H. Sphere twice of cylinder. Let us move to the next one. सोनू सर वेट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. Fin effectiveness, it is not about efficiency, it is about the effectiveness of the fin which is enhanced by, what is fin effectiveness? It is Km by H. And what is M? Fin constant, K by H under root of H perimeter upon K cross sectional area. So if we want to increase the effectiveness of the fin, choice of the material of high thermal conductivity, K must be high, that is true. Increasing the ratio of perimeter to the cross sectional area. Increasing the ratio of perimeter to the cross sectional area, that is also correct. Both A and B. Yes, option C is the right answer. D is not true. Option C is the right answer. All right. Question number 32. 32. From the radiation, important concept, radiation shape factor. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए and try to solve it. A surface of area x meter square is enclosed by a second surface. A surface 1 is having a area x square is enclosed by another surface 2 which is having the area y meter square. It is not x square, it is x and y meter square. What will be the shape factor of second surface with respect to itself? F222 हमें चाहिए. If the first surface does not see itself, इसका मतलब F121 is given as 0. So if F121 is 0, F122 is equal to 1 from the enclosure theorem. F11 plus F122 is equal to 1. Enclosure theorem. So F222 can be written as 1 minus F221, and from the reciprocating theorem 1 minus A1 F122 upon A2. Isn't it? And F122 is already 1, so 1 minus F222 is equal to 1 minus A1 by A2, and the area of A1 is x, area of A2 is y. 1 minus x by y. D is the answer. It will be D. यही तो गलती होती है अभी. It will be D. If the question would have been to find out F121, that is 0, but F222 is not 0. Right? Got it? The next question, match the following. The next question is match the following. Question number 33. Question number 33. Thermal time constant
It represents the rate of response of the system to change in, yes, thermal response. It represents the thermal response. 1R. Biot number is the ratio of conductive resistance to convective resistance, internal resistance to the surface resistance. 1R, 2P, and the Fourier number, degree of penetration of heat wave into the material. So Fourier number is Q, 3Q. RPQ, RPQ, RPQ. Option B. B is the answer. Option B. The next is question number 34. Second last question. Then Sonu Sir will be taking over the charge from here. For a fully developed laminar flow in circular pipe with forced convection system, the ratio of Nusselt number with constant heat flux to the constant wall temperature is. Nusselt number for constant heat flux is 4.36 for laminar flow. Nusselt number for constant temperature, surface temperature, is 3.66. So if we want to find out the ratio, 4.36 upon 3.66. So it will be greater than 1. So what is the exact value? A and B cannot be true, either C or D. If you do the calculation, or if you try to get more correct calculation, then you will get your answer to be D. D is the answer. And the last question from my side on your screen, 35 question. Air enters a counterflow heat exchanger. It is the counterflow heat exchanger. Do not forget, some people do not see whether it is counter or parallel flow and they make the mistake. Air is flowing at 70 and leaving at 40. Water is entering at 30 and leaving at 50. What is the LMTD? LMTD is delta T1 minus delta T2 upon natural log. 70 minus 50, that is 20, minus 40 minus 30, that is 10, ln of 20 by 10. What is the natural log of 2? मालूम है क्या आपको? ये याद होना चाहिए. What is the value of ln2? 0.693. ln2 will be 0.693. So it is 10 upon 0.693. Then if you will do the calculation, it is almost 6937. So it is 1000 by 7. Sorry, 100 by 7. It is almost 100 by 7. It will be almost 100 by 7. So that will give rise to 14.43 something. So this is all from my side, guys. Now let us invite Sonu Sir. I will share the PDF of this session to my Telegram group. And tomorrow, don't forget, guys, tomorrow at 9 p.m. myself and Sonu Sir will be coming live again on the same YouTube channel to discuss the numericals, beautiful questions which can be expected in your ESE examination from the thermal as well as complete thermal, the thermodynamics basics and the applied portion. So tomorrow at 9 p.m. see you there, guys. Thank you from my side. Take care, stay safe, stay motivated. So Sonu Sir, over to you. Thanks a lot. So very good evening to all of you. Near about 70 to 75% of the part you have just completed. अब उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है, थर्मल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो चलिए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द सेशन. डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. ओके, तो लाइव मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी 70-80% सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचे हैं लाइक थर्मल. ओके, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यू आर वेटिंग. बिल्कुल, yes, just a minute. Yes, before that let me share one important information. If you are going to prepare for GATE 24, then Avinav sir is going to conduct a very important workshop, that is mega workshop, how to ace the GATE 24 in first attempt. Date will be 14th of Feb. परेशान करेगी आपको, लेकिन definitely you can join at 7:30 p.m. तो चलिए one by one start the session, my dear. One by one let's discuss the question. Till now we have discussed, okay, we have discussed 110 questions,
and after that 40 question we are having in this session other related to thermal and renewable source of energy, that is also one of important part of ESE, और उसके बाद आपका ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो जल्दी से आ जाइए। एंड दिस लेट मी टेल यू, दिस थर्मल पार्ट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द ESE एग्जाम, फॉर एनी अपकमिंग एग्जाम आई हैव जस्ट ट्राई टू इंक्लूड लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट अगर आप सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी ESE के साथ साथ बाकी के एग्जाम में भी। चलिए, सो क्वेश्चन क्या है, देयर आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सम ऑफ इंसेंटिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास। इंटेंसिव मतलब कैसे चेक करोगे, 1 kg 10 kg 100 kg तीनों kg के लिए आप डिफाइन कर लो कि ये प्रॉपर्टी चेंज होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विस्कोसिटी, 1 kg वाटर की भी वही है, 10 kg 20 kg की भी वही रहने वाली है इंटेंसिव। थर्मल डिफ्यूजिविटी सेम कॉन्सेप्ट, velocity same concept. So intensive property if I'm talking about, yes, any form of energy my dear, potential energy, kinetic energy, everything is related to the mass. So ये आपकी extensive property हो जाएगी। This one is the intensive property, this one is the intensive, and this one is the intensive। 1 to 4 is the intensive, anything is matching, yes, 1 to 4 is the example of intensive अभी, and 3 5 6 is the example of extensive। जल्दी से आंसर बताओ। देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप ESE एग्जाम या फिर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम लिखने जाते हो, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दैट इज द रीजन, ये अभी से हैबिट ले आओ क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के जल्दी से आंसर लाने की, एंड टू सेलेक्ट द प्रॉपर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112। किसी भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दैट एग्जाम अभी। यस, ट्रिपल पॉइंट इज अ लाइन ऑन PB डायग्राम, पॉइंट ऑन PT डायग्राम, कर्व ऑन HS डायग्राम और ट्राइंगल ऑन UV डायग्राम। कैन यू प्लीज राइट द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ट्रिपल पॉइंट डायग्राम जो होता है वो किन किन डायग्राम पे क्या क्या बनता है, एनीवन? अभी आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, ट्रिपल पॉइंट डायग्राम 1 is absolutely correct, it is the line on PB diagram, absolutely right. PT diagram, it is also the point, it is also the right, but on this one no my dear, on this one this is absolutely the triangle. And this is a very simple concept कि when one extensive and one intensive property are there now, then it is a line. One intensive and second intensive is there, there is also the point. Both are the extensive property, like internal energy and extensive, volume extensive, then in that condition the problem is diagram, triangle. So answer is 1 to 4, Delhi. Wonderful, wonderful. Yes, yeah, it's a trick my dear. Intensive and intensive, it is a point, okay. Intensive or extensive, it is a line, and extensive it is a triangle, okay. It is a triangle. Yes, it's a trick. 113. Next 40 question we need to cover. Assertion reasoning is the point my dear. Expander is used in a air refrigeration system. We generally use air refrigeration system, or you can say reverse Brayton cycle, or you can say Bell-Coleman cycle. In Bell-Coleman cycle we use the expander for the cooling process. This is the assertion. What is the reason behind it? Joule-Thomson coefficient of an ideal gas is 0 my dear. Joule-Thomson coefficient of an ideal gas is 0. Yeah, statement, this one is also right, this one is also right. If we talk about the statement, both are the right. Yes, no, both are the right. Assertion, reasoning, both are correct, but is it the A answer, B, C or D? Joule-Thomson coefficient of an ideal gas is also 0. This point we have already proved my dear. Second point, expander is definitely turbine or expander we are using in the gas refrigeration system. In Bell-Coleman cycle or the reverse Brayton cycle, absolutely right. So what is the right answer? Right answer is B, that A and R both are the individual true, but R is not the correct explanation. हाँ, ये यहाँ पे let me tell you, ये जो second reasoning है ना,
रीजनिंग हमको ये डिफाइन करना, या नो इश्यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जो रीजन यहां पे दिया हुआ है, that reason is clearly mentioned to us that we are not allowed to add the throttling device for the expansion process, throttling process। ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट का 0 होना हमको ये बताता है कि आप थ्रोटलिंग डिवाइस यूज नहीं कर सकते हो। अब कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं ये नहीं बता रहा है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होता है, इट मींस वी आर नॉट एबल टू अलाउ द थ्रोटलिंग डिवाइस एज अ एक्सपेंडिंग प्रोसेस। तो ये ना करने को बोल रहा है, एक्सपेंडर तो आप यूज कर रहे हो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगेन 114, अभी इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रैंडम एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड इंटरनल एनर्जी इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वन इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले इंडिविजुअल पॉइंट में हमको बोला गया है कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन, वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी के सबका सम है। ओके, दूसरा बोला है कि इंटरनल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनीवन? अगेन अभी आंसर बी है। लेट मी टेल यू व्हाई बी है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। इंटरनल एनर्जी इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज द सम ऑफ काइनेटिक, वाइब्रेशनल, रैंडम एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। उल्टा लिख दिया गया है। मतलब इंटरनल एनर्जी को हम इसलिए, इट मींस इफ वी वांट टू कंप्लीट, तो ये इसका रीजन नहीं है, एक्चुअल में ये इसका रीजन है। Why the internal energy is known as microscopic form of energy? Because it is a summation of kinetic energy, vibrational energy, random or magnetic energy, positional energy of the molecule at the microscopic level. So yes, A and B is the right, but R is not the correct explanation of the assertion. Even the assertion is the correct explanation of the reason, my dear. Okay, चलिए, बिल्कुल सही है, absolutely right. चलो, खेल गया, अच्छी बात है। नहीं, अभी तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आने हैं शायद। आई थिंक अभी एंड ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस क्वेश्चन यू हैव जस्ट सीन फर्स्ट टाइम in a cascade refrigeration system. Let me tell you, my dear, cascade refrigeration system are the system which are working in series. मतलब पहले नीचे से कोई हीट को ऊपर लेके जा रहा है, खींच के ला रहा है, और दूसरा रेफ्रिजरेटर उसी हीट को एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है। मतलब सिंपल कह सकते हैं, वेयर वन रेफ्रिजरेटर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो हम उसको सीरीज में कर करके इसको ऊपर लेके आते हैं, तो लोअर टेम्परेचर बॉडी से एटमॉस्फेयर तक हीट रिजेक्ट हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें पूछा है कि अगर ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और यहां पे दो रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रही है, वन इज अपर रेफ्रिजरेशन साइकिल and second is lower refrigeration cycle, if the total power required to produce this refrigerating effect, it means from here, my dear, COP1 is given in this cascade system, that is equal to 3, COP2 is given in this cascade system, that is equal to 4, refrigerating effect it is given, that is 1 kilowatt. It is asked what is the value of the power input. We know very well that power input is, हमको क्या पता है पावर इनपुट क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, माय डियर, डिवाइडेड बाय COP. इज इट और नॉट? ओवरऑल COP. इट इज ओवरऑल COP. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओवरऑल COP? ओवरऑल COP we know very well that 1 COP of 2, my dear, divided by COP of 1 plus of COP of 2, abhi, wonderful, plus of 1. If I'll substitute the answer, COP of 1 is 3 into 4 divided by 3 plus 4 plus 1, that will be equal to 12 by 8, or it will be equal to 3 by 2. So if I will substitute the value, then it is this, and this is, my dear, 3 into 2. Answer is 0.67. Absolutely right. Answer is Bombay. Very good. Wonderful. Abhi, बहुत सही. चलिए, let's move forward and see the next question. Refrigerant question is purely related to the nomenclature of the refrigerant.
Yes, let's see. First, ammonia is given. In the right side, you need to check that ammonia will be matched by, किससे match होगी? And let me tell you one important point, my dear. Ammonia is also known as inorganic compound. अमोनिया को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं दैट इज 7 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो व्हाट इज दिस? अच्छा, आरएसी पढ़ा ही नहीं, तो दिस इज R7. व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? 17. सो द अमोनिया विल बी मैच्ड बाय लाइक दिस, माय डियर. सो आइदर दिस विल बी द राइट आंसर और दिस विल बी द राइट आंसर. A and C will not be the correct answer. ये दो तो हो नहीं सकते. Are you getting my point? ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है. अब आते हैं बाकी के ऑप्शन पे. Like, let's come to this portion, my dear. This portion R12. R12 को हम ये लिख सकते हैं R012. If I will add 1 plus 1 in this 0, that will be the number of carbon. How many? 1. If I'll subtract from here, that will be the number of hydrogen, that is 0. And if I will write as it is, that will be the number of fluorine. Okay. Very good. So there is a compound related to the R12, my dear, where the number of fluorine are 2, number of carbon are 2, and if the balancing are not matching, we generally add 2 atom of the this chlorine. So in this case, Cl2F2, that will be the complete expression of this one. So can we match? Yes. B is not the answer, D is the correct answer. D बिल्कुल सही आंसर है. After that we match it. Sorry. 3 will be 2. 3 will be matched by 2. Where is it? 3 match by 2 and 4 match by 3. D is the answer. Okay. So answer is D, not B, my dear. Let's move forward and see question number 117. If a sample of moist air of 20% relative humidity is compressed isothermally. First of all, let me draw this TS diagram. That if I will draw the TS diagram, my dear, then at this particular point, let me draw first of all that somewhere at this point vapor pressure is given, okay, PV1, and saturated pressure we know very well, psychometric पढ़ा है कि नहीं, that is known as PS. So RH will be equal to 0.2%. It will be equal to PV1 divided by PS. So what will be the value of PV1? That will be equal to 0.2 of PS, my dear. Okay. After that, now the pressure is compressed mixture is compressed isothermally to a pressure of the 2 atmosphere. It is double, means P vapor 1 become double isothermally. It means we are somewhere talking about this. Right now, our PV2 become 2 of PV1. Is it or not? So in this case, we can easily write that PV2 will be equal to 2 of PV1, or it will be equal to 0.4 of PS, my dear. After that, if we want to calculate what is the value of RH at second position, it will be equal to, what is the answer? It will be equal to PV2 divided by PS. If I'll write PV2 0.4 PS divided by PS, that will be equal to 40%. So its relative humidity will increase by 40%. D is the correct answer. Abhi, very nice. D is the correct answer. तो कह रहे हो कुछ नहीं पढ़ा है. Most of the question you are selecting the absolutely right. Sir, there is unsaturated air. Air unsaturated है, that is maintained at 20 degree dry world temperature. मतलब आप कह सकते हो नियर अबाउट नवंबर या फिर अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अनसैचुरेटेड एयर है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 50% है, और उस 20% ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाले को आपने एक हॉट वाटर के स्प्रे से पास कराया जिसका अपना टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड माय डियर. सो अगर एयर का टेम्परेचर ये है और उसका अपना टेम्परेचर ये है तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऐड सम हीटिंग प्रोसेस होगा. यस.
और क्योंकि वाटर स्प्रे हो रहा है देन सम ह्यूमिडिटी विल आल्सो बी एडेड. सो एग्जांपल इज, अभी heating will be the process and humidification will also be the process. Answer will be the C, that heating plus humidification. heating क्यों होगी? टेम्परेचर ज्यादा है, humidification वाटर ऐड हो रहा है. सो आंसर इज C. ESC के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. चलिए assertion एंड रीजनिंग की तरफ चलते हैं. 119 क्वेश्चन है माय डियर फॉर यू. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. On a psychrometric process or chart, constant enthalpy line and constant bat bulb temperature line, I mean WBT line and constant enthalpy line are same. वैसे parallel होती हैं, आपको पता होना चाहिए. Second, for the same wet bulb temperature, specific humidity is not going to change. अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो इसको समझो. देखो, अगर कंफ्यूजन है, let's try to understand this. Sir, these are the constant enthalpy line and these are the constant WBT line. These are parallel to each other my dear. ये और ये दोनों parallel होती है. पहला क्वेश्चन समझना, मतलब at each and every point of this line ना WBT will be the same. WBT की वैल्यू सेम होगी और my dear enthalpy की वैल्यू भी सेम ही होगी, like this. Okay, पहला सही है. सेकेंड स्टेटमेंट को पकड़े. For the same WBT, specific humidity remain constant. मतलब आप कह रहे हो ये specific humidity ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो आप कह रहे हो कि WBT अगर इस पॉइंट पे रहोगे, इस पे रहोगे, इस पे रहोगे और इस पे रहोगे, क्या W सेम रहेगी? W मीन्स specific humidity बिल्कुल कभी भी सेम नहीं रह सकती माय डियर. यस और नो? सो WBT will change. Absolutely wrong point. A सही है, R गलत है. कौन सा हुआ? A राइट, R गलत. क्लियर हो गया? C इज द करेक्ट आंसर. यस, वेरी नाइस. C इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाईली रेरिफाइड गैसेस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल ऑफ यू. हाईली रेरिफाइड गैसेस एक कॉन्सेप्ट है जो वैलिडिटी खत्म कर देता है अपनी. जो रेरिफाइड गैसेस होती है, रेरिफाइड गैसेस का मतलब है गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है. मतलब आप चाहते हो कि किसी एक रूम में वैक्यूम क्रिएट हो जाए, आपने वैक्यूम पंप से उसके सारे मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए, ये फिर भी 2-4 मॉलिक्यूल वहां पे रह गए. रेरिफाइड गैसेस वेरी 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 लेस डेंस गैस, बहुत कम डेंसिटी हो, जहां पे पूरे रूम में मॉलिक्यूल गिन के कुछ हो एयर के, उसको बोलते हो आप रेरिफाइड गैस. आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल हो जाता है. जो आप बोलते हैं ना फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल हो जाएगा. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका फैन से एयर आती है तो वो कॉन्टिनम के थ्रू, यस नट्सन नंबर, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही जा रहे हो. अभी आपने कोई एग्जाम क्यों नहीं भरा? नट्सन नंबर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिलेक्शन, कि कहां पे आपका कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट फेल होगा, कहां पे नहीं होगा. वेरी नाइस, यस, बी इज द करेक्ट आंसर. तो कह रहे हो कोई एग्जाम ही नहीं फिल किया मैंने. 21 पे आ जाओ चलो जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कौन कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रिवर्सिबल प्रोसेस. अब यहां पे आप देखोगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ये आपको यहां पे एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, दैट फेज चेंज प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. जो फेज चेंज प्रोसेस होता है, आई मीन 4 प्रोसेस, वो एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ऑल द फेज चेंज प्रोसेस आर द रिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब आप कंडेंसेशन, इवापोरेशन प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस काउंट कर सकते हो. स्लो हीटिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द हॉट सोर्स, नॉट पॉसिबल. नो, रिवर्सिबल, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है. कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग ऑफ द आइडियल गैस, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है. ओके, यस, हाईली इररिवर्सिबल प्रोसेस है. हाईली इररिवर्सिबल प्रोसेस है. तो यहां पे जो ऑप्शन बचता है दैट इज 1 and 4 माय डियर. A and 4 विल बी द राइट ऑप्शन, और उसमें से आपका ये आंसर है. ओके, नेक्स्ट जरा बताना.
consider the following statement. Zeroth law of thermodynamics is related to temperature. Free expansion क्या है? Free expansion is the highly irreversible process, and let me tell you what is the example of free expansion. आपके complete room में vacuum create कर देते हो, and after that you just come with a balloon, and उस balloon को rapture कर देते हो उस room में. That is the example of free expansion. और free expansion is highly irreversible process. Highly irreversible process है. Okay. Irreversibility is very high in this case. Yes. Consider the following statement. Zeroth law of thermodynamics is related to temperature. पहला point. Entropy is related to first law of thermodynamics. दूसरा point. ये तो गलत ही है शायद, क्योंकि एंट्रोपी का लेना देना तो सेकेंड लॉ से. Internal energy of an ideal gas is the function of temperature and pressure. No. Internal energy of an ideal gas is the function of temperature only. Temperature only. Joule's law. Van der Waals equation is related to an ideal. गलत है बिल्कुल, सिर्फ एक ही सही है. वंडरफुल वंडरफुल. यस. अभी पता नहीं आपके फ्रेंड कहां चले गए, बट अगेन यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. नाइस. Near about 70-80% accuracy you are having right now. I don't know why you have not filled this ESE form. Good, good, good. Yes, U is only the function of temperature. Sir, if the numerical value of the PDV and minus BDP for a thermodynamic system of an ideal gas gives the same quantity. नहीं, वो तो अब डेट निकल गया, वो तो अब नेक्स्ट ईयर पूछना है या जो भी एग्जाम है. इफ यू आर इन फाइनल ईयर देन डेफिनेटली आप किसके इसरो पे जरूर ध्यान देना. इसरो मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है. ओके, नॉट कवर ऑल द सब्जेक्ट. ओके, चलो. देयर इज वन प्रोसेस वेयर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पीडीबी, माय डियर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ माइनस बीडीपी, दे बोथ बिकम सेम. इफ यू जस्ट don't talk about साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन को जाने दो, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पीडीवी और वीडीपी की, वो दोनों सेम होती हैं. याद है कोई प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस. इन द आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज अ परफेक्ट सिमेट्री बिकॉज इट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, माय डियर. और जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है तो एरिया अबाउट द प्रेशर एक्सिस and area about the volume axis both will be the same. That's why your work done will be the same. Yes, PB is equal to constant. That's why isothermal or the hyperbolic is the process. This process is also known as hyperbolic process, or the hyperbolic is the process where the work done remains same. Wonderful. Next important question. A new temperature scale in degree n. ये तो क्वेश्चन हमने बहुत बार क्लास में भी किया है, मतलब नॉट दिस बट सिमिलर क्वेश्चन. एक एन स्केल है और एक डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है जिसका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 और माय डियर 0 होता है. अब ये क्या बोलता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 400. इज इट और नॉट? बॉइलिंग पॉइंट इज 400 N एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 100 N. देन व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू आस्क. तो इस स्केल पे जब ये 60 डिग्री बता रहा होगा कहीं यहां पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज द पॉइंट. मतलब आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि जब ये 0 बता रहा है तो ये 100 बताता है. यस यस, वंडरफुल वंडरफुल. अभी जब ये 100 बताता है तो ये 400 बताता है. जब ये 60 बताएगा तो ये कब बताएगा? आप सीधा सीधा स्लोप मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. 280 यू आर गेटिंग. तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? 280 आप कहते हो आ रहा है, तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल. ऑलरेडी आई थिंक आपने कैलकुलेट किया है. 280 इज द आंसर. वेरी गुड, नाइस. यस यस, ओके. चलिए 125 125 क्वेश्चन. 125 क्वेश्चन नंबर. ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस 1 to 2. एक क्लोज सिस्टम है. यहां पे देखो, मैं यहां पे पीवी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. 1 to 2 कुछ इस तरह से. 1 to 2 my dear, then it come back to 2 to 1 like this. Then what will be the value of W21? Whenever the value of Q12 is given to us, my dear, how much? Plus 20.
and W12 is also given to us. How much? 50. Then after that Q21 is also given to us. How much? It is -10. Then it is asked what is W21. Can you please tell me the answer? कितना आंसर आ रहा है? अभी बहुत जल्दी आंसर देना है इन सब क्वेश्चन का, और इन सब क्वेश्चन पे जो आपको कमांड बना के मार्क्स स्कोर करने हैं, जहां पे मतलब वो कोई भी एग्जाम है, ऐसा नहीं कि ईएससी, जहां पे टाइम लिमिटेड वाले एग्जाम है, इन सब क्वेश्चन को हमको सर्च करना है कि ये मिले और हम यहाँ पे स्कोर करें। क्योंकि आपको पता है जहां पे टाइम लिमिटेड वाले एग्जाम होते हैं उसमें आप 100% अटेम्प्ट कर, मतलब कर भी पाते हो तो 100% मार्क्स नहीं आते, 50-60% मार्क्स आप में डिफरेंस बना देते हैं। बताइए 20 आंसर आ रहा है, पता नहीं मुझे क्यों गलत लग रहा है। सर हमने पढ़ा है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू इन अ साइकिल, मतलब Q12 प्लस ऑफ Q21 will be equal to, my dear, W12 plus of W21. What is Q12? This is plus 20 minus 10. What is it? It is 50 or plus of W21. If I'll write the answer, that is 10 minus of 50, it will be equal to W21. What is the correct answer from here, my dear? Can we write W21 will be equal to minus 40? Internal energy constant रहेगी, या फिर उसको ये कहो कि एक साइकिल बन चुकी है और साइकिल में समेशन ऑफ टोटल हीट एंड समेशन ऑफ टोटल वर्क विल बी कांस्टेंट, सेम रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। दैट्स व्हाई आंसर विल बी दिस वन, बॉम्बे। गेटिंग माय पॉइंट? कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी कहीं, और कुछ गलत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। यस यस, अरे मैंने भी वही अप्लाई किया है, आप देखो तो सही से, मैंने भी वही अप्लाई किया है। 12 इसको इधर ले आओ, W12 is equal to this one, Q12 minus this, it will be equal to, my dear, ये इस साइड आ चुका है, that is equal to Q21 minus of W21 with minus साइन। माइनस साइन आपको पता है क्यों होगा, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन रास्ते बदलोगे तो इंटरनल एनर्जी में तो साइन चेंज होगा ना, एक में प्लस होगा जब 1 से 2 जा रहा होगा, लेकिन जब 2 से 1 आओगे तो माइनस होगा, क्योंकि 2 वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है, बिल्कुल वही जो आप कह रहे हो वही हमने लिखा है, इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, ओनली साइन चेंज। अब देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 126, आपने बस माइनस में गलत किया होगा, आपने माइनस में गलत किया होगा, आप ये कह रहे हो ना कि सर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी द सेम, माना होगा बिल्कुल, लेकिन आप ये भी तो समझो U2 माइनस U1 अगर प्लस आता है तो माय डियर U1 माइनस U2 तो माइनस ही आने वाला है ना, यही गड़बड़ किए होगे, पक्का ये गलती किए होगे। यस और नो, यहीं पे मिस्टेक की हो, एग्री और नॉट? ओके चलिए, write the next answer. 85 kilojoule of heat is supplied to a closed system at a constant volume. एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे 85 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई होती है माय डियर, अरे कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 85 किलो जूल हीट सप्लाई होती है 1 to 2 में। देन आफ्टर दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रोसेस 90 किलो जूल ऑफ हीट रिजेक्ट हो जाती है 2 to 3 में। उसके बाद कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस, बेचारा ये वापस लौट के आ जाता है कुछ ऐसे। पीबी डायग्राम ये बन चुका है, एग्री? और यहां पे आपसे पूछा जाता है कि अब आप ये बताओ कि अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम रहती है तो व्हाट विल बी इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये होती है, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। टफ नहीं है, ड्यूरिंग द प्रोसेस कितनी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। यस, what will be the quantity of the tell me the answer sir. Right now U1 is given to me, what is this U1 sir? 100 kilojoule, is it or not my dear? 100 kilojoule is given to us, is given to us. Then in this case, because it is the isobaric process, are you getting my point? Isochoric, sorry, work done will be 0.
सो जितनी भी हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी में सेव हो जाएगी. देन व्हाट इज U2 माय डियर? व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द U2? आपने 85 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई की है ना, तो 185 किलो जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज मेंटेन एट U2. अब बात रही U3 की. सर आर यू एबल टू राइट दैट इन प्रोसेस 2 to 3 कैन आई राइट टोटल हीट सप्लाई माइनस टोटल वर्क will be equal to change of internal energy? Is it or not my dear? चलिए देखते हैं आगे. हीट सप्लाई कितना है? 2 से 3 में 2 से 3 में व्हाट इज द हीट सप्लाई? 2 to 3. ये रिजेक्ट हो रहा है ना? यस, इट इज रिजेक्टिंग -90. देन आफ्टर दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम माइनस माइनस प्लस माय डियर, दैट इज इक्वल टू U3 minus of U2. Can we write from here? That is minus 70. Is it or not? Plus of. That is minus 70. U2 is given to us this. That is 185 is equal to U3. Can you please tell me what is the value of U3 from here? U3 कितना आ रहा है? That is 115 किलोजूल. अब आप ये समझो कि सर U1 तो ये है और U3 115 है. U3 115, U1 है आपका 100. तो अब अगर U की वैल्यू कम हो रही है और ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, हीट ट्रांसफर 0 है, इसका मतलब है ये जो 15 का डिफरेंस आ रहा है दैट इज ओनली द वर्क डन इन 3 to 1, दैट इज इक्वल टू U3 माइनस ऑफ U1, दैट इज इक्वल टू 115 माइनस ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू माय डियर 15 किलो जूल. कैसे कह रहे हो? बहुत हार्ड लग रहा है. ये तो आपने 10 सेकंड 15 सेकंड में तो आंसर ले आए थे. हाउ कैन यू से कि हार्ड लग रहा है? 15-20 सेकंड में तो आपका आंसर आ गया था इसमें. यस, एब्सोल्युटली राइट. चलिए आगे बढ़ जाएं. क्वेश्चन नंबर 127. लेट मी टेल यू माय डियर, दिस इज n, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज 10, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. क्वेश्चन देख के ऐसा लगा होगा. चलिए नेक्स्ट. न्यूटन मीटर मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज गिवन टू अस, है ना. दिस फोर्स इज गिवन इन न्यूटन एंड माय डियर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन मीटर. अब आपको पूछा है कि so the variation of the process from 0 to 3, if the internal energy of the system at the end of the process, this is the increment in the internal energy. मतलब एक सिंपल आपको दिया है du is equal to 2.5 plus जूल माय डियर. तो अब यहां से आपको बताना है कि what is the total value of the, what is the total numerical value of the heat that is absorbed in this process. कितनी हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में. जरा देखते हैं कितने लोग आप सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को. एक तो आंसर ही बहुत कम लोग दे रहे हैं, पता नहीं कहां चलेगा सब. फिर भी लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन माय डियर. पहले तो ये वर्क फाइंड आउट कर लें. कितना वर्क निकल के आ रहा है? W 0 to 3 का हमको वर्क मिल रहा है 10 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. एरिया ऑफ दिस ट्रेपोजॉइडल 10, no 10 plus 0, not 5. 10 plus 0 divided by 2, area of this trapezoidal 10 plus 5. Yes. Sorry. कितना आंसर आया? Okay, side, yes. You check all the numbers. 10 plus 5 by 2 into 1, my dear, plus of 5 into 1 plus of 5 into 1, क्योंकि ये भी 1 है ये 2 है. So what answer we are getting? 15 by 2 into 1 plus of 10. What answer we are getting? 20. This is 27.5. Is it or not? No. This is 10 only, sorry. This is 17.5 kilojoule. 17.5 किलोजूल वर्क डन. चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2.5. तो हीट सप्लाई कितनी हुई? शायद 20 हुई. बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. 2.5 प्लस वर्क डन, इट विल बी द हीट सप्लाई 28. इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज अगेन देयर माय डियर. द डायरेक्शन ऑफ दिस डायग्राम इज गिवन टू अस लाइक दिस. वेरी नाइस. दिस इज द TS डायग्राम. This one is the TS diagram. Temperature is given in Kelvin and entropy is given in kilojoule per
केल्विन। मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं सो दैट यू विल चेक ऑल द नंबर्स और देखो कितने आंसर आप ला पा रहे हो यहां से। 1 2 3 4 5 इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इन दिस केस। यस, टेल मी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इन दिस केस। इट विल बी बेटर कि सबसे पहले आप वर्क डन फाइंड आउट कर लो। वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद आप हीट रिजेक्ट फाइंड आउट कर लो। हीट रिजेक्ट फाइंड आउट करने के बाद यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी वेरी इजीली माय डियर। बहुत आसानी से आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लोगे। पहले तो वर्क डन देखो कितना आता है, टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइडल बिटवीन द वर्क डन माय डियर। और हम क्या लिखते हैं एरिया में? वर्क डन क्या लिखेंगे? एरिया मींस स्मॉल साइड, दिस वन दैट इज 2। Sir, named them figure. Figure is TS diagram. My dear, this one is TS diagram of a cycle. This one is the TS diagram of a cycle. That is a small length plus 1 to 2, large length divided by 2 and multiply by difference of both, that is 1000. What is the answer? 3000 joule is the work done, my dear. Sorry, kilojoule is the work done. Is it or not? Area of a closed cycle on the TS diagram is the work done. Now, what is the heat rejection? QR, that is equal to area of the TS diagram process in which entropy is decreasing. एक ही process है जिसमें entropy decrease होती है, A, B, C and D and this F, ABCD. एक ही प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है। दैट एरिया अंडर दिस प्रोसेस माय डियर विल गिव यू द हीट रिजेक्शन। व्हाट इज इट? दैट इज 500 into 4 my dear. Answer is 2000 kilojoule. So 2000 heat is rejected. Heat supply will be equal to 5000 kilojoule. So heat supply 5000, work done 3000. What is the efficiency my dear? Are we not getting C as a Chennai? Is the correct answer for all? क्या C आंसर नहीं आ रहा हमारा? Are we not getting C as the correct answer, my dear? Wonderful, wonderful, 60%. Next. A engine operate between the temperature limit of 900 Kelvin and T2. Another operate between T2 and 400. For both the engine, if the efficiency is equal, then what will be the numerical value of the T2? मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Absolutely right. Most of you have already given the answer. Very nice, Abhi. Wonderful. Very nice. Let's see the next question. Yes, it's the important question for all. Sir, there is one Carnot engine like this. Temperature is maintained at 600 Kelvin. This one is the reversible heat engine, Carnot heat engine, and this one is the temperature like 300 if I'm not wrong. Yes, 300 Kelvin, my dear. Work done is how much? 300 kilojoule of work done is there. Work done is there. What will be the value of the heat supply? H per this, it will be equal to 600 kilojoule. Do you know why? Sir, 50% तो efficiency होगी देखो। यस यस, अभी अंडर रूट T1 एंड T2 विल बी द आंसर। देखो अब यहाँ पे 300, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 300 तो आपकी आई मीन 50% एफिशिएंसी हो गई। 1 minus T2 upon T1, 1 minus T2 upon T1 will be the efficiency. That Q rejected will also be equal to 300. अब आपको पूछा है कि आपको बताना है what will be the entropy change during the heat addition. हीट ऐड जब ये इतनी होती है तो एंट्रोपी चेंज कितनी होती है? सो कैन बी राइट चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द हीट एडिशन विल बी इक्वल टू हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ द हॉट सोर्स. व्हाट इज द हीट माय डियर? 600. व्हाट इज द टेम्परेचर माय डियर? 600. आंसर इज 1 किलोजूल पर केल्विन. एब्सोल्युटली राइट. बॉम्बे बिल्कुल सारे स्टेप सेम लिख रहे हो. एब्सोल्युटली राइट. यस, क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा दो, एफिशिएंसी लगा दो, कार्नोट साइकिल इज गिवन, यू विल गेट द सेम आंसर. नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है. क्वेश्चन नंबर 31. टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम इज गिवन टू अस एंड यू नीड टू फाइंड
व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टीएस डायग्राम माय डियर। इनमें से चारों में से टीएस डायग्राम एग्जैक्टली कौन सा मैच कर रहा है? ये क्या है सर? पीवी डायग्राम इज गिवन टू अस, राइट? thermodynamic cycle is given to us, A to B, B to C and C to A. Okay, now from these this PV diagram we need to find इन चारों में से सही टीएस डायग्राम कौन सा होगा। देखो आपको एक पॉइंट समझना है पहले तो, BC is isobaric process my dear, isobaric process, and CA is आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि सीए का स्लोप बीसी के स्लोप से ज्यादा होगा। बीसी के स्लोप से, सीए का स्लोप यह है एंगल, बीसी का स्लोप यह है ज्यादा है, यह सही हो सकता है सर। सीए का स्लोप यह है कम है, बीसी का स्लोप ज्यादा है, नहीं सही हो सकता। बी तो इलिमिनेट हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। डी भी इलिमिनेट हो गया, बीसी ये है, आई मीन बीसी ये नहीं हो सकता। चलो तो ये सी भी एलिमिनेट हो गया। व्हाई यू आर नॉट गेटिंग? ये भी चक्कर खत्म हो गया। अब एक ही आंसर। अब इसको प्रूव करना चाहते हो? देखो यहां पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि हीट की सप्लाई होती है, और जब जब हीट की सप्लाई होती है एंट्रोपी बढ़ती है माय डियर। बीसी में एंट्रोपी बढ़ रही है, सी ए में देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब है हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट होने का मतलब है यहां पे देख सकते हो एंट्रोपी कम हो रही है। और तीसरा प्रोसेस आपका इस तरह से दिया गया है कि ये कंप्रेशन प्रोसेस है जो आपका एडियाबेटिक भी हो सकता है और आइसोथर्मल भी हो सकता है। मतलब बाई चांस अगर हमारा ये आंसर मिल जाता तो ये आइसोथर्मल भी पॉसिबल था, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं किया है ए बी प्रोसेस कौन सा है, बट एच पर ऑल अदर ऑप्शन हमारा ये यहां से परफेक्टली मैच हो जा रहा है कि ए बी प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। यार मैं लेक्चर लिया था 3-4, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। हार्डली 2-3 पॉइंट को समझना है उनको, मतलब 2 या 3 लेक्चर में कवर कर लिया था, जो पूरा मतलब ये डायग्राम बड़ा ही आसान है बनाने के। आई विल शेयर द लिंक। अब ये समझो, ये भी टीएस डायग्राम ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ द स्टीम shows the reversible and irreversible process। इसमें एक पॉइंट हिडन है, वो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एक्चुअल में एडियाबेटिक का डायग्राम है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि एडियाबेटिक में आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, दिस वन कंप्रेशन है तो, और एक्सपेंशन है तो ये है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट हो रही है, तो ये तो रिवर्सिबल हो गया। तो ये तो चारों में एक जैसा है, ए बी सी डी। अब आपको पहचानना है कि कौन सा इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और द फिगर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस? सब सेम नहीं है। देखो यहां से ये प्रोसेस ऐसे जा रहा है, मतलब ये आपको बता रहा है एंट्रोपी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। लेट मी टेल यू, कोई भी इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें एंट्रोपी कम हो जाए। अब समझो सही से, सीधा ये आंसर लगाओगे। कोई भी इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें एंट्रोपी कम हो जाए। तो ये देखो, इन बोथ प्रोसेस, चाहे तो एक्सपेंशन है चाहे कंप्रेशन है, दोनों में ही एंट्रोपी बढ़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में एंट्रोपी बढ़ती नजर आ रही है, इसलिए ऐसी प्रोसेस है, एक सा नहीं है। इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बता रहा है कि एंट्रोपी कम हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है। इसे देखोगे तो आपको ये बता रहा है कि सर यहां भी एंट्रोपी कम हो रही है, जो पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। गेटिंग? तो एक से नहीं है, हर किसी में एरो का डिफरेंस है माय डियर। नेक्स्ट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अगर कहीं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू प्लस आ जाए तो उसमें कूलिंग होगी या हीटिंग होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये तो आप चाहते हो कि ईएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले। द न्यूमेरिकल और द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ ए फ्लूइड मींस, क्या बताता है वो आपको? क्या बताता है?
cooling, heating, absolutely right, cooling. When the throttling will be done, then temperature will decrease in the throttling. Temperature remain constant? No. Temperature rise? Not at all, not at all. A will be the correct answer. Wonderful, wonderful. Yes, next. The difference between the constant pressure CP and CB. ओके ओके मोहम्मद, वेरी नाइस वेरी नाइस. चलो जल्दी से लग जाओ, टाइम बहुत कम बचा हुआ है अपने पास में अभी. मतलब अगर पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर्सेस टाइम की बात करने आओ तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व टिल नाउ. वी आर एट 134th क्वेश्चन. हमको 150 क्वेश्चन करने थे. अभी हमारे पास 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो थर्मल और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के हैं. डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट सीपी माइनस सीबी ही इज टॉकिंग अबाउट. CP minus CB he is talking about, that is equal to minus, कुछ याद आ रहा है इसका फॉर्मूला? पहली बात मैं आपको बता दूं, CP minus CV is equal to जो R लिखते हो ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ही होता है, हर जगह वैलिड नहीं होता माय डियर. TV मोहम्मद, व्हाट इज द राइट आंसर? And this will be equal to dP over dV in the isothermal process. ये आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा है. CP माइनस CB ट्रिपल पॉइंट पे जीरो होता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. अप्रोच जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब T की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो CP माइनस CB अपने आप जीरो हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? CP माइनस CB अपने आप जीरो हो जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल बिल्कुल. अभी यस मोहम्मद मंसूरी, इज इट द राइट आंसर और नॉट? गेटिंग और नॉट? वेरी नाइस. कुछ देखा देखा तो लग रहा है सर ये क्वेश्चन इक्वेशन. फिर उसके बाद एक और इक्वेशन आती है जहां पे CP माइनस CB को हम लिखते हैं TV बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई KT. ये भी दोनों एक ही इक्वेशन है. ये इसको बाद में आप क्या करते हो, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्म में इसको ये बनाते हो. दोनों ही एक इक्वेशन है. इवन इसी को जब आइडियल गैस के लिए सॉल्व करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को काट देती हैं. वहां पे CP माइनस CB इज इक्वल टू R बन के आता है. ये सब इसी से बन के आ रही है इक्वेशन. तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ना माय डियर, वो ये है. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ये नहीं भूलना है. 135 रैंकाइन साइकिल में रीजनरेशन क्या इंप्रूव करती है? नहीं, मेयर फॉर्मूला, हाँ लास्ट वाली जो लाइन थी. वेरी गुड मोहम्मद. रैंकाइन लाइन में जो रैंकाइन साइकिल है, अगर उसमें रीजनरेशन करते हैं वो क्या करती है? रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी. आपको पता है रैंकाइन साइकिल में एफिशिएंसी जब आप रीजनरेशन करते हो, रीजनरेशन मींस ब्लीडिंग ऑफ द टरबाइन स्टीम बिफोर पार्शियल एक्सपेंशन. पूरा उसको एक्सपेंड होने नहीं देते मोहम्मद. हम क्या करते हैं अभी कि उसको थोड़ा सा एक्सपेंड होने के बाद कुछ पार्ट उसमें से निकाल लिया जाता है और उसको फिर बॉयलर से जस्ट पहले रख दिया जाता है, सो दैट इट विल मिक्स विद द वाटर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर एंड आफ्टर दैट इट इज अलाउड टू एंटर इनटू द बॉयलर. तब उसके बाद वो बॉयलर की तरफ जाता है. इससे होता क्या है, हमारा जो मीन इफेक्टिव टेम्परेचर है इन द बॉयलर दैट इंक्रीज. दैट्स व्हाई माय डियर हीट एडिशन में जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है. वंडरफुल, नाइस. 36 देखते हैं पावर प्लांट में कितने धुरंधर हैं आप लोग, कहां कहां तक पहुंचे हैं पावर प्लांट क्वेश्चन में. एब्सोल्युटली राइट अभी एंड मोहम्मद. एसर्सन का क्वेश्चन है, फायर ट्यूब बॉयलर डू नॉट ऑपरेट एट हाई प्रेशर. बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे ऑपरेट नहीं होते, while water tube boiler operate at very high pressure. 136 question. Why? Because due to high temperature of the flue gases, fire tube may fail due to the creep. बॉयलर का क्वेश्चन है जो आपको ओक्रोन बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, बिलकॉक्स बॉयलर ये सब पढ़े हो, लियोफर बॉयलर, लैंकेशायर बॉयलर, ये सब पढ़े हैं. कॉचरॉन उसमें से है, जो कॉचरॉन आपका फायर ट्यूब का बेस्ट एग्जांपल है. इंक्लाइन जो आपकी ट्यूब्स लगी होती हैं उसमें पूछा है कि क्योंकि फ्लू गैसेस फायर ट्यूब में रहती हैं, तो उनका अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो जो ट्यूब्स रहती हैं वो डेफिनेटली क्रीप की वजह से फेल होने के पूरे चांसेस हैं. तो रीजन इज एब्सोल्युटली राइट, असर्शन इज एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज ए. That is the reason that fire tube boiler do not operate at very high pressure. बहुत हाई प्रेशर पे नहीं है, बहुत हाई प्रेशर के लिए जनरली वी यूज द वाटर ट्यूब बॉयलर. हम वाटर ट्यूब बॉयलर की तरफ ही बढ़ते हैं माय डियर. गुड गुड गुड. यस मोहम्मद.
अब जरा इसको देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको दिए हुए हैं लाइक कर्टिस टरबाइन, रेटिव टरबाइन, कैप्लन टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन। लेट मी टेल यू माय डियर, ये पावर प्लांट और हाइड्रोलिक मशीनरी का कॉम्बिनेशन है। और यही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं गेट 23 में पूछा गया था। जब ये गेट का, तो इस तरह से आप मान के चलो क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उस समय ये सब पार्ट सिलेबस में थे, इवन ये अभी भी हैं, बट उस टाइम पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। तो क्वेश्चन ऑल्टरनेट होने के चांसेस हैं, मतलब हो सकता है एग्जैक्टली ऐसे ना पूछें, लेकिन कई बार मैच कराने को पूछ लेता है। ईएससी के बड़े ही फेमस क्वेश्चन है कि 1 2 3 इज करेक्ट, 2 3 4 इज करेक्ट, लाइक दिस। देखते हैं कौन सही आंसर लिख रहा है इसमें। पी का आपने लिखा है 3 है सर, पी का 3, दैट कर्टिस टरबाइन इज द वेलोसिटी, रेटिव टरबाइन इज द प्रेशर कंपाउंड, ये भी सही है। कापलिन टरबाइन 3 4, ये तो पहले से मैच करा दिया आपने, पी क्यू 3 4। कैप्लिन टरबाइन इज एग्जांपल ऑफ मिक्स फ्लो टरबाइन, एब्सोल्युटली राइट। कैप्लिन टरबाइन मिक्स फ्लो टरबाइन है माय डियर, और फ्रांसिस टरबाइन इज योर एक्सियल टरबाइन, जिसमें वो बॉब लगा होता है और वो रोटेट कर रहा होता है। यस, एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है मोहम्मद, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इसका आंसर देखना जरा, कितना आंसर लेके आते हो। इन अ सिंपल इंपल्स टरबाइन, एक सीधा सा बेचारा इंपल्स टरबाइन है, सिंगल स्टेज टरबाइन है, नोजल एंगल इज मेंटेन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री माय डियर, 30 डिग्री पे मेंटेन है। तो आपको बताना है डायग्राम एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम हो जाए तो इस डायग्राम एफिशिएंसी के लिए what will be the blade speed ratio. If you are not aware with this, then he is going to ask like this, what is the value of rho, that is u star by v1 my dear, where v1 is the nozzle velocity and u star is the blade velocity at the maximum value of the efficiency. जो maximum diagram efficiency निकल के आती है उस पे blade और आपका जो nozzle velocity है, nozzle में जो fluid आता है उसकी velocity, उन दोनों में रेशियो क्या होगा। कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? I'll give you the chance. Let's see कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ओके, बिल्कुल, चलो याद आ रहा है तो याद आने से पहले तो आंसर आ जाना था, ये क्वेश्चन था ही बहुत आसान। याद आने से पहले हमने नहीं लिखा है कि सर रो स्टार की वैल्यू मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो रो स्टार की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा 1 डिवाइड बाई 2, ये नहीं लिखे। So in this case we can write rho star will be equal to u star, ये तो प्रूव किया है ना हमने सिंगल स्टेज के लिए, that cos 30 divided by 2, what is cos 30 my dear, this is 0.866 divided by 2, आंसर कैसे नहीं यार मोहम्मद, are you getting or not? मोहम्मद, are you getting this answer? D as a correct answer, in this case 138, yes, okay, wonderful, कुछ था ही नहीं। प्रॉब्लम ये है इन सब क्वेश्चन में होता क्या, लेट मी टेल यू, टॉपिक ऐसे ऐसे से उठा देते हैं, क्वेश्चन उठा के रख देते हैं कि हम गेट पढ़ के आते हैं तो उसके बाद हमको रहता है कि हाँ यार ये वाला पोर्शन तो हमने टच ही नहीं किया। तो कभी जैसे बॉयलर वाला जो गेट एस्पिरेंट रहते हैं बॉयलर पार्ट को टच ही नहीं करते, स्टीम वाले जो कैप्लिन टरबाइन या फ्लूइड में या फिर आपका यहाँ पे पार्सन टरबाइन आती है उनको टच नहीं करके जाते, कंप्रेसिबल फ्लो को छोड़ के चले जाते हैं, वहां से परेशान करता है। आईसी इंजन वाला जो डेटोनेशन नॉकिंग वाला पार्ट है उसको छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज द पॉइंट कि मैं और चंद्रा सर कल 9 बजे फिर से आके आपसे थर्मल का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मेजरली फोकस उन्हीं क्वेश्चन पे रहेगा जो ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है रेदर देन गेट। गेट तो जो आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन जैसे कि आप कह सकते हो कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग के बाद आप सिंपल कह सकते हो वन मोर पॉइंट लाइक डेटोनेशन, जो आईसी इंजन वाला पार्ट है जो नहीं पढ़ते हम गेट में, इवन पावर प्लांट वाला पार्ट है तो उनको ज्यादा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, हमारी डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द ऑन द मूविंग ब्लेड माय डियर एंड चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन द फिक्स ब्लेड टू द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन द मूविंग ब्लेड, इज इट और नॉट? दोनों पे तो चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन द मूविंग ब्लेड क्या हो जाएगा, मूविंग ब्लेड पे 25, इज इट और नॉट? और दोनों पे कितना है 50 प्लस। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है 25 डिवाइड बाई 75, यस यस एग्जैक्टली
इट नीड अ पेशेंस माय डियर। 3 घंटे का पेपर में अपने को 150 क्वेश्चन मिलते हैं और नियर अबाउट 4 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसी एनर्जी के साथ में आप लगे हुए हो। यस डेफिनेटली इट मैटर अ लॉट, और ये कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आज नहीं तो अगले 4 महीने बाद एग्जाम में, 2 महीने बाद, जब भी आप जब बैठोगे तो, और डेफिनेटली उनका रिजल्ट देखने को मिल रहा है यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल के हैं। एंड नियर अबाउट 70 to 80%, पता नहीं आप सारे सब्जेक्ट में बोल लो, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, बट हर एक सब्जेक्ट के नियर अबाउट 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन के आंसर आप दे रहे हो। 140 क्वेश्चन है, 140वां क्वेश्चन है, देखते हैं आपका इससे आंसर आता है कि नहीं आता है। लेट्स राइट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ऑल्दो हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, मतलब जो हीट पंप आप यूज करते हो वो एक रेफ्रिजरेंट सिस्टम की तरह ही वर्क करता है, लेकिन सीओपी इसका डिफर होता है जो आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे होते हैं। क्यों होता है उसका रीजन दिया है, इट इज कंसिडर्ड हीट, इट इज कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल और द डिजायर्ड इफेक्ट इंस्टेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या ये सही है? बिकॉज यहां पे कंडेंसर हीट को ही हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या फिर ये कहो हीटिंग इफेक्ट मान के चलते हैं, इसीलिए इसका सीओपी ज्यादा होता है। बात भी सही है। यस नहीं, आर गलत नहीं है, हम कंडेंसर को ही तो मानते हैं ना, जो कंडेंसर में आप हीट रिजेक्ट कर रहे होते हो। लाइक माय डियर, दिस वन इज द कंडेंसर, दिस वन इज द इवेपोरेटर, दिस वन इज द वर्क। तो अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर में ये इवेपोरेटर और ये कंडेंसर है, तो यहां पे कंडेंसर में ही तो आप इसको डिजायर्ड इफेक्ट मानते हो ना, हीटिंग साइकिल के लिए, हीटिंग साइकिल के लिए you consider the condenser heat as a desired effect, वही लिखा हुआ है, because the condenser heat is considered as the desired effect, that's why total output increase, because in this part my dear this Q lower plus this is making the desired output that is equal to Q higher। सही है। air cooling, air cooling is used, okay, no issue, air cooling is used for the front compressor, whereas water jacket is used for the अमोनिया कंप्रेसर। मतलब जहां पे आप रेफ्रिजरेंट को अमोनिया यूज कर रहे हो, अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो, वहां पे हम कंप्रेसर में जानबूझ के कूलिंग के लिए वाटर सिस्टम यूज करते हैं। लाइक आपने नहीं पढ़ा, रेडिएटर कार में यूज करते हैं और फिन्स हम स्कूटर में यूज करते हैं, जो बहुत पुराने स्कूटर आपने देखे होंगे। उसका एक रीजन है ना, व्हाई द फिन्स आर अटैच्ड टू द स्कूटर इंजन and the radiator or the water jackets are adopted in the case of car। वही क्वेश्चन इसमें रिपीट किया है रेफ्रिजरेशन में, कि जब भी हम फ्रोन रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं, फ्रोन मींस जो आपके R134 है, R12 है, राइट ना, तो उसमें तो हम एयर जैकेट यूज करते हैं, लेकिन जब अमोनिया लेके जाते हैं तो अमोनिया वाले कंप्रेसर में हम वाटर जैकेट यूज करते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है अभी, या मोहम्मद, इसका सिंपल मतलब ये निकल के आ रहा है कि आपको अमोनिया की कूलिंग में या अमोनिया को कंप्रेसर में यूज करने के लिए आपको ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ रही है, जबकि फ्रोन रेफ्रिजरेंट को यूज करने के लिए आपको बहुत कम कूलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां पे कूलिंग रिक्वायरमेंट कम होती है ना, एयर कूलिंग वहीं पे यूज होती है। आप सही से समझना, ये रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हो, तो उस कंप्रेसर में कई बार आप फिन्स लगा देते हो, कई बार आप फिन्स लगा देते हो, और कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वाटर कूलिंग लगा देते हैं। तो लेट मी टेल यू माय डियर, उसमें होता क्या है। पहली बात तो आप ये समझो कि अमोनिया को रेफ्रिजरेंट की तरह हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है। लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया वाटर के बाद सबसे ज्यादा है, अगर आप रेफ्रिजरेंट की बात करने आओगे तो नियर अबाउट 1300, बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, ये इवापोरेटर से बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब यही हीट बहुत हाई हीट एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट अमोनिया जब आपका कहां एंटर करता है, कंप्रेसर में, तो जब आप कंप्रेशन प्रोसेस करते हो तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई कूलिंग के लिए आप क्या करते हो, वाटर जैकेट यूज करते हो। जबकि ऑन द अदर हैंड
जो फ्रोन आपके रेफ्रिजरेंट होते हैं उनकी लेटेंट हीट या वेपराइजेशन हीट बहुत कम होती है, नियर अबाउट 200-300 किलो जूल पर केजी। तो इसलिए बहुत कम हीट लेके कंप्रेसर में कंप्रेसर में एंटर होता है। तो इसलिए जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट लिबरेट नहीं होती पर साइकिल, दैट्स व्हाई एयर कूलिंग भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। तो इसकी लेटेंट हीट की कहानी। और अमोनिया आप यूज ही इसीलिए करते हो कि इसका जो वेपराइजेशन हीट है या फिर लेटेंट हीट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट। वाटर की आप बात करो लेकिन वाटर क्या जीरो से नीचे जाता नहीं, तो उसको रेफ्रिजरेंट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, यस, यू विल गेट ऑल द डिटेल। 142 अभी भी आपका बीसीआर से क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देखो बीसीआर से। यस, हाँ वो तो था यार, मैंने दिखाया नहीं, आई थिंक अभी जैसे होगा आई शेयर दैट पॉइंट, डेफिनेटली होना चाहिए। यस बिल्कुल बिल्कुल, अभी आई शेयर दैट इन टेलीग्राम ऑल्सो, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आपने ऐसे परफॉर्म किया ना देन अप टू 90% स्कॉलरशिप यू आर हैविंग द चांस, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इन दिस टेस्ट इज वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छी है सारे सब्जेक्ट में ही। चलिए देखते हैं, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंडेंसर प्रेशर शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। आप चाहते हो जितना कम कंडेंसर प्रेशर रखा जाए, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट माय डियर। हम यहाँ पे ना इस प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर इस पीएच डायग्राम की बात कर रहे हो लाइक दिस, सो देयर इज वन साइकिल लाइक दिस, वन is the one cycle my dear, that is 1 to 2 to 3 to 4. if you put the condenser pressure हम चाहते हैं as low as possible like this, जितना कम हो सके उतना कम। कंडेंसर और इवापोरेटर, सॉरी ये तो इवापोरेटर प्रेशर बन गया, सॉरी नहीं ये गलत बन गया, तो हमसे इवापोरेटर प्रेशर बन गया है, सॉरी। वी ऑलवेज वांट कि इवापोरेटर प्रेशर जितना कम हो सके हम उसको उतना कम रखें, क्योंकि होता क्या है इन एक्चुअल कंडीशन, जैसे ही हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं लाइक 1 to 2 to 3 and to 4, ये तो ठीक है। जैसे ही कंडेंसर प्रेशर हमने बढ़ाया ना, 1 to 2 डैश किया, 2 to 3 डैश किया और 3 to 4 डैश किया, सीओपी कम होने लगती है। तो इंक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर रिड्यूस द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही है, एंड इंक्रीज द वर्क ऑफ द, दोनों बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट पॉइंट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि सीओपी आपकी कम हो जाएगी, उस रेफ्रिजरेटर का आप क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं है, राइट। 143 कंडेंसर और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन जरा सारे स्टेटमेंट को समझो इन क्वेश्चन नंबर 143 and see what is the correct answer. Consider the following statement. In SI engine, detonation occur near the end of the combustion process, whereas in CI engine, my dear, detonation or knocking occur near the beginning. ये तो बिल्कुल सही है। Are you getting my point? This one is absolutely right. SI में डेटोनेशन सबसे बाद में आता है और CI में डेटोनेशन इग्निशन से पहले हो जाता है, प्रॉपर इग्निशन ना होने की वजह से, बिल्कुल सही। इन SI इंजन नो प्रॉब्लम आर एनकाउंटर ऑन अकाउंटिंग ऑफ नो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो दूसरा तो वैसे ही गलत है। प्री इग्निशन इज ऑल्सो द प्रॉब्लम इन SI इंजन, SI इंजन में प्रॉब्लम है प्री इग्निशन। आफ्टर दैट एक ही पॉइंट बचा, लो इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर रिड्यूस द नॉकिंग इन CI इंजन, क्यों, क्योंकि सेल्फ इग्निशन को रोक लेता है, लेकिन वही इसके उल्टा इग्नाइट होने ही नहीं देता CI इंजन में, तो इसलिए नॉकिंग को बढ़ावा देता है, किसमें, CI इंजन में। तो जो SI इंजन में अच्छा है वो CI इंजन में बेकार चीज है। तो आंसर इज 1 and 3, डी विल बी द आंसर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। टेंडेंसी ऑफ द पेट्रोल टू डेटोनेट इन द टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर, याद है OC नंबर डिफाइन किया जाता है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, लाइक CN नंबर डिफाइन किए जाते हैं, ऐसे कुछ सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। ये एक्चुअल में होते क्या है, यह पूछा है कि आप
कि जो टेंडेंसी है पेट्रोल की डेटोनेट इन द टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर इज डिटरमाइन बाय कंपेयरिंग आवर फ्यूल विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे हम कंपेयर करते हैं? हम जो अपने फ्यूल को कंपेयर करते हैं वो किससे? आइसो ऑक्टेन से, मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन से, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन से, या मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन से। यार इसको तो कम से कम मत सेलेक्ट करो। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन सीआई इंजन के लिए है, एसआई में यूज ही नहीं हो रहा है, एसआई के फ्यूल को कंपेयर ही नहीं करते हैं। आइसो ऑक्टेन वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग मीडियम है, जिसका ऑक्टेन नंबर 100 माना जाता है, और एन हेप्टम नॉर्मल हेप्टेन का 0 माना जाता है। बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चलती रहती है, एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, अभी एब्सोल्युटली राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। मोस्ट एयर है जो 1.01 बार पे मेंटेन की गई है, मतलब यहां पे बैरोमेट्रिक रीडिंग हमको दे दी गई है। बैरोमेट्रिक रीडिंग इज गिवन टू अस 0.10 बार, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एंड द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर, मतलब यहां पे पीवी भी हमको दिया हुआ है 0.01 एंड पीएस भी हमको दिया हुआ है दैट इज 0.02। एक बात याद रखना, आरएच जो होता है, आरएच के न्यूमेरिकल वैल्यू ही माय डियर पीवी डिवाइड बाई पीएस होती है। तो दो ऑप्शन तो यहीं से निकाल दोगे, दो ऑप्शन तो यहीं से बाहर कर दोगे। व्हाट इज इट? 50%। तो या तो ये होगा या ये होगा, ये आंसर हो ही नहीं सकते। लो, दो तो आपने पहली लाइन में निकाल दिए। गेटिंग माई पॉइंट? देन आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ह्यूमिडिटी रेशियो और द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है? दैट इज 0.622 इंटू पीवी डिवाइडेड बाई बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ पीवी। सर 0.622 इंटू पीवी कितना हो जाएगा? पीवी विल बी इक्वल टू 0.01 बैरोमेट्रिक रीडिंग 1 माइनस 0.01। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 0.00622। क्या आंसर आया मोहम्मद? व्हाट इज द आंसर? ए फॉर अहमदाबाद विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है आपका 145। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपने पढ़ा होगा मोहम्मद तो शायद वो आंसर बन पाएंगे, अदरवाइज आंसर बिल्कुल सीधे हैं अगर ये पढ़े होंगे तो। हाँ, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी। यस, एनीवन? एट सोलर नून, दोपहरी के सोलर नून पे आपका जो आर एंगल होता है वो कितना होता है? ये क्या है? ये शायद पार्ट आपने पढ़ा नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों ने, आपने बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ आइडिया ही नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू, ये आपका मान लीजिए अर्थ का सरफेस है लाइक दिस। तो आपका जो सन होता है, इफ यू आर समवेयर हियर माय डियर, तो आपका जो सन है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइक सुबह के 6 से अगर रात के 6 बजे की बात करो, ये तो एक जीरो कम हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये किस ईयर में आता है? 5 and 6। तो ये आपका होता है सोलर नून। एग्जैक्टली 12 बजे जो एंगल होता है वो 0 होता है। गेट के सिलेबस में नहीं है, ये ईएससी का सिलेबस है, और हर 12 पोजीशन होंगी इसकी दोनों साइड में। तो ये जो एंगल होता है, नहीं सेमेस्टर में भी नहीं आता है आपका, ये नॉर्मली किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये 12 बजे का टाइम होता है, 12 PM का माय डियर। यहाँ पे ये 6 AM का मॉर्निंग का टाइम होता है, और यहाँ पे 6 PM का टाइम होता है। ये जो एंगल होते हैं नेगेटिव में चलते हैं, और ये जो एंगल होते हैं पॉजिटिव में चलते हैं। 12 बजे जो एंगल होता है वो 0 होता है। यस, ईएससी का सिलेबस है। 12 बजे जो एग्जैक्टली आफ्टरनून का एंगल होता है दैट इज द 0 डिग्री। 0 डिग्री आंसर होता है आपका। गुड। पेपर सिंपल होता है, बट द पॉइंट इज हम उस पार्ट को पढ़ के नहीं जाते, छोड़ के चले जाते हैं, इसके लिए दिक्कत होती है। जैसे अब ये है, जो ये सेंट्रल टावर होता है ना, एक सेंट्रल टावर होता है, उसमें हेलो स्टेट लगे होते हैं लाइक दिस, और यहां पे क्या होता है, चारों तरफ से उसके कुछ इस तरीके से हेलो स्टेट लगे होते हैं लाइक दिस। ये सब सोलर एनर्जी का पार्ट है माय डियर, इस तरह से। और यहां से रिफ्लेक्ट होके सारी जो रेज होती हैं वो यहां पे जाती है लाइक दिस। और ये जो हेलो स्टेट होते हैं, इनको हम हेलो स्टेट बोलते हैं, मतलब सोलर प्लेट होते हैं। ये जो हेलो स्टेट होते हैं, ये अपनी दोनों एक्सेस पे मतलब रोटेट कर सकते हैं। 2D प्रॉब्लम होती है, 2 एक्सेस में इनमें ट्रैकिंग फैसिलिटी होती है, मतलब ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, 2 एक्सेस पे रोटेट कर सकते हैं।
राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन बायोडीजल क्या है? बायोमास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोहम्मद ये पढ़े हो कि नहीं? मोहम्मद ये पार्ट पढ़े हो? बायोमास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडीजल, जिसको आप नॉर्मली B20 B30 लिखते हो। अभी एक इवन आपने देखा हो अगर सर इससे PSU मिलते हैं? नहीं नहीं, ESC से तो यार PSU में मतलब एक आप सीधा असिस्टेंट डायरेक्टर की रैंक पे जाते हो, तो आपको इंजीनियर की रैंक या इंजीनियर की पोस्ट ही नहीं मिलती है। जैसे अगर आप ESC सेलेक्ट हो गए तो जो अच्छे अच्छे PSU है डेफिनेटली यू कैन गो देयर। अभी तो रेलवे निकल गया, नहीं तो सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन आपका रेलवे का था, बट राइट नाउ यू कैन गो फॉर द PSU ऑल्सो। PSU आप बहुत बड़ी रैंक पे पहुंचोगे, मतलब जो GET की रैंक शुरू होती है गेट के थ्रू, वो वहां तक आपका नंबर ही नहीं आएगा, सीधा आपको AD की रैंक मिलती है। आ जाओ चलिए। सो एक अपग्रेड वेजिटेबल्स ऑयल होता है जिसको मिक्स करके आप B20 B30 बनाते हैं। बिल्कुल हो सकता है अगर आपका टारगेट 1 साल का है और अगर 1 साल आप पूरी तरह से लगे रहते हो तो बिल्कुल आपके लिए पूरा पॉसिबल है कि आप डेफिनेटली कर पाओगे। चलिए बताइए इसके लिए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें पायरोलिसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें 3 तरह के गैस, लिक्विड और सॉलिड बनते हैं। ऑल नहीं होगा, हर जगह पे ऑल नहीं लगाना होता। ये सॉलिड आपका बना रहा है, कार्बोनाइजेशन है, तो जहां पे आपको पायरोलिसिस एसिस करना प्रोसेस करना होता है, तो कार्बोनाइजेशन के लिए आपको 170 से 300 डिग्री टेम्परेचर तक इसको हीट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, तब जाके आपका ये बायोमास कार्बोनाइजेशन में कन्वर्ट होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, डायरेक्ट मैथेनॉल FC लाइक DMFC, ये फ्यूल सेल होते हैं 4 टाइप के। तो ये जो DMFC है किसका पार्ट होता है, ये किसका पार्ट है ये आपको बताना है। हाँ कोर सब्जेक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि DM किसका पार्ट होता है। तो लेट मी टेल यू, जितने लोगों को नहीं पता है, ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का एक जस्ट मॉडिफिकेशन है जिसमें आप डायरेक्ट मैथेनॉल यूज करते हो एज अ फ्यूल। इस पार्ट में आप डायरेक्ट मैथेनॉल यूज करते हो एक फ्यूल की तरह, और PEMFC का एक डायरेक्ट पार्ट है, राइट। ना तो ये सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल का पार्ट है, ना ही ये आपका फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल का पार्ट है। ये है यस पॉलीएथिलीन, दिस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, उसका एक मॉडिफिकेशन होता है जिसमें मैथेनॉल को हम डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं। तो ये आपके 150 क्वेश्चन थे। दिस एंटायर सेशन और दिस एंटायर PDF आई एम गोइंग टू शेयर on my Telegram channel, my dear, that is Mechanical by Sonu Chauhan. You can join, and all the update regarding the upcoming session, all important update on BYJU'S Exam Prep you will get from here. आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी चीजें। यस फाइनली ओवर, और आप डेफिनेटली आपकी एनर्जी का लेवल जो लास्ट तक बना हुआ है वो एक काबिल तारीफ है, जो अभी तक आप बिल्कुल बहुत ही एनर्जी के साथ आपने 150 क्वेश्चन किए, एंड ऑलमोस्ट 70-80% जो स्टार्टिंग से इवन मैं देख रहा था आपका अटेम्प्ट, स्टार्टिंग से 70-80% जो आपके अटेम्प्ट है वो सही है। यू आर एग्जैक्टली ऑन वेरी गुड ट्रैक। बस इसी को कंटिन्यू करो, कभी ना कभी बहुत जल्दी से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। फिर से कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में माय डियर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।